they have objection that under Order 22 rule 9, I have to file an application. But what happened is this in this case because I am not the LRs are not on record, therefore I am not able to file that application. If I would have been on record, then I will definitely file that application. नहीं, but your application is within time or not? That application 973 days का डिले In case का हाँ, जिसमें रेस्पोंडेंट नंबर 2 की डेट हुई है उसके लिए 903 अपीलेंट की टाइम पे है. एक मिनट. सत्यनारायण अपीलेंट हैज डाइड. यस यस. वेयर इज दिस? कौन सा नंबर है एप्लीकेशन का? आईए नंबर 2890 2889 2890 पब्लिक 21 इसको कब डेथ हुई इनकी कुछ लिखा है इसमें? हमारा लिखा है इसमें डेथ सर्टिफिकेट भी लगा. 21 योर एप्लीकेशन वाज फाइल्ड ऑन 26 ये तो लिमिटेशन में सर ये लिमिटेशन इसको मेरा कोई आप इसको अलाउ कर देते. इसको अलाउ Order IA number 2890/21 application under order 22 rule 3 CPC for bringing LRs of appellant. Sole appellant. सत्यनारायण. इसको कब डेथ हुई इनकी कुछ लिखा है इसमें? हमारा लिखा है इसमें डेथ सर्टिफिकेट भी लगा. For the reasons to your application was filed on 26 ये तो लिमिटेशन ये लिमिटेशन इसको मेरा कोई आप इसको अलाउ कर देते. इसको अलाउ Now you have to make an application IA number 2890/21 application under order 22 rule 3 CPC for bringing LRs of appropriate application for setting sole appellant. सत्यनारायण. इसको कब डेथ हुई इनकी कुछ लिखा है इसमें? हमारा लिखा है इसमें डेथ सर्टिफिकेट भी लगा. For your application was filed on 26 ये तो लिमिटेशन इसको मेरा कोई आप इसको अलाउ कर देते. इसको अलाउ You have to make an application IA number 2890/21 application under order 22 rule 3 CPC for bringing LRs of appropriate application for setting sole appellant. सत्यनारायण. इसको कब डेथ हुई इनकी कुछ लिखा है इसमें? For your application was filed. इसको ये heard on IA number 2328/2023 application under order 22 rule 3 CPC for bringing legal representatives of petitioner number 4 Gopalji on record. The application is within time. Same order 7 days. Well, this matter was listed for final hearing in the April 2019, my lord. This matter is relating to Urban Sealing Act, my lord. This is pending since 2010, my lord. So the matter, thereafter, this matter has not been listed for final argument. पहले तो amendment तो करना पड़ा. But I will, but the officer will be directed to list this matter for final because it is already listed in the final hearing list in the 2019 version. List for, since this petition is already admitted, list for final hearing in the week commencing 1st of May. मतलब मैं वेकेशन के बाद Vacation के बाद. Final hearing after vacation. और वीक कमेंसिंग कर रहे हैं आवश्यक सर. Week commencing कौन सा है? थर्ड वीक ऑफ 19th. 19th June. चलिए next. My lord, senior counsel is not well, therefore seeking for adjournment. Senior counsel is not required for bringing LRs on record. You can also point out which is the application, किसकी डेथ हो गई, इतना बता दीजिए, हम देख लेते हैं इसको. Actually, they don't want to bring LRs on record. Because 1 year ago, I moved an application that respondent has died. A short time to file an application, but they did not file. On last date of hearing, my lord has passed a specific order, preemptory order. In absence of application, the case will be dismissed without reference to the court. But they filed a application for exemption of time to not to file the application for bringing LRs on record, but they just want to ignore the procedure established in CPC. After that, I just be on to amend the appeal. My lord,
allows are already filed or not? Application. Then this appeal ought to have been dismissed Yes, my lord. directly. My lord, Already abated and allows are already on record. no. You have already High Court has passed interlocutory order in which you have clearly What is the I told you, I filed a application IA number 7570. They have filed Ah. application for exemption from filing application yes sir. for bringing legal representative deceased respondent on record. No. So we'll dismiss the appeal My because lord, they have filed the application. That means they don't want to pursue this appeal. my lord, Now then they filed another application seeking time to comply with the order 6522. What is that 6522? In that order also, they have been directed to bring LR, substitute the LRC. my lord, please listen to me. My lord, already this application has been filed and IA. Wait. 6522. It was my application intimating the appellant. एक मिनट हो गया बोलने दीजिए हम क्या बोलना चाह रहे हैं. 6522. CPC, kindly give me a CPC. Order 22. ये एलआरएस की एप्लीकेशन तो पहले ही अलाउ हुई थी. Yes, sir. LR के LR पहले allow. ये 22/10 की मैंने फाइल करी थी. अरे पर आप इसको अगर पढ़ेंगे आगे तो फिर समझ में आएगा. जी, इसको पढ़ लेते So आप already record में. Madam, 1 minute. We are trying to find out whether we can give you relief or not. Okay, sir. Wait for a minute. बताइए. No. It is alleged that It is alleged that respondent Damodar Mahajan has died on 12/9/2020 and the proposed LRs are withdrawn to sons. Therefore, IA is allowed and the appellant is directed to substitute. appellant is directed to substitute. Yes, the application which was allowed, it is filed under Order 22 Rule 10A. भी हो सर कोर्ट ने ये बोल दिया कि आप इनको सब्स्टिट्यूट करो. That means Substitution means treating your application to be under order 23 rule 3. That is allowed. they have directed the substitute. Substitute means by filing the application under 22 Rule 4. This is the procedure मतलब as per my understanding here is there no Order. Court can pass any order ना. substitute का लिखा है substitute में अगर पूरा पढ़ेंगे ठीक है अगर करेक्टली पढ़ना पड़ता है. मतलब पूरा एक शब्द पढ़ के वहां रुकना नहीं पड़ता. आगे भी पढ़िए. Appellant is directed to substitute the proposed LR in place of in place. deceased respondent Damodar Mahajan and to carry out necessary amendment in the fact title of the memo of appeal within 15 days. टाइम भी दे दिया कि 15 दिन के अंदर सब्स्टिट्यूट करो. That means that LR has to be brought on record. तो इन्होंने कर दिया क्या रिकॉर्ड पे लाए कि नहीं लाए. अभी तक वो भी नहीं करा. They are just trying to linger on the matter. They're not done. Again, they are seeking time. कंप्लायंस क्यों नहीं करवाती मैडम. ऑर्डर जब आपके फेवर में हो गया तो कंप्लायंस कौन करेगा. सर एक्चुअली जो सीनियर काउंसिलर उनका नाम उसमें आ नहीं रहा था तो उनको तब शो नहीं हुआ तो थोड़ा सा. तो भाई आप जब अपीयर हो गए तो आपको मालूम है कि ये ऑर्डर पास हुआ. Then there is no excuse. Why didn't you amend it? इसलिए तो हमने प्रियम्पटरी ऑर्डर किया था. ऑफिस ने इसको डिसमिस नहीं किया. My lord, Because part compliance is not compliance under High Court rules. There There is no compliance. is no compliance. अब ये सड़ी सी चीज के लिए 1-1 साल तक के चलते रहता है केस. my lord, please give me time. Senior counsel will argue on this because we have. आर्गुमेंट की जरूरत ही नहीं है. सब हो चुका है इसमें. Where is the question of argument now? You have to comply. You have to amend it. You will just go out and forget what is to be done in this case. That is why this happens like this. अगर आप इसका compliance करेंगे ऑर्डर पिछले मई 2022 में ऑर्डर हुआ सबसे पहली बार. उसके बाद 3 बार आपको और टाइम दे दिया. आपने किया नहीं. So we cannot grant you time unlimited.
जब तक आप नहीं करेंगे तब तक फुल टाइम देंगे. My lord, ma'am. 1 minute, we are passing preemptory order. It will be dismissed now. If you don't comply. इसमें लिखे आईए नंबर 2039/23 एप्लीकेशन फॉर एग्जम्पशन फ्रॉम फाइलिंग एप्लीकेशन फॉर ब्रिंगिंग एलआरस ऑफ द डिसीज रेस्पोंडेंट. Respond. Respondent on record has been filed. Which is misconceived since the LRs of the respondent had already been directed to be implemented while order dated 6/5/20. 6/5/22. However, the appellant has not carried out the amendment. Therefore, this IA 2039/23 is closed. Third one, IA number 2040/23 application seeking time to the order dated 6/5/22. For the reason stated, 15 days time is granted to comply with the order dated 6/5/22, in which this appeal shall stand dismissed without further reference to the bench. Obliged, ma'am. My lord, today this case listed at serial number 138 and 139. We require permission to file reply on this. Require permission to file reply on this. अभी केसेस चालू होने के पहले क्यों नहीं बोला आपने? Sorry, my lord. आप बैठे थे यहाँ पे सुबह से. Sorry for that. देखेंगे अभी, फिर रहने दीजिए, बाद में देखेंगे, टाइम पे देखेंगे. Even if you permit that reply will not come on record. देखेंगे उसको. Yes. But in this case, not the reply rejoinder, everything is complete. Not I have moved an application for hearing it urgently. Not 785/2023. When do you want? कब आर्ग्यू करेंगे इसको? First week of May में कर देंगे. वैसे भी 2012 की. फाइनल हियरिंग में जाना चाहिए. कैसे मोशन में क्या लग रहा है? एप्लीकेशन लगी थी इसलिए मोशन में आई है. ये ऑलरेडी एडमिटेड है ना? जी. 17/6/2016. इसमें लिखी heard on IA 785/23 application for urgent hearing. Now, this matter being of the year 2012, IA stands allowed list this case in the week of, after vacation. जून में कर दीजिए. हाँ, जून. जी. In the week commencing 19th of June for final hearing. This appeal is already admitted on 17/6/2016. Still admitted writ petition, my lord. Earlier, 2 times this honorable court has allowed the idea for early hearing, but unfortunately the matter could not be listed, my lord. This matter is also of 2013 service matter, my lord, and the petitioner is aged of around 79-80, my lord. So, my lord, may hear it, my lord, any. Earlier, this honorable court has passed an order for early hearing, but unfortunately, in which month it should not be, it should be listed, that was not mentioned. Therefore, it could not be listed, my lord. We heard on IA 1416/23 application for hearing of the appeal, hearing of the petition. My lord. I know, this petition is of the year 2030. After looking into the fact that petitioner is aged about 80 years. 80 years. This case in the week commencing 19th of June 23 for final hearing. Obliged, my I lord. guess I'm allowed it. मैडम इसमें अपीलेंट ने एप्लीकेशन फाइल की है फॉर डिक्री ऑफ कॉम्प्रोमाइज. मैडम मेरा सबमिशन है कि एक डेट दे दे कोई फिक्स, तो बोथ द पार्टीज विल प्रेजेंट बिफोर दिस कोर्ट.
Where is the application? Madam, this is IA number 2609/23. रजिस्ट्रार के सामने वेरिफिकेशन हो गया? Madam, signature all the parties के हमारे application पे. सिग्नेचर नहीं, हमने क्या पूछा, रजिस्ट्रार के सामने आपका वेरिफिकेशन हो गया क्या कॉम्प्रोमाइज का? अभी नहीं हुआ तो उसको वहां लगा देते हैं एक बार, तो आप अपीयर हो जाइए, स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लेंगे दोनों का, उसके बाद खत्म कर देंगे। मेरा कमीशन ये था कि एक आप फिक्स डेट दीजिए तो both the parties will present. It has to be given, otherwise We already informed to the appellant that and एक समझने की बात है, अगर हम बोल रहे हैं कि रजिस्ट्रार के यहाँ जाइए आप, तो रजिस्ट्रार के यहाँ फिक्स डेट दिया जाएगा आपको, बिना उसके आप नहीं जा सकते किसी भी दिन। वेट, फिक्स डेट ही तो दे रहा है इसमें, और क्या है? मतलब मेरा ये सबमिशन था कि यहीं पे अगर इनको हमारे पास सेटल हो जाए That is the procedure. We have to get the statements of both the parties recorded. Madam, I understand, but we already informed to the appellant, but due to uncertainty, देखिए इसका आइए नंबर, we cannot keep on arguing like this. Procedure has to be followed. You go there. Once there is a report of verification, we will pass the order and decree also accordingly. Order on IA number 2609/23, application and order 23 rule 3. Madam, rule 3. Rule 3, on the ground that both the parties have entered into compromise. The parties are directed to appear before the principal registrar of this court for recording for verification of compromise. Take this case before the principal registrar on. कब आ सकते हैं पार्टीज आपकी? 2 हफ्ते बाद प्रोसीड दीजिए. 2nd of May. Madam, 2nd of May 2023 at 11 AM. List after the compromise is recorded. How much time? For service of respondent number 2, I am paying for time to file an application for dispensing with of service. No, Leonard, counsel for PD appeal and praise for and granted 1 week's time to move application for dispensing with service of respondent number 2. List after a week. Oblige fund. No, sure. IA number 2666/22, application for additional evidence taken on record. Application for Respondent number application for application for additional evidence to be taken on record. additional evidence. Statement say But appeal by insurance company, and in motor vehicle cases, one has to prove its case by producing the evidence on that particular case. So no need to taken this criminal record in motor vehicle matters. And secondly, it is appeal by the insurance company. He has not to prove his case. There is no enhancement appeal, cross objection, nothing is there. And my lord, thirdly, these all documents may be submitted to the trial court, but such type of evidence, such type of documents were not submitted there. So no need to file the such type of documents here before this honorable court. इसमें रिस्पॉन्ड नंबर जो 2 है, रिस्पॉन्ड नंबर 2 के खिलाफ जो है, रिस्पॉन्ड नंबर 2 ने रिस्पॉन्ड नंबर 1 के खिलाफ जो है क्रिमिनल केस फाइल किया था, उसमें जो इसके जो स्टेटमेंट हुए थे रिकॉर्ड, वो स्टेटमेंट 7/12/2021 को हुए थे और क्रिमिनल केस के स्टेटमेंट आप फाइल करना चाह रहे हैं? जैसे आप कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंसी के ऊपर इनका ग्राउंड्स है मेनली, तो वो जो स्टेटमेंट है वो कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंसी के आधार पे जो है अपील डिस्पोजल के लिए जो है वो हेल्पफुल रहेगा सर. But they have not challenged this issue. It was challenged by the prior filed appeal. And secondly, the witnesses which he wants to submit the statements of the witnesses, they both witnesses are the hostile witnesses. Since you have raised this ground for the first time in appeal, so then it have to be. I have not raised it at first time here. It was raised before the trial court also. Trial court also. Before the tribunal also. So how the trial court dealt with it? It was not considered by the lower court, by the trial court.
सर अवार्ड डेटेड जो है 9/5/2019 का है और जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुए हैं रिस्पोंडेंट नंबर 2 के वो 7/5/2021 के हैं। तो वास्तव में एग्जिस्टेंस में नहीं थे ये डॉक्यूमेंट्स, ये स्टेटमेंट्स। Yes. और आपकी जो अपील है वो कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंसी के आधार पर ही है। और वो जो स्टेटमेंट्स है वो जो है वो हेल्पफुल रहेंगे फाइनल अपील के लिए। So suppose those documents were not available at that time, so naturally we have to allow them. Because कौन सी एप्लीकेशन है आपकी? आइए नंबर 2666/22। ट्रिपल सिक्स 2666/22 लॉर्डशिप। देखिए रिकॉर्ड ऑन आईए नंबर 2666/22 एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 41 रूल 27 ब्रैकेट में 1 सेकंड ब्रैकेट में स्मॉल डबल ए सीपीसी फॉर टेकिंग additional evidence on record on the ground that the appeal has been filed on the ground of contributory negligence by the appellant, and the documents sought to be taken on record were not available before the trial court at the time of adjudication before the trial court. Therefore, the same would be necessary for appropriate decision of this appeal. IA stands allowed. Normally, it may be listed for filing. List for finally और कोई एप्लीकेशन पेंडिंग है केस में? एक विकेटिंग स्टे की है। But उसको वो कर देते हैं, आपको पैसा तो रिलीज कर दिया ऑलरेडी। yes, my lord, कर दिया। कुछ परसेंट है उसमें। Disbursement ऑर्डर हो चुका है by this honorable court. ठीक है, since the part withdrawal has already been allowed in favor of the respondent, IA number 1302/22 application for vacating stay stands closed. और कौन सी है? And my lord, the second application is regarding stay, but stay was already granted. So this IA number 17/2019 for stay also stand closed in view of the fact that the same has already been decided. my lord. हो गया, ठीक है। All the respondents have been served. Yes, ma'am. Number 2 is also Yes, my lord. a list for final hearing. I have to continue, my lord, or it may be absolute. So please. Number 1 served. उस पर File the power on behalf of number. No? The final power for the respondent number 1, man. अभी तो कुछ करना नहीं है। The record will be required. My suit was dismissed for Record is already there. Record has come. both the records. Original suit record whereby I could show that there was a transfer of a case and I could not have the notice. That's the main ground. ये MJC का रिकॉर्ड आया है। Where it was my evidence was recorded under 9 Rule 9. अभी किसका रिकॉर्ड मंगाया? I pray for the suit, my lord. COS 26/14. इसमें लिखिए the respondent number 1 has already been served and power has been filed. Let the records of civil suit For civil suit 26/14. 26/14 26A/2014 Which was pending before second additional district judge Neemach. from the court of second additional district judge Neemach be requisitioned. List after list for hearing thereafter. Are you pleased? नंबर 10 Sir, it's a claimant's appeal for enhancement and there is an application for dispensing with service to respondent number 2. My lord, liability is not disputed, so Liability this is- application may be allowed. Who is this number 2? Driver. Yes. Go ahead. Sir, driver. Order on IE 4841/22 application number order 41/14 released 41 PPC for dispensing service of notice on respondent number 2. Yes, sir. Who is a driver? It is stated that no prejudice would be caused to any of the parties. If the respondent number 2 is not served, IE stands allowed. Service of notice on respondent number 2 is dispensed with. Yes, sir. Simply. Sir. Appeal is admitted for hearing, list for final hearing.
So, item number 11 also, there is an application for dispensing with service to respondent number 2 and 3. कौन है ये? The liability is not in dispute. Driver and John. Driver and on. पेन ऑर्डर कर देना इसमें पेन ऑर्डर इसमें 2 and 3 हो जाएगा. Yes, yes, sir. ये नंबर क्या है इसमें? देखकर आ गया नंबर. चलिए 6 नंबर. My lord, appeal under section 173 of the Motor Vehicle Act, my lord, 4 applications are pending, my lord. My lord, IA number 3046 object 22 is for dispensing with service of respondent number 2, my lord. डिले कितना है इसमें? 23, my lord. 43. 23, my lord. 23. हाँ. नहीं इसमें petition is time bound by 387 days. That is the office report. My lord, 3 days delay, my lord, appeal is. नहीं office report है ना इसमें. Even you have been granted COVID relaxation in the light of Supreme Court's judgment. Still, there is a delay of 387 days. Lord, please give me 2 weeks. Are you objecting? No, respondent number 3. अरे ठीक, हमने ये नहीं पूछा आप किसके लिए खड़े हो रहे हैं. हमने कहा आर यू ऑब्जेक्टिंग टू द एप्लीकेशन फॉर कंडोनेशन ऑफ डिले. योर आंसर मस्ट बी यस और नो. Yeah. सो व्हाट डू यू प्रपोज देन? काफी सप्लाई नहीं हुई है. Lord, the award has been passed on 5/3/2021 and I filed the appeal on 29/6/2021. 90 days is the limitation period, my lord. It's 23 days only, my lord. Please give me 2 weeks time to verify, my lord. ठीक है. So we I'll file application. the appellant prays for time to verify the actual delay. Filing of the appeal. For an appeal by insurance company, all parties are served. लॉर्डशिप इसमें छोटा सा निवेदन है कि एक एमए हमने भी पेश की है लॉर्डशिप, तो वो साथ में क्लब करना That may be listed along with the announcement. लॉर्डशिप एमए फाइल की है. Announcement की है. लॉर्डशिप List along with MA number. 3191/21 लॉर्डशिप. इसमें लिखिए the respond none for the appellant, none for the respondents. Respondent number 3 and 4 have been served to paper publication. Affidavit is already on record. The appeal is admitted for hearing, list for final hearing as per its term. I see 2 weeks time in this to cure the defects pointed out by the office. But you are not the appellant, I suppose. No, my lord, I am from the respondent number 1 to 3. So you will cure the defects on behalf of appellant or It is an appeal of insurance company and I have filed the cross objection that is delayed. It is a time bar. ये जो defects है cross objection में. Yes, my lord. I have to file the application of condemnation of delay. Yes. Some would have filed on so and so. Court fees वगैरह. Court fees has Delay किसका है? Delay Subjection, they have filed a cross objection that has been time barred, my lord. अच्छा. The previous date of hearing जो is defects है इनके cross objection है. Definitely. Yes, ma'am. How much time you want? My lord, 2 weeks. on previous date of hearing also they were given 2 weeks time to cure the delay. Preemptory कर देते हैं अभी. Learned counsel for the respondent prays for and is granted 2 weeks time to remove defaults in the cross objection. Yes, yes, madam. Dealing with this appeal shall. अरे सॉरी ये तो आपकी अपील है. नहीं, cross objection shall liability respected. Cross objection of the respondent shall stand dismissed without further reference to the bench. करिए बार टाइम नहीं देंगे जल्दी जल्दी करिए जो भी करना. Yes. Respondent has expired, मतलब तो I filed IA number 2882 2023 मतलब. लिमिटेशन की एप्लीकेशन काय की है? More than 52 days बाद application. एप्लीकेशन Objection. I'm accepting notice on behalf of the proposed respondents. I'll file a wakalatnama on their behalf and we'll file a reply to the application under Rule 9, Order 22 Rule 9. ज्यादा थोड़ी डिले है. 43 डेज का डिले है. As my lord. में क्या ऑब्जेक्शन लेना?
His only objection was limited to the aspect that चेंज ऑफ काउंसिल क्या है ये? Who has filed it? most probably the appellant respondent has filed this application, and this application was allowed by the registrar. On that basis, my wakalatnama has been accepted in this. Where is the application for Order 24. I number 288. फाइल कब फाइल किया आपने? 12/4 को फाइल की थी। अच्छा, अभी अभी फाइल किया 12/4 को। माल उसको बुला, सेम डे बुला के सेम डे ऑर्डर ही करना है आप लोग, बढ़ाएंगे नहीं इसको। माल और राउंड में ले लेंगे। माल दो एप्लीकेशन है इसमें, एक कंडोनेशन ऑफ डिले और एक 24 दोनों लिख के भेजो कागज में, दो एप्लीकेशन। My lord, this is application under section 149 of the CPC. Grant of time pay the court case. Fees. That is 6,100 court fees, my lord. Pay for 4 weeks time. My lord. IA number 1693. Hold on, IE number 1693/23, application under section 149 CPC for grant of time to pay the court fees. For the reason stated, application allowed 4 weeks time is granted to deposit the court fees, failing which this appeal shall stand dismissed without further reference to the bench. क्योंकि आपने इसको 2022 में फाइल की है, तो 1 साल से ऊपर हो गया, 4 हफ्ते में करिए, अदरवाइज डिसमिस। Yes. Please, Your Lordship. It's an appeal by a claimant for enhancement and the same is time barred by 170 days. देखिए, issue notice on IA 2105/23 application under section 5 of the Limitation Act seeking condonation of delay on payment of PF by RD mode within 7 working days, returnable within 4 weeks. Call for the records. The quote below. Please put time to file register matter. 19, 20, 21 and 22 are same, my lord. 19, 20, 21 and 22 are same, my lord. recovery. Yes, my lord. Today it has been listed on the application 2126 vacating stay application. I also want to file reply of the same, my lord. So reply has been filed recently. Yes, my lord. We will grant them time, 2 weeks time. Well, 2 weeks. 2 weeks time to file rejoinder as well as reply to IA 2126/23 application for vacating stay. Just after 4 weeks. Yes. Okay. 19, 20, 21 and 22, my lord. 22, same order. Okay. Twenty-three. Lord sir, Abhishek Rajurkar साहब बिहाफ को विड्रॉ करना है लॉर्ड सर। पिटीशन लॉर्ड सर और आपका पावर तो है ही नहीं। नहीं, पावर नहीं, इसलिए मैंने उनका बिहाफ उनके या फिर नेक्स्ट वीक में कर दे लॉर्ड सर। क्या नाम है आपका? आर के पंडा। श्री आर के पंडा submits that he has instructions from Shri Abhishek Rajurkar, Lord sir. advocate appearing for the petitioner to withdraw this writ petition. Lord. This petition is dismissed as withdrawn with the liberty to file afresh if occasion arise. 24.
My lord, there is an interim application for condonation of delay of 80 days. My lord, kindly condone the delay, my lord, so that I can assess this honorable court with the facts of the case. सेवन कौन सी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई आपकी? Application under Order 12, Rule 6, my lord. The impugned order has been passed on 27th of September 2022. My lord, the impugned order is at page number 51. Rule 12, Order 12, Rule 6. Order 12. Just my lord. Judgment on admission, my lord. Order 12, Rule 6, my lord. Rule 6. Judgment on admissions. Yes, my lord. On the basis of the written statement filed by respondent number 2. Where admissions of fact have been made either in the pleading or otherwise, whether orally or in writing, the court may at any stage of the suit motion and without waiting for the demo of any other question between the parties make such order or give such judgment as having regard to such admissions. So who filed that application? The petitioner filed the application. Yes, That was rejected. That was rejected by the learned trial court. Where is the order? Order is at page number 51. मतलब adjudication of the application is at page number 52. मतलब the last paragraph. इस आदेश द्वारा वादी की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 12 नियम 6 कहाँ पढ़ रहे हैं? 52 पे 52 लास्ट पैराग्राफ प्रकरण के अवलोकन से प्रकरण प्रारंभिक अवस्था में है सर लास्ट पैराग्राफ पेज नंबर 52 इस आदेश द्वारा वादी की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 12 नियम 6 सीपीसी आईए नंबर 2/21 का निराकरण किया जा रहा है। वादी की ओर से उक्त आवेदन इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि वादी ने हिबानामा के आधार पर दावा प्रस्तुत किया है और प्रतिवादी क्रमांक 2 के द्वारा विवादित भूमि में से 1/2 हिस्सा वादी का होना स्वीकार करते हुए वाद उत्तर एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। इसीलिए वादी के पक्ष में स्वीकृति के आधार पर 1/2 भूमि के संबंध में आदेश पारित किया जावे। प्रतिवादी पक्ष की ओर से कोई जवाब पेश नहीं किया गया है। आवेदन पर विचार किया गया, प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण में अवलोकन से दर्शित है कि प्रकरण प्रारंभिक अवस्था में है, जहां तक प्रतिवादी क्रमांक 2 द्वारा वाद उत्तर के माध्यम से वादी पक्ष में स्वीकृति किए जाने के आधार पर वादी के पक्ष में विवादित भूमि का 1/2 अंश वादी का होने के संबंध में आदेश किए जाने का प्रश्न है, तो इस संबंध में बिना साक्ष्य के आदेश पारित किया जाना नियोजित दर्शित नहीं है, क्योंकि प्रतिवादी क्रमांक 1 भी कंटेस्टेड पार्टी है, अतः आवेदन सारीन होने से निरस्त किया जाता है। They say that after recording of evidence, my lords. But my lord, the law is very, very clear on that point, that if there are admissions of such a nature, when there is no triable issue left to the trial court, then judgment must be passed. Whether this application order 12 rule 6 is a joint application? No. Then it is with regard to the admissions made by the respondent number 2. But still, respondent number 2 का say तो सुनना पड़ेगा ना? Yeah, the written statement is there in the record, my lords. The written statement filed by the respondent number 2 is there in the record. He admitted my entire claim. And on that basis, an application was filed under Order 12. Hello, the written statement of respondent number 2 was at page number 57. ठीक है, heard on IE number 2741/23 application under section 5 of the limitation act. Delay कितना? Delay 80 days. This revision is barred by 98 days. For the reasons stated in the application is allowed, delay is condoned. Issue notice to the respondents on payment of. There is one more application, my lord, the impugned order may be stayed. Why? My lord, मैं kindly. Impugned order को stay करने से क्या होगा? Suit तो चलेगा. Yes, sir. You are not asking for a stay of the proceedings. No. So what difference would it make? No difference will it make. Your application under order 12(6) has been rejected. Yes, my lord. Suit will go on.
तो मतलब एटलीस्ट स्टेटस मतलब when मैं रिटर्नेबल कर दीजिए, 4 वीक्स रिटर्नेबल कर दीजिए, उनको आने दीजिए. इफ दे मेक अ स्टेटमेंट दैट यस दे आर रेडी, देन विल अलाउ योर एप्लीकेशन. तब तक चलने दो उसको. ये 7 days रिटर्नेबल 4 वीक्स. यस, नेक्स्ट. Restoration of first appeal, मतलब it was dismissed prosecution. How many times first appeal was dismissed? डिले नहीं है, विद इन टाइम है. Yes, Lord, it is true. देखिए इसमें दिस एप्लीकेशन इज विद इन टाइम, देयरफॉर आईए नंबर 247320 एप्लीकेशन में सेक्शन 5 स्टैंड्स क्लोज्ड. रेस्टोर कर दीजिए. चलिए नेक्स्ट. 26 सेकंड अपील. Indian none for the appellant, call for the records of the courts below. Non-compliance of order dated 1/2/23, my lord, passed in WP number 258 of 23, my lord. Whereby it has been directed to decide my representation, and it has not been decided so far, my lord. My lord, order is at page number 41. Within 2 weeks. Yes, my lord. They have not decided. No. Yes. Okay. 28. That's claimant's appeal for enhancement and compensation filed with a delay of 15 days. And the application for condemnation of delay is IA number 2405/26. आइए अलाउ कर दीजिए कंडोनेशन ऑफ डिले की. एडमिट कॉल फॉर द रिकॉर्ड्स. एक केस है एनहेंसमेंट की एप्लीकेशन. एक केस है एनहेंसमेंट की अपील. अनाउंसमेंट है, विद इन टाइम है. यस. एडमिट कॉल फॉर द रिकॉर्ड्स. Petition challenges the order dated 4/3/23, whereby the application under order 39/2 has been rejected by the London Trial Court. The facts of the case are, my lord, the plaintiff has filed a suit, declaration, permanent injunction, and for partition of suit properties. I am the sister of the defendant number 1, my lord. The defendant number 2 is the who has dismissed this application? London Trial Court, my lord. अपील तो वही होगी ना, डीजे क्या? Additional judges, my lord. 26 Additional district judge. Yes, my lord. And therefore, this honorable court has the jurisdiction. The interim order is at annexure P9, page number 115. The learned trial court has dismissed my application on the ground that you are the plaintiff. I am the plaintiff, my lord. Plaintiff सूट का फाइल किया आपने? And for declaration, permanent injunction, and for partition of suit properties. My contention is that the suit properties, which are mentioned in the suit, are the ancestral properties of the plaintiff as well as also defendant number 1. Now, what the defendant number 1 is doing is, my lord, defendant number 1 has forged the will of the mother of the plaintiff and has executed certain sale deeds of the suit properties. When this said fact came to my knowledge, I filed a suit for declaration and permanent injunction, my lord. During the pendency of the suit, it came to my knowledge that certain part of the suit properties were sold to the defendant number 2. I implicated defendant number 2 as a party in that matter, my lord. Thereafter, the remaining portion of the properties, 17/10/2022, a paper of publication was made. It says that there is a will in favor of the defendants. That will has been. That proves that they are in possession. Yes, my lord. But that you are not in possession. And right now, I am a resident of Nepal, my lord. I am a resident of Nepal, my lord. There was a mutual understanding between both the parties that after my marriage, I moved to Nepal. The properties were belong to the plaintiff as well as defendant number 1. So, admittedly, you are not in possession of the property. There are certain properties for which we have disputed, my lord. The will has been challenged by me,
succession certificate has What relief you are asking under 39 1 and 2? my lord, what the defendant number one is doing, my lord, there are certain suit properties which are still lying vacant. The defendant number one is trying to alienate the suit properties in favor of defendant number two. That paper publication was made by defendant number two, inviting objections on the suit properties. We made our objection. We filed an application under section 151 of CPC before the trial court, as well as under section under application under order 30 rule 1 and 2. My application under section 151 CPC was allowed, saying that the defendant number one is trying to alienate the properties during the pendency of the suit. Then my 1312 application was rejected on the ground that the defendant number that irreparable loss will be caused to the defendant number two, as he will not be able to enjoy the property rights. But my first contention is that the property is lying vacant since 2008 and 9. The first sale deed for the was executed on the suit property. Whether that those properties are part of this suit? Yes, my lord. Those properties are the part of the suit, my lord. I have mentioned, my lord, may kindly go to page number 5 of my appeal, my lord. The main suit property is Silana Koti, which is 26,000 square feet. So certain portion of the property has been sold, and the remaining portion has been for that a paper publication was invited. As of now, no sale deed has been executed, and for that I have also filed an application for status quo or injunction before this my lord, before this court. That during the pendency of this appeal, at least the status quo order may kindly be maintained so that the suit properties could not be alienated. Or a third property, what will happen, my lord, they'll try to construct or... This is your ancestral property? Yes, my lord. And for that, my lord, they have obtained they have posed a bill. For that, they have obtained a succession certificate, and I have challenged the succession certificate before the district judge, my lord, and that is still pending. Section 52 of the Transfer of Property Act क्या बोलता है? Can save my right, but that is completely contrary to a recent judgment of my lord. Recent judgment has been passed by the... That is the provision. Yes, my lord. Section 52 still in existence. Yes, my lord. It is in existence. So that will give you protection. But that is a contrary to the judgment, this recent judgment passed by the Andhra Pradesh High Court, my lord. I have quoted that judgment at page number 21 of my appeal, my What lord. does section 52 of the TP Act say? Yes, my lord. Transfer of property pending suit relating thereto. During the pendency in any court having authority. So suit or proceedings which is not collusive and in which any right to immovable property is directly and specifically in question, the property cannot be transferred or otherwise dealt with by any party to the suit or proceedings so as to affect the rights of any other party thereto under any decree or order which may be made there, except under the authority of the court and on such terms as it may impose. My lord. The trial court has said that I have the section 52, it's that section 52 will cover my grievance if this later on if this suit comes in my favor. So this section protects you. If my lord may kindly pursue Suppose if it is hard in your favor, then even if they have alienated, that would be, But these are the ancestral properties, my lord. That will be annulled. Yes, my lord. But if the law does not provide, how can we pass an injunction order? At least notices be issued, my lord, because the wrong has been done by the trial court. Not the trial court has come to the correct conclusion. And the applying section 52 and transfer of property loss will be caused to the plaintiff, my lord. So my contention is that will be recovered subsequently. For that one, kindly be my lord to kindly go to page number 21 of my appeal, my lord. I have recently relied on the judgment of the Andhra Pradesh, my lord, which have categorically dealt with section 52 of TP Act. यहाँ का बताइए मध्य प्रदेश का. That I will check, my lord. या
that I have to go through, my lord. I'll find something on that. I'll bring this judgment also, my lord, and try to convince my lord. प्रथम दृष्ट्या हित व अधिकार प्रमाणित करना आवश्यक है. My lord, You have to first establish that you are the owner. my contention is that the suit property, there are certain shops are there for which the rent agreement has been executed by me, my lord. Partition का suit pending है ना आपका. My lord, partition suit is pending, my lord. My contention is that the property belongs to the plaintiff as well as the defendant number one. Certain part of the property has, for which, my lord, there are certain shops are there outside the suit properties. I am the person who have executed a rent agreement for that shops as a owner of that property, my lord. I have annexed those rent agreements, my lord, and these are the part of the trial court written statement also, my lord, of the trial court record, my lord. My contention is that we both are the joint owners and we both are have equal rights to the property, my lord. Since I moved to Nepal, since I'm married in Nepal, in between the possession of the property has been taken. Is the defendant number one has illegally grabbed the properties, my lord. But ultimately, my contention is that the possession equally belongs to me also, my lord. तो बाद में पता चलेगा सूट डिसाइड होने के बाद. That's the only dispute, my lord. In between, they are alienating the property. Section 52 protects you in case. For that, my lord, I'll try to convince my lord on the judgments of this honorable court also, my lord. I have filed the judgment of Andhra Pradesh High Court, and also, my lord, it would not be correct to say right now, but this matter was to be argued by Mr. Chabra, senior advocate, and he right now is in Bhopal for a case, and therefore I couldn't say it, my lord. And there's an urgency in the matter, and therefore right now it will not be appropriate to say it or seek a judgment on that ground. Where is the judgment of Andhra Pradesh High Court? Is that at page number 21, my lord. I have cited the citation as well as the relevant paragraph. Page number 21 to 23. Section 52 cannot be operated as a bar for temporary injunction. That's the judgment, my lord. Kindly bear me for so that I'll try to convince in the next date of hearing or. Para 25, my lord, allowed me to read it, my lord. Para 25. Issue notice. I'm praying for Hamdas, my lord. Hamdas. हाँ, in addition Hamdas कर देना, पूरा लिख देना कुछ. I'm grateful. चलो. 31. मैं pray for Passover. Password करो. Oblate. 32. Reduction. My lord, companies appeal, insurance companies appeal. ठीक है, admit. इसमें क्या delay भी है क्या? Delay नहीं है, lordship, stake the application. बाद में देखेंगे. 50% deposit करवा के कर दो. 50% का order कर देना. और ऊपर the records. Grateful. चलो, notice. Password करो. 34. Petitioner is a retired employee, and his retirement dues has been made unpaid just because of the reason that a criminal case is pending against him. And even after the several Conviction हुआ नहीं अभी. नहीं, Acquittal conviction कुछ नहीं. not yet. It is still pending. And he superannuated in the month of October 2022, and not even a single penny has been paid. What is the law? Whether they can
They can withhold. No, they cannot. So far as the gratuity is concerned, so far as the leave encashment is concerned, there are several dues, Your Lordship. And they have not paid a single penny regarding the several dues. Notice. Returnable forms. Yes. This petition is referred against the interim order NC P1, by which petitioner was terminated from service within a short period of 1 day, Lordship. Petitioner was appointed on 9/2/2023 and terminated on 10/2/2023, Lordship. And this honorable court has decided this matter, state this matter on previous same subject matter. Stay here, Lordship. दूसरे WP में stay किया दूसरे के ऑनरेबल कोर्ट है सेम सब्जेक्ट मैटर प्रयोगशाला शिक्षक का मैटर है और ये भी प्रयोगशाला शिक्षक है इसे भी 9/2 को अपॉइंट किया विदाउट असाइनिंग एनी रीजन 10/2 को टर्मिनेट कर दिया सेम ऑर्डर डेट वेट सब कुछ सेम है कुछ भी फर्क नहीं सेम ऑर्डर 36 में भी सेम WP इसमें भी 9/2 को अपॉइंट किया और NHP P1 को 10/2 अपॉइंट किया 10/2 को टर्मिनेट कर दिया सेम ऑर्डर तो पुलिस अलॉन्ग विद कर देना वो पहले साथ में ना तीनों पिटीशन एक साथ हो जाएंगे यस नेक्स्ट सस्पेंशन My lord, Pune suspension order is annexure P1 by which petitioner has been suspended from the service, my lord. He was assistant grade 3, my lord. Short facts of the case are that, my lord, on file an appeal is provided under rule 23, yes, 23 of the CCA rules. So approach before the authorities. Why have you come before this court? ठीक है मैडम बाद में आइए जब तक मेरे को इंटरिम मैडम जब तक मेरे को कंटिन्यू करने के ऑर्डर कर देता है जब तक मैं अपील प्रिपेयर कर देता हूं मैडम मेरी स्टेप we are not entertaining your petition there is no question of interim relief तो वो एंटरटेन होता है तब रिलीफ देता है ऐसा थोड़ी कि पिटीशन डिसमिस कर रहे हैं और स्टे भी दे रहे हैं आप मैडम लिबर्टी दे दे तो प्रिफर दैट है रूल 23 वाली लिबर्टी दे ना सस्पेंशन ऑर्डर के खिलाफ कई ऑर्डर किए हैं अपन डिस्पोज्ड ऑफ विद लिबर्टी Please, my lord, while to impute order annexure P1 and P2, my application under section 129 of the MP LRC has been rejected for demarcation of my own land. My lord, I am a Bhumi Swami of the subject. Demarcation of your land. Yes, sir. MP LRC. उसकी भी तो अपील होती है. Sir, उसकी अपील करी थी. In fact, that appeal was not maintainable and was rightly dismissed by the SDA. In terms of section 129(8), there is no appeal provided and the rejection of my appeal. 129? Yes. It will be, sir, by way of abundant caution, we had filed an appeal and that was also dismissed. Appeal under 44? Sir, you kindly see section 129(8). So, ये notwithstanding anything contained in sections 44 and 50. Yes. So demarcation नहीं किया इन्होंने. Sir, हमारे खुद का लैंड का demarcation नहीं किया on the very flimsy grounds, sir, that we are not in the possession of the land. And in 1925, the khasra was recorded in the name of state. In my respectful submission, my lord, both the grounds are not tenable in view of the express language of 129. As long as I am the Bhumi Swami, I am recorded in the revenue records for a number of years. I am entitled to get my land demarcated. This is precisely the reason why I filed notice. Okay. My lord, if I may pray for service through Hamdast on respondent number 4 to 10, who are private respondents. In addition, Hamdast for respondent 4 to 10. Requisites by tomorrow. वो सब लिखना पूरा detailed order. Yes. 39. Your Lordship, the matter pertains to teacher eligibility test 2018. The petitioner selection process. Not the process, Your Lordship. If Your Lordship would use the petitioner here appeared in teacher eligibility test 2018, and in 2022
the state government made certain changes and the life of the eligibility test, the result of the eligibility test was extended for 5 years. So in the first round, the petitioner was not successful. His name appeared in 2022 in the second round, Your Lordship. And then he applied for the post of middle school teacher. And we applied for the schools for under school education department, Your Lordship. So you have been appointed? No, Your Lordship. The petitioner applied for school education department. They were by, Your Lordship, if you give me. Government primary teacher हैं ये तो. He was a primary teacher. ये है कि इन्होंने जो ऑप्शन चूज जिस स्कूल में पोस्टिंग के लिए ऑप्शन चूज किया था, पर इनको पोस्टिंग नहीं देते हुए कहीं और पोस्टिंग दे दी. दिस इज बेसिकली ग्रीवेंस. दैट स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट आपका था और वो जो स्कूल में पोस्टिंग दी है वो ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंदर आता है. इट इज द ग्रीवेंस ऑफ द पिटिशनर. I have actually opted for 1097 schools of school education department, Your Lordship. वो ट्राइबल में दे दिया. और ट्राइबल में दे दिया. And many candidates who have. बाहर है क्या? बाहर है क्या? Your Lordship, if you. Election process of both these schools are different. It's result the same, and the counseling, as in like the appointments, were in the application is for school education department only. Only, Your Lordship. Not for tribal. Not for tribal. Your Lordship. Yes. I will take a discussion. And I have made. क्योंकि उसमें ये भी देखा जाता है कि जिस सब्जेक्ट से आपने चूज किया है तो जिस वैकेंसी बननी है गवर्नमेंट के अप्रोच स्कूल जहाँ पर वैकेंसी एजुकेशन में नहीं दे सकते तो मना कर दो आप. Your Lordship, many candidates who have scored less than me have been granted appointment in school education department. And Your Lordship, he has to join the department, Your Lordship, tribal welfare department school there. I have made an application for an interim, Your Lordship. School in under school education department may be kept for the candidate, Your Lordship, till the disposal of the petition. He has scored 7093 rank and many students. For the petitioner submitted that. एक रिक्वेस्ट है मेरा उसमें क्योंकि आपने जब आपको जो पहले जो मेरिट 2018 की जो एग्जामिनेशन हुई थी उसमें जो पहली मेरिट लिस्ट में उसमें आप सिलेक्ट नहीं हुए थे. उसमें उसी जो पहली बारी मेरिट लिस्ट के आधार पर उन्हीं स्टूडेंट में से जो कि सबसे जिनको कम मार्क्स मिले उनको आपने अपॉइंट कर दिया. वो तो सर उसके लिए तो इंस्ट्रक्शन लेने पड़ेंगे. व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस, मतलब व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द रीजन. ये ना अगर बढ़ गई तो फिर इनको कहां से मिलेगा? Then you will have to remove one person from that post. That will cause another complication. Almost 5 candidates. For petitioner submit that the petitioner had applied for Yes, Your Lordship. As a teacher. As a teacher, middle school teacher, Your Lordship. English, subject English. English. Whereas the petitioner has been granted appointment in the tribal welfare department. Tribal education department. Welfare, it's termed as TWD, Your Lordship. Welfare department. Yes, Your Lordship. Department. She further stated that candidates, less meritorious candidates have been appointed in the school education department. ठीक है. Issue notice वगैरह करना. Because no one telling news. In the meanwhile, the respondents are directed to keep one post of middle school teacher bracket में English subject vacant till the next date of hearing. Petition for the police protection malad filed by the husband and wife are the major malad. And they have solemnized the marriage on dated 2/4/2023 माना. And intercaste अभी थ्रेड काम अभी इंदौर में माना के इंदौर. थ्रेड तो मिली नहीं आपको. हमारे इसकी कंप्लेंट करी है मतलब आईवीसी पेज नंबर 22 माला. ये दबाव बना रहे हैं पलट और वो इंदौर में आकर के दिक्कत हो सकती है. सीहोर गोपालपुर थाना कुछ भी केस रजिस्टर्ड हो सकता है. पेज नंबर 22 पे तो किराया चिट्ठी का इकरारनामा. 20 नहीं है वो. हाँ ये किराया ये इंदौर अभी क्या किया इन्होंने? कुछ तो लिखा नहीं है.
इसके बाद में सबसे डायरेक्ट हाई कोर्ट आ गए अपने मतलब ये कंप्लेंट किया मालट इसके बाद में किरायानामे के बाद में कंप्लेंट फाइल की मालट आप देखें मालट इसके बाद ठीक है लता सिंह के लाइफ में डिस्पोज ऑफ कर देना तो इंक्वायरी करेंगे अगर थ्रेट होगा तो आपको प्रोटेक्शन देंगे अदरवाइज इट्स नॉट कंपलसरी का डायरेक्शन दे रहे हैं लता सिंह के लाइफ में स्टेटमेंट भी हो जाएगा पिटिशनर सब कर लेंगे बुला के आपको पूछ लेंगे जरूरत पड़ेगी तो you will get the protection otherwise your application will be rejected by the authorities. Yes. And then Next. This petition is pending since 2024 and the last opportunity was given to file the reply. Even they will not file the reply. The respondents are not. Madam Archana Kher is represented the respondents. Respondents are appearing. Yes, my lord. Wakalatnama is there. And pass it over and we'll take all passovers at 250. Single bench में जब भी बैठेंगे passovers mentions will be taken at 250 only. सर मेरा एक रिक्वेस्ट है मुझे आज ज्ञापन देने जाना है समाज की ओर से अगर आप मेरे को 3 बजे का दे दे टाइम इस केस में मैं आज बैठा सो 2 बजे कमिश्नर ऑर्डर इन द सेकंड राउंड उनको बुला लेंगे कंटेंट करेंगे मैं कम्युनिकेट भी कर सकता हूं You have filed the application for disposal of this fee. In terms of compromise. वेरिफिकेशन हुआ क्या? नहीं सर अभी वहाँ भिजवा देते हैं आइए नंबर 334/23 फॉर ये जॉइंट एप्लीकेशन है जॉइंट एप्लीकेशन 23 which is a joint application filed by the parties in terms of compromise. The parties are directed to appear before the principal registrar of this court on appear only. Friday. On 21st of April at 11 a.m. for recording, for verification and recording compromise. List this case after the compromise we recorded. Lordship, this is petition under Article 227, Your Lordship. The impugned order is Annexure P4. On the last date of hearing, this honorable court was pleased to call for the record of the case, Your Lordship. And today it is listed for admission, Your Lordship. Annexure P4, Your Lordship, this is an order passed by the respondent number 2 in favor of respondent number 1, Your Lordship. The order has been passed by whom? Respondent number 2, Your Lordship. SDO? Yes, Your Lordship. इसकी तो अपील होती है ना? The appeal, only the senior citizen is have the right to file an appeal, Your Lordship. Why? Because it is provided in the Act, Your Lordship. The section. Where is the impugned order? Impugned order is Annexure P4, Your Lordship. Page number तो बताया starting from page number 27, Your Lordship. Page number 27 to 32, Your Lordship. भरण पोषण अधिनियम के तहत आवेदन प्रस्तुत किया है. Yes, Your Lordship. An application was filed before the collector, Your Lordship. The collector has transferred it to the SDO because SDO was the competent authority under the Act, Your Lordship. And the SDO has decided it only on the basis of the application and no procedure what has been prescribed under the Act for holding an inquiry as per the provision of the CPC. Senior Citizen Act के तहत. Yes, sir. Yes, Your Lordship. That procedure has been provided under the Act itself, Your Lordship. तो उस Act में सर जो provisions दिए हुए उसका कोई compliance नहीं किया and an order has been passed, Your Lordship. So that order is a sheer nullity, Your Lordship. इसमें मैं बता देता हूँ. एक तो जो Your Lordship has raised the query as far as appeal is concerned. The appeal is provided under Section 16 of the Act. The Section 16 read as under, Your Lordship. Section 16 of the Maintenance and Welfare of the Parents and the Citizens Act. Any senior citizen or a parent, as the case may be aggrieved by an order of a tribunal, may within 60 days from the date of the order prefer an appeal to the appellate tribunal. He is the son. I am the son, Your Lordship. Against me, the order has been passed. ₹5,000 का order हो गया. The question is not about the quantum, Your Lordship.
The question is that there was various disputed facts involved, and that They have to follow the procedure. they would follow the procedure. क्या follow नहीं किया इन्होंने? Yes, your lordship. Now the jurisdiction and procedure has been provided under section 6 of the act, and The son cannot file the appeal. son cannot file. Only the senior citizen and the parent Parent has the right to appeal, your to lordship. appeal. Right to appeal. Under section 16 of the act, therefore, I am only remedy to challenge it under 227, your lordship. लिखा है ना उसमें? लिखा है एक्ट में? Act में, this is not given that I have right under to serve. But the next- जैसे son cannot file. Yes, that is directly your lordship. Section 16. Now, your lordship, under section 6, subclause 6, the authority is required to send the matter for the conciliation prior to adjudicating it on merits, your lordship. Jurisdiction and procedure. Yes, your lordship. Notice तो दिया था. Notice दिया था, your lordship, but after notice when I appear, the procedure which was required to be followed is to send it to a conciliation officer, your lordship. That has not been followed. For demonstrating that fact before this honorable court, I on the order sheet of the tribunal that I have annexed as annexure sheet.
Prayer for after application listed. अभी तो एडमिट हुई नहीं है, आपने इसको 30/8/2022 से टाइम ले रहा है. Then also, arguing counsel outside the court. हिंदी के आउटसाइड वी विल डिसाइड इट. कितने बार एग्जामिन करेंगे इसको? Our list is occupied with such cases where you don't want to argue. Half of the cases वही है कि जो जिसमें कुछ होना नहीं है और उसमें टाइम खराब होता है 5-10 मिनट एक एक केस में. क्या व्हाट इज द मैटर? Separate petition. नहीं वो तो ठीक है, रिट पिटीशन है. सब्जेक्ट मैटर क्या है? वो तो हमको दिख रहा है, डब्ल्यूपी है, मिसलिनियस अपील है, रिवीजन है, क्या सब दिख रहा है. वो व्हाट इज द मैटर का मतलब क्रक्स क्या है, मैटर क्या है, ये क्या चैलेंज कर रहे हैं आप इसमें? Sorry, sir, fine. Your application for mutation has been dismissed on the ground that the respondents are not the owner and title holder of the land in question, which they seek the mutation. The dispute between the parties is purely civil in nature. Clear provisions that revenue authority steps in the shoes of civil court and rejected the application. ठीक तो ऑर्डर है बिल्कुल. पहले डिक्लेरेशन आपको कराना पड़ेगा सिविल सूट में जाके, who is the owner of the land, उसके बाद म्यूटेशन की बात आएगी. डायरेक्टली आपने म्यूटेशन के लिए एप्लीकेशन दिया, that has been rejected, that you are not the owner of the land. Yes, क्या है? बेसिकली फैक्ट सर यही है कि म्यूटेशन के केस फाइल हुआ था, उस म्यूटेशन के केस में रिस्पोंडेंट ने 711 की एप्लीकेशन पेश की थी, वो डिसमिस हुई, उसके अगेंस्ट ये यहाँ तक है, राइटली रिजेक्टेड क्योंकि उसमें नेक्स्ट P1 का आप आदेश देखेंगे पेज नंबर 11. P1 का ऑर्डर है. हाँ P1 प्रकरण के चलते कमलाबाई वगैरह द्वारा एक आपत्ति आवेदन पत्र सादे 7 नियम 11 CPC व CRPC धारा प्रस्तुत किया. उक्त आवेदन पत्र को तहसील द्वारा निरस्त किया गया. उक्त बाबत एक निगरानी न्यायालय प्रस्तुत की गई. निगरानी प्रकरण के चलते प्राधिकरण प्रस्तुत एक आवेदन पत्र 11 आदेश कर नियम 14 CPC और धारा 32 मध्य संहिता प्रस्तुत किया. दिनांक 10/8/2021 उक्त आवेदन निरस्त किया गया. पुनः प्राधिकरण आवेदन पत्र पेश किया गया, निरस्त किया गया. तो पूरे प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय में प्रचलित है, उसका निराकरण भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा साक्ष्य उपरांत किया जाएगा. लास्ट में अतः प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय गुण दोषों के आधार पर साक्ष्य उपरांत समय सीमा में जल्दी निराकरण करे. ये रिवीजन में ऑर्डर पास हुआ है, वो उसका निराकरण हो गया होगा या पेंडिंग होगा? पेंडिंग डेफिनेटली. तभी पेंडिंग होगा, तभी उन्होंने ऑर्डर जो मूल प्रोसीडिंग है वो तो पेंडिंग हो गई. उसी में इंटरिम जो एप्लीकेशन पेश हुई थी वो डिसाइड हो गई वापस से रिजेक्ट होते हुए कहा कि म्यूटेशन एप्लीकेशन कर, तो डेफिनेटली पेंडिंग ही होगा. अदरवाइज वो ऑर्डर भी सब्सिक्वेंटली चैलेंज होना चाहिए. हाँ वो पेंडिंग है, ठीक है, तो इंटरफेयर करने की जरूरत ही नहीं है. उसमें लिखिए in this petition under article 226 of the constitution of India, the petitioner has assailed the order dated 24/9/21 annexure P1 in case number 2/revision/2020-21 by the respondent number 3, order dated 20/12/2019 annexure P2 in case number 30/A bracket में 1/2017-18 by the respondent number 5 and 23/12/2017 annexure P7 in case number 21/appeal/2017-18 filed by the respondent number 4 and order dated 6/2019
2019 annexure period passed in case number 261/A/2017-18 passed by the respondent number 2, whereby the learned Tahsildar has declined to entertain the application under Order 7 Rule 11. Yes, CPC, on the ground that the private respondents are not the owner and title holder of the land in question, for which they are seeking mutation. Full stop. The order passed by the upper collector in revision dated 24/9/2021 states that the Tahsildar has not committed any error in rejecting the application under Order 7 Rule 11 CPC on the ground that the original proceeding is pending. Yes, before the court below, and therefore disposed of the revision on the ground that disposed of the revision directing the court below to decide the application after recording of evidence. Accordingly, the revision was dismissed. Next. Learned counsel for the petitioner submitted that the revisional court has erred in remanding the matter that in rejecting the application under Order 7 Rule 11. To stop on perusal of the records and the judgments, it is seen that the original proceeding is still pending before the trial court. Stop. The revisional authority has only directed the trial court to decide the pending application as early as possible after recording of evidence. To stop. No error can be found in the orders passed by the court below. Accordingly, this petition being bereft of merit and substance is hereby dismissed at the admission stage itself. However, the trial court is directed to expedite the hearing of the case pending before it as early as possible, bracket may if not already decided. The petitioner has filed an application under section 1516 of the MPLRC mirror before the Tahsildar manor for re-recording of his name mirror on account of a mistake committed by the authorities in the Bandobast mirror, which has been carried out in the year 1996-1997 mirror. The Bandobast has been carried out mirror, and that application was allowed by the Tahsildar wide annexure P6 mirror. Thereafter mirror, the respondent number 5 to 30 have preferred an appeal before the SDO that was allowed. And the order passed by the Tahsildar was satisfied, mirror. Against that order, we preferred appeal, mirror, before the collector, and that has been, mirror, dismissed. Against which, mirror, we have preferred. What is the ground for dismissal? Mirror. Annexure P1, mirror. The operative part, para 5.3, mirror. They have said, mirror, that proper inquiry was not conducted. There is no record so as to demonstrate that these are the legal hires of the late Kaushalya Bhai and Shaitan Bhai. This is the विचारण न्यायालय द्वारा प्रश्नाधीन भूमि पर पेज नंबर 32 शैतान भाई बिलाला का नाम राजस्व रिकॉर्ड में त्रुटिवश विलोपित होना माना है क्योंकि शैतान भाई का नाम कम होने का कोई वैधानिक कारण दृष्टिगत नहीं हुआ है। इस कारण शैतान भाई सोइंसो के हिस्से के मान में से संयुक्त रूप से दर्ज करने सोइंसो से प्रसारित किया गया, किंतु विचारण न्यायालय द्वारा किन विधिक आधारों पर शैतान भाई का वैध वारिस अपीलार्थी कौशल्या बाई को मानकर शैतान भाई की प्रश्नाधीन भूमि पर प्रत्यर्थी गणों के साथ संयुक्त रूप से 1/3 मान से नामांतरण स्वीकार किया गया, इसका कोई ठोस आधार नहीं है। अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में ऐसा कोई वैध प्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है जिससे वह मृतक शैतान भाई की पुत्री एकमात्र विधिक वारिस घोषित हो सके। अपीलार्थी कौशल्या बाई ने अधीनस्थ न्यायालय में शैतान भाई की मृत्यु कब, कैसे, किस दिनांक को कहाँ हुई, इसकी कोई घोषणा अपने आवेदन में नहीं की है।
एवं उसकी पुष्टि हेतु मृत्यु प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है जिससे अपीलार्थी कौशल्याबाई को शैतान बाई का वैध वारिस माना जा सके. This is the observation which is contrary to record. The death certificate was on record and it is not disputed by the respondents also, my lord, that we are the legal heirs of शैतान बाई. शैतान बाई के स्थान पर कौशल्याबाई का नामांतरण विधिक प्रावधानों के अनुरूप नहीं होने से किया गया. Yes. So their observation is there is no document to prove that the Kaushalya Bai is the legal heir of Shaitan Bai, and there is no document as to the death of the Shaitan Bai, and therefore this is what their observation is. Now, my lord, whereas the order passed by the Tehsildar may kindly be seen, my lord, Annexure P6. My lord. This is a detailed order wherein, my lord, the evidence has been recorded before the Tehsildar. He conducted an inquiry. There is a Panchanama which has been prepared, my lord. You show us from which document that Shaitan Bai is the legal heir of. That is what I am submitting. Page number 44, my lord, may kindly be seen. The page from page 43, my lord, the last पैराग्राफ में साक्षी गोपाल ब्रजेश सिंह सोइंसो की साक्ष्य 18/4 के तहत न्यायालय में प्रस्तुत की गई जिसका प्रतिपरीक्षण हुआ. इसी प्रकार ब्रजलाल राम सिंह सोइंसो की साक्ष्य में प्रस्तुत की गई उसका प्रतिपरीक्षण हुआ. राजस्व निरीक्षक की रिपोर्ट प्राप्त की गई, ग्राम की रिपोर्ट प्राप्त की गई, ग्राम पंचायत की रिपोर्ट प्राप्त की गई. ये सारे रिकॉर्ड्स आए हुए हैं, सबकी रिपोर्ट कॉल की गई है so as to verify the contents of the applications which I have referred before the Tehsildar. Then साक्षी ब्रजेश सिंह ने अपने प्रतिपरीक्षण में बताया कि वह पढ़ा लिखा नहीं है, इस प्रकरण के भूमि के कागजात नहीं देखे, शैतान बाई की मृत्यु की जानकारी नहीं है. साक्षी गोपाल सिंह ने अपने प्रतिपरीक्षण में बताया कि वह पढ़ा लिखा नहीं है. Then साक्षी ब्रजलाल का प्रतिपरीक्षण हुआ, उसमें ब्रजलाल ने कहा है कि वह अनपढ़ है, शैतान बाई कौशल्या बाई के बारे में कुछ नहीं जानता है, वह देवराजी को भी नहीं जानता है. प्रतिपरीक्षण में सोइंसो का राजस्व और इसमें बंदोबस्त की कोई था. ये साक्षी ब्रजलाल ने कहा है कि शक्तिमयी पति देवराजी का नाम राजस्व और लेकर बंदोबस्त की कोई बात का ज्ञान नहीं है. तो वालों की सोइंसो है साक्षी शासकीय साक्ष्य के आधार पर शैतान बाई को देखे ही नहीं है. ये न्याय है सर, बदलाव नहीं करा है. छोड़ दिया, कर दिया. इसके बाद से आगे बोल रहा है अनपढ़ है एवं शैतान बाई एवं कौशल्या बाई के बारे में कुछ नहीं जानता. जी. देवाजी को भी नहीं जानता है. ज्ञान नहीं है कि भागीरथ देवाजी राम रतन के सभी भाई थे. एक राम को भी नहीं जानता. ये उनके रेफरेंस है, रिस्पोंडेंट्स के रेफरेंस है. पढ़ना. So you want your name to be mutated? We want our name to be re-recorded because it was deleted on account of a clerical error committed by the authorities during the course of the bandobast which has been ownership first. Yes, sir. First you have to prove your ownership. First I have to get a declaration that you are owner of these lands, then mutation will take place. No, but because it was a mistake. On what basis you are asking for mutation? Re-recording of your... Re-recording because it was deleted on account of a bandobast. Prior to bandobast, there was a name which was recorded of Shaitan Bai. The record says that there is not a single document to show that you are... साक्षी साक्ष्य अर्थात पटवारी रिपोर्ट में जिसमें पटवारी ने लिखा है कि शैतान भाई विधवा देवर की एकमात्र विधिक वारिस कौशल्या बाई तथा सोइंसो बुलाला है, इस तथ्य का सत्य होना बताया है. पेज नंबर 44 सर. ठीक है, नोटिस कर देता हूं, देखते हैं. And there is a Panchanama annexure P5 my lord also there. ठीक है, इशू नोटिस मत भी अगर फाइल तब दे everything. Definitely, I will file more documents my lord, as in case if the record be called my lord, that will be because the appeal has been decided. Now no stay will be there my lord. But in case if the record will be available on record my lord may be able to say the record matter is pending before the London DB. My lord, this matter may kindly be connected with. क्या है मैटर क्या है? My lord, this is the matter relating to the admission in the educational institution. Now, education society.
examination for which year? My lord, 22-23. Academic year 22-23. My lord, basically we are challenging the implement order which has been passed by the respondent number 2, which is dated 12/5/2022, by which an unconstitutional condition has been imposed on the unaided minority institution which do not take any aid from the state government. And as per roster, the matter pertaining to the admission to the educational institution are to be listed before the division bench, and two similar matters are pending before the division bench. DB में जाएगा नाटक तो शुरू से सिंगल बेंच में चल रहा है तो जाए शुरू से सिंगल बेंच में चल रहा है एडमिशन का रूल्स के प्रोविजन को चैलेंज किया तो बेसिकली सर आपने गाइडलाइन चैलेंज किया ना चैलेंज किया गाइडलाइन माय लॉर्ड गाइडलाइन का पर्टिकुलर एक रूल चैलेंज किया 26.11 उसका एक क्लॉज है पेज नंबर 64 यस माय लॉर्ड अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त महाविद्यालय प्रवेश दिस अल्पसंख्यक संस्थाओं में प्रवेश प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन माध्यम से संचालित होगी अल्पसंख्यक महाविद्यालय प्रवेश हेतु पंजीयन आवंटन प्रयोग करने हेतु पर पृथक से उपलब्ध लिंक के माध्यम से संचालित होगी सभी अल्पसंख्यक संस्थाओं को उच्च शिक्षा विभाग के पोर्टल पर अपनी संस्था को रजिस्टर्ड करना होगा एवं उनके संस्थान के संबंधित विश्वविद्यालय के संचालित पाठ्यक्रमों विषयों उनकी सीट संख्या शुद्ध उसका क्या हुआ प्रिंसिपल सीट में जो पेंडिंग था उसका क्या वो डिसमिस हो गया डिसमिस हो गई प्रिंसिपल सीट यही ADB में जो पिटीशन पेंडिंग है मान लो WP 12973 ये इशू डिसमिस अगर हो गया तो दैट सेम ऑर्डर विल बी यस वो हमारे रिप्लाई के साथ अपने पेज नंबर 33 पे वो डिवीजन बेंच का ऑर्डर पेश किया यस मैडम एस एक्शन R7 पेज नंबर 33 लास्ट पेज ऑफ रिप्लाई My lord, that order is sub silentio because it is not dealing with the TMF Foundation, the constitutional bench judgment, and my grounds is different from that writ petition. पहले इंटरिम रिलीफ दिया था उसके बाद में नहीं इंटरिम रिलीफ तो मिला ही नहीं इंटरिम रिलीफ मिला ही नहीं 11825 है ना ये 11825 WP है उसको ऑर्डर भी एनेक्चर R5 में पेश किया पेज नंबर 30 पर है पेज नंबर 30 पे है अच्छा दैट वाज डिक्लाइन यस इंटरिम रिलीफ वाज डिक्लाइंड एंड सब्सिक्वेंटली A learned counsel for petitioner submit that clause 26.11 of the guideline restricts the right of minority institutions. Provisions have been made to allot seats for admission in the minority institution, the ratio of 1:1.
right to admit the students is not an absolute and unqualified right, and no prejudice is going to be caused to the petitioner institution on the basis of clause 26.11. Exactly identical. Process for online admission which has commenced is to be completed. Complete भी हो गई उस सेशन की, तो पूरा हो गया ओवर ही हो गया 2022-23 मतलब फाइंडिंग है ना clause 26.11 is not an absolute right. There is a finding of the court division bench. रिप्लाई के साथ पेज 30 पे लगा हुआ है ऑर्डर. जो आपका सबमिशन है वही that has been dealt with in that case. But my lord, this is the interim order. This was not the final order. Final order, page number 33. But the question is, my lord, the grounds which I have raised are different from the petition which. Admission हो गई, online admission is over now for that academic session. Online. We don't know what are the new guidelines for subsequent years. If you are still agreed, you can challenge the new guidelines. My lord, as on date, even if that clause 26.11 is set aside, then also admissions cannot be granted now at this stage. My lord, the question involved in this petition is whether the guideline which were issued by the respondent number 2 and the clause 26.11 is constitutional or not. This is directed to verify as to whether this being an educational matter would be heard by the division bench or not, just before appropriate bench in the next week. But it seems that the petitioner is no longer interested to prosecute this petition. On 25/7/2022 and 10/8/2022, the petitioner was remain absent. नोटिस चैलेंज करना 2021 में इशू हुआ तो खत्म हो गया तो. But the pipeline has already been laid down underground. इसमें लिखिए none for the petitioner, learned counsel for respondent number Yogesh Vittal for to submit that in the present writ petition notice dated 5/10/2021 has been challenged. काय के बारे में था ये? So this is an underground pipeline for the gas. For inviting tenders. No, Lord. The LPG gas line has been. हाँ P3 कहाँ पे है? Page 69. 69. 69. Has challenged the order to so and so annexure P3. Which is a notification for laying down the Underground pipeline. Underground gas pipeline. Yes. Learned counsel for the respondent submit that the pipeline has already been laid. Therefore, nothing survives in the writ petition. Accordingly, the same having been rendered infructuous is dismissed. Dismissed as infructuous. Chaliye, next. Yes, my lord, the state was directed to file reply in 3 days on 23/8/22. Two weeks time done. 2 weeks time done. आपने रेस्पोंडेंट को इन्फॉर्म किया क्या पहले बताओ. बताइए कौन सा लेटर आपके पास है. ये तो नोटिस करते हैं इसमें. Otherwise, ये टाइम लेते रहेंगे. Same दिन में because the matter was regarding termination of the service. That is true, but they have not informed the authorities. I know that. अब ये टाइम यहाँ लेते रहते हैं, वो भूल जाते हैं. Notice. What about the relevant rules you have filed? On the same day, इसमें लिखिए though the learned counsel for respondent has been asking for time to file the reply, but no reply has been filed. Issue notice to the respondents on payment of PF by RD mode within 3 working days, returnable 4 weeks.
अब आ रहे जवाब इसके बाद। Time will be permitted, Dusty, my lord, already a lot of time has already passed. इन एडिशन 10 पूरा ऑर्डर कर देना है ना, एफिडेविट और क्या लिखते हैं सब लिख देना उसमें। व्हाट अबाउट दिस कलेक्टेड केस? सेम ऑर्डर। I move. 54 मेजर पेनल्टी। Please, the lordship, the challenge is the order passed by joint director by annexure P1 at page 11, by which count of unauthorized absence. Last time it was listed on 23/6. Yeah. There is a delay. I have filed an explanation for filing the petition delayed, and the explanation which I have filed, in which it has been specifically stated. By which IE number? अच्छा है, मिल गया। Application for condonation. IF 479922. In which I have filed the prescription of my wife who is unsound mind, और वो इस तरह की है कि कभी भी यूटेंसिल्स फेंक देती है, लेबर से झगड़ा कर देती है, अनरेस्ट हो जाती है। उसके ट्रीटमेंट के जो है 2008 से 2022 तक के सारे प्रिस्क्रिप्शन मैंने फाइल किए। And on account of this, the petitioner was not able to prefer the appeal or the appeal under section 23 of the Civil Services Classification and Control of Rules. सारे मैंने पेपर्स लगाए हैं डॉक्टर अशोक गागरिया के। 14 साल का डिले है सर। आप मेरी एप्लीकेशन का पैरा 2 का ए देख लें। जबकि मेरे द पिटिशनर पढ़ लिया पूरा देख लिया। ये ट्यून है। इसमें 477 दिन का जो डिले बता रहे हैं, आप कनेक्शन P2 देख लें। मेडिकल बोर्ड ने ये कहा है कि ये 26/6/2007 से 4/4/2008 तक ये खुद भी मार देखें। एनेक्चर P2 एट पेज 12 that was not considered at the time of passing this annexure P1, क्योंकि ये 4/10 का है और ये सर्टिफिकेट है 4/4/2008 का। मेडिकल बोर्ड का सर्टिफिकेट है, MY में ये प्यून है, वो कंसीडर नहीं किया 13 में। और आपके एप्लीकेशन में तो लिखा ही नहीं कि बीमार था या क्या, डे टू डे एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है जब डिले बहुत हो जाता है तो। वाइफ की इलनेस थी और मैंने सारे प्रिस्क्रिप्शन 14 साल में एक भी दिन टाइम नहीं मिला। देखें पूरे प्रिस्क्रिप्शन देखें उसके। नहीं, प्रिस्क्रिप्शन तो है, वो तो दवाई चल ही रही है, उसमें देयर इज नो डाउट। और मैंने ये भी लिखा हाउ टू मतलब कम टू द कंक्लूजन दैट यू डिड नॉट इवन गेट इवन डेज टाइम ड्यूरिंग दीज 14 years। यू मस्ट बी मूविंग आउट, यू मस्ट बी गोइंग टू द हॉस्पिटल टू परफॉर्म योर ड्यूटीज। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हमको टाइम ही नहीं मिला वकील साहब के पास जाने के लिए। फेट तो ये है 14 साल का डिले बहुत ज्यादा होता है। पर फेट तो ये है, यदि इसको कंसिडर कर लेते P2 को तो ये नौबत ही नहीं आती P1 की। ये वो तो मेरिट की बात है। अभी तो यहाँ अपने को पिटीशन एंटरटेन करना नहीं करना उस पॉइंट पे देखना है। सुप्रीम कोर्ट के भी कई डिसीजंस हैं जिसमें कहा है कि ये भी है, सिटिंग टाइट योर मैटर्स। ये भी अथॉरिटीज हैं कि केवल इस ग्राउंड पे थोड़ा करंट, ये भी अथॉरिटीज है। तो फिर एक्सप्लेनेशन हो तो डिले करें, कंडोन करें उसको, है ना। एप्लीकेशन ओनली सेज दैट शी वाज एंड आई एम टोल्ड बाय पिटिशनर कि यदि ये रिप्रेजेंटेशन कंसीडरेशन के लिए दे देते हैं वो कंसीडर कर लेंगे, क्योंकि सुप्रीडेंट का कहना है कि अब ये हमारे हाथ में नहीं है, अब यदि कोर्ट हमको ऑर्डर करती है तो हम कर देंगे। मैंने उसका रिप्रेजेंटेशन भी दिया था। ये सर 31/8/12 को एनेक्चर P3 एट पेज 13। इसका जवाब दीजिए आप पहले एप्लीकेशन का, उसके बाद कंसीडर करेंगे डिले कंडोन करना कि नहीं। बिकॉज देयर इज अ ह्यूज डिले।
इसमें लिखिए इसका आईए नंबर कुछ नहीं। आईए नंबर 799/22. Learned Council for the State is directed to file reply to IA number 4799/22. 22 within 2 weeks. Yes, thereafter. Lordship. इसको 3 वीक्स कर दे सर क्योंकि वाईसी बनने में टाइम है 3 weeks. Again, I'm for respondent number 2. No official notices has been issued, my lord. But for the department, I appeared on behalf of respondent number 2. The last date of hearing, the order was that respondent number 3 was directed. That is the civil surgeon. So what is the reason for not allowing the petitioner to join? Instruction, my lord, so far as we have gone through the file, my lord, it is that the criminal case has been registered against him, my lord. So can it be a ground? He is a Conviction नहीं हो जाता तब तक कुछ नहीं कर सकते. No, my lord. He is a contractual employee with the National Health Commission, my lord. And as per the terms of the contract, my lord, if any criminal case has been registered against the petitioner, my lord, then he is not allowed to in the service, my lord. The allegation against him are very serious, which is at Annexure P7, my lord. Would my lord be pleased to see a show cause notice has been issued by the department, my lord. Thank you. इनका कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉई वो खत्म हो गया. एक साल का ही होता है. Every year on 31st of March it ends, my lord. So it is of 21, lord. He has not filed any document to show that it has been renewed. My lord. None for the petitioner. Petitioner has in this petition has prayed for direction to the respondents to allow him to join the duties as dental surgeon. Unit counsel for the next unit counsel for respondent number 1 submitted that the petitioner was a contractual employee appointed for a period of 1 year. Full stop. In the present petition, not a single document has been filed by the petitioner to show that his appointment has been renewed from time to time. Moreover, criminal case is pending against him. The petitioner, therefore, renewal cannot be done. My lord. In view of the aforesaid, no relief can be granted to the petitioner. Accordingly, the petition is dismissed. Going for analogous hearing of this writ petition with WP number 2458 of 23 and 2470 of 23, arising out of the same land. Arising out of the same land. The other relatives of the brother and the. We decide this case and then apply this judgment in those cases. It is not possible. But all three petitions may kindly be heard. Issue analogous petition तो भले 10 लगी हो तो भी सुनना तो उसी पॉइंट पे अपने को. Yes, my lord. Why do you want adjournment? 2022 में फाइल हुई थी. आज तक अभी तक लगी थी क्या एक बार? Yes, my lord. कब लगी थी? Lord, on 20th/7/2022. What is your prayer? Let us see. देखते हैं अगर होगा तो बड़ा. The arguing counsel is Mr. Gupta and he is not available today. Adjusted है? No, my lord. Not then refused to denotify the land in question under section 48. List along with WP so and so.
in the next week. पासवर्ड करो, पट्टी चलाओ तो 2.25 पासवर्ड दिया गया है, चला दिया। यस, Lordship, I have to file additional documents, train for 2 weeks of time. what additional documents? लॉर्डशिप इसमें ग्रेचुटी अमाउंट है, ये ग्रांट हुई है हमें, जो कि 6,61,000 है। तो इससे रिलेटेड बैंक में जो पैसा था वो क्रेडिट हुआ था, नेक्स्ट डे बैंक ने डेबिट कर दिया। What is your grievance? पिटीशन तो यहाँ मेंटेनेबल ही नहीं है। अच्छा, सीजीआईटी के खिलाफ आया हो? Yes. तो इसमें एडिशनल डॉक्यूमेंट क्या पेश करना है? लॉर्डशिप, सीजीआईटी के जजमेंट को चैलेंज किया था, हाईकोर्ट ने उसे डिसमिस किया था, तो फेवर में आया था जजमेंट, तो उसमें ग्रेचुटी का जो अमाउंट था वो पे नहीं हुआ था। That was calculated 6,83,760. Only 22,617 was paid to us. And remaining 6,61,143 was remaining amount. How do you say that he was eligible for this additional gratuity? CGIT है क्या है? लेबर कोड क्या है? CGIT है लॉर्डशिप। Industry, practice. Yes, लॉर्डशिप। इस P1 का क्या ऑर्डर है? दिस WP का ऑर्डर हुआ? WB में एक मिनट लॉर्डशिप। This is a regarding reinstatement. Regarding reinstatement? Yes, my lord. इनका reinstatement हो गया? Reinstatement हो गया, उसके बाद ये रिटायर भी हो गया, रिटायर ड्यूज भी दे दिए हैं। तो जो ग्रेचुटी अमाउंट था वो अभी तक पे नहीं हुआ है, पूरे ड्यूज मिल गए हैं, बैंक वेजेस मिल गया है, लेकिन जो ग्रेचुटी अमाउंट है वो पे नहीं हुआ। इसमें कौन सा ऑर्डर चैलेंज कर रहे हैं आप? P2? सीजीआईटी का ऑर्डर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ लॉर्डशिप। P2? नहीं, ये तो कंप्लाई होगा ना ऑर्डर? Yes, my lord. लॉर्डशिप, पेज नंबर एनेक्सर R3, एनेक्सर P3, पैरा नंबर 2 लॉर्डशिप। But you are not challenging this order Yes, my in lord. this writ petition. You are challenging fully. You are challenging annexure P2, which is an order passed by the CGIT. That is already challenged in earlier writ petition and That this order was upheld. Thereafter, you have been reinstated. Then you started working. Now, after attaining the age of superannuation, you have been retired also. Yes, lordship. Dues have been paid. All the dues was not paid. Actually, lordship, I was. Are you challenging in this petition? You are challenging P2. yes, that is already Cannot be challenged. अगर कुछ कम दिया है तो then make a representation, they will decide. See your that first क्या बोलते हैं उसको, first title देखो आप नीचे, क्या challenge कर रहे हो आप? subject matter is particular for the order passed against which this petition is made. You are challenging the order dated 27/1/2015 annexure P2, correct? Right, lordship. वो ऑर्डर पास होने के बाद में यूनियन ऑफ इंडिया रिट में आ गई. Yes, sir. That order has been upheld. Your reinstatement has been upheld. So there is no adjudication of this extra gratuity to be paid or not. The lordship, actually, the amount is remaining, was not paid by the Union of India. But this is not the subject matter of this petition. Right. आपको क्या, आपको जब ग्रेचुटी मिली नहीं तो आपको रिप्रेजेंटेशन देना था एनेक्सर P3 के बाद में.
कि अब ये इतना कम दिया इन्होंने हमको, फिर उस पर कोई ऑर्डर पास करते तब उसको चैलेंज करते रिट में आप। अभी इसमें कोई रिलीफ दे ही नहीं सकते, फिर P2 को कैसे सेटिसाइड कर देंगे जो ऑर्डर ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो गया? दैट इज इन योर फेवर, P2 इज इन योर फेवर, P2 P3 नहीं सॉरी P1 P1 and P2 both. both the orders is in your favor. Now see your prayer clause in this petition. थोड़ा सा एनालिसिस करना पड़ता है ना अपन क्या चैलेंज कर रहे हैं, कभी कभी आपका एडिशनल ग्रेचुइटी का एडजुडिकेशन हुआ कि नहीं हुआ, कहाँ हुआ बताइए एडजुडिकेशन। If you are aggrieved by P3, make a representation, wait for their decision. हो सकता है इनसे गलती हो गई हो। इसमें क्या होगा आप देखिए, अच्छी क्या करता है एडिशनल ग्रेचुइटी रुपए स्वयं सो। P3 के बाद में कोई रिप्रेजेंटेशन दिया आपने? P3 के बाद में नहीं दिया सर। सर एक करस्पॉन्डेंस किया था यूनियन ऑफ इंडिया से, उसका कुछ नहीं हुआ सर। उसका रिप्लाई आया था। हाँ सर P11 लॉर्डशिप। लास्ट पैरा लॉर्डशिप, P11 लास्ट पैरा। ये भुगतान भी किया जाए? नहीं किया लॉर्डशिप, नहीं किया भुगतान, नहीं किया लॉर्डशिप। इसी से संबंधित कुछ डॉक्यूमेंट्स लॉर्डशिप जो एडिशनल में आप इसको चैलेंज करो ना इस लेटर को। Actually. हाँ चैलेंज किया आपने। यस लॉर्डशिप। अभी ये बोल रहे हैं भुगतान किया जा चुका है। लॉर्डशिप हुआ नहीं एक्चुअली, ये निर्देशित किया था कि अब इंडस्ट्री को ये भुगतान किया जाए, तो उन्होंने भुगतान किया नहीं। और लास्ट जो ट्रांजेक्शन हुआ था अभी मई में, आपने कहीं पिटीशन में ऐसी पिटीशन बनी नहीं आपकी? यस इसको विड्रॉ करके इसको चैलेंज करो इस लेटर को, और उसमें डायरेक्शन मांगो, या अपने क्लाइंट से पूछो पैसा मिला कि नहीं मिला, मिल गया होगा वो बता नहीं रहा, जो मिला नहीं है वो ट्रांजेक्शन, तो फिर आप फिर बोलोगे कि जो बैंक में ट्रांजेक्शन हुआ था 4th 5th ऑफ अप्रैल में, कि उसमें पैसा क्रेडिट हुआ था। they will not give you cash, they will transfer this amount in your account, बैंक अमाउंट exactly। अपना बैंक स्टेटमेंट लगा this, yes exactly। after this you file the bank statement showing that none this money has not been transferred। लॉर्डशिप ट्रांसफर हुआ था 5th को, एंड 4th को हमने डेबिट कर दिया सेम अमाउंट, डेबिट कर दिया। हाँ 4th को लगाओ ना पोर्शन लगाओ सर। मैं वही एडिशनल के लिए सर मुझे कल तक का टाइम चाहिए, तो डॉक्यूमेंट्स ही नहीं आपकी। आपकी पिटीशन क्या है? सीजीआईटी भी चैलेंजिंग P2 को चैलेंज कर रहे हैं जो आपके फेवर में ऑर्डर है, उसको सेटिसाइड कर देंगे तो आपका सब ये और माइनस हो जाएगा, जितना मिलना है वो भी नहीं मिलेगा। तो ऑलरेडी हाई कोर्ट से अपहेल्ड हो चुका है। क्या करोगे? पूरा अमेंड करोगे इसको? सर इसको मैं विड्रॉ करता हूँ सर, उससे विड्रॉ करके फ्रेश पिटीशन जो आपका जो बैलेंस बचा है इसके लाइट में चैलेंज करो, और स्टेटमेंट लगा दो कि साहब ये दो इनका कहना है कि पेमेंट कर दिया, पेमेंट किया दूसरे दिन उसको विड्रॉ कर लिया, ऐसा बताओ फिर नोटिस करेंगे उसमें। यस लॉर्डशिप। विड्रॉ विद द लिबर्टी टू फाइल फ्रेश पिटीशन। 59 Please it will be kept in second down. Mention officer is on another one. Password. Passwords will be taken at 2:15. Yes. This petition has been filed by the petitioner against the illegal action of the respondent number 2, my lord, whereby the respondent number 2 was trying, my lord, to use the land of the petitioner, my lord,
for construction of a pond, my lord. But in this case, my lord, the petitioner is the owner of the land of survey number 103/3/2, my lord. The total area is 4.260 hectare, my lord. Now, my lord, after filing of this petition, my lord, the respondents have filed the reply, my lord. And they have said, my lord, that out of this total area of 4.260 hectare, my lord, they are using only an area measuring about 1.720 hectare of the land for construction of the pond, my lord. And they have also said, my lord, in the reply, my lord, that after filing of this petition, my lord, they have initiated the acquisition proceeding, my lord, and in that acquisition proceeding, the notice eviction R2 has also been issued to the petitioner, my lord. So, my lord, in view of the reply, my lord, there are 3, 4, and 5, my lord, with the respondents have filed, my lord. Since they have said, my lord, that the acquisition proceeding required. Yes, my lord. So, my lord, in view of this, they say that they are following the so, my lord, in view of this reply, my lord, this petition may be disposed of, my lord, that the acquisition proceeding has been initiated as per their reply. They have also said, my lord, that they will not use any part of my land, my lord, without there being any acquisition proceeding. So, in view of this statement made by the respondent number 2, my lord, in the reply, the grievance of the petitioner is that the respondents are interfering in the peaceful possession of the land belonging to the petitioner at survey number 102/3/2 and measuring 4.260 hectare situated at village Palsodi, Tehsil and district Ratlam. Full stop. Next paragraph. Reply has been filed by the respondents in which they have submitted as under तारा 3, 4, 5 उतार देना. ठीक है. In next paragraph, in view of the aforesaid, the grievance of the petitioner for the time being stands addressed. No further identification is necessary. Accordingly, this petition is disposed of. अब इसके बाद अगर वो नहीं करेंगे तो फिर आना है 61 डिप्टी डायरेक्टर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ने पेट्रोल पंप की एनओसी देने का मना करा था तो उसकी अपील उज्जैन कमिश्नर के यहाँ फाइल करी सेक्शन 30 अंडर टीएनसीपी एक्ट 1930. कमिश्नर को स्पेसिफिक इसमें सेक्शन 31 में दिया हुआ है कि अपार्टमेंट या हेयरिंग ग्रांट करेंगे दोनों को, अपीलेंट और रिस्पोंडेंट दोनों को डिटेल ऑर्डर पास करेंगे. उन्होंने अनुपस्थिति में प्रोसीडिंग देखे आपको ना आप भी एप्लीकेंट है क्या? अपीलेंट है पेट्रोल पंप के लिए जी. तो उन्होंने एनओसी तो हमने उसके सेक्शन 30 में अपील कर दी कमिश्नर उज्जैन के यहाँ पे. एनओसी किसको दी? नहीं दी, हमको नहीं दी, तो उसको ऑर्डर चैलेंज करा हमने कि हमको दी एनओसी, किसी ना किसी को तो दिया, दूसरों को दिया. उसी उसको पार्टी नहीं बनाया आपने? नहीं, इस पेट्रोल पंप के लिए उस रोड पे बाईपास रोड पे वो दूसरे को दिए. हमने स्पेसिफिक दूसरी जगह के लिए मांगी थी तो उन्होंने बोला कि हमारे पैरामीटर में आप नहीं आ रहे इसलिए हम आपको नहीं दे सकते हैं. तो हमारे ग्रीवांस ये है कि कमिश्नर ने हमको डिटेल बिना सुने अनुपस्थिति में प्रकरण को निरस्त कर दिया. आप प्रोसीडिंग देखें उसकी. रिटर्न ऑब्जेक्शन हमने पहले तो मेरिट पर आप रिटर्न ऑर्डर पास कर देंगे पेज नंबर इस पे. ये तो आप कमिश्नर के यहाँ गए थे आपको जब एडवर्टीजमेंट हुआ पेपर में पब्लिश हुआ जी, आपने अप्लाई किया जी, आपको रेट में आना चाहिए. नहीं तो अपील देखा P1 में देखें आप पेज नंबर 24 पे यह भी अवगत कराया जाता है कि हस्ताक्षरकर्ता के आदेश से विरुद्ध होने पर मध्य प्रदेश नगर ग्राम नियोजन अधिनियम की धारा 31 के अंतर्गत आयुक्त राजस्व संभाग को अपील का प्रावधान है. हमने अपील कर दी वो लास्ट पेरा P1 पेज नंबर 24 में अपील का प्रावधान था तो हमने अपील कर दी उसकी. ये आपको मिल गया था क्या? ठीक, एनओसी मिल गई थी आपको? एनओसी नहीं थी उन्होंने उसको लिखा ना अतः आवेदित भूमि पर मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम नियोजन अधिनियम की धारा 31 के तहत पेट्रोल पंप निर्माण तो अनुमति दिए जाने से इनकार किया जाता है. उसके नीचे दिया है कि आप इसमें इसके अगेंस्ट सेक्शन 31 में कमिश्नर रेवेन्यू को अपना अपील कर सकते हैं. हमने अपील कर दी. अपील की प्रोसीडिंग कमिश्नर साहब के यहाँ की भी है, उनको आप नोटिस देखेंगे
नहीं, अनेक्सर P2 क्या है ये? ये कमिश्नर उज्जैन की। नहीं, ये लेटर है IOC का, एड्रेस टू द कलेक्टर जी, फॉर ग्रांट ऑफ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। एप्लीकेशन वहाँ फाइल करना पड़ती कलेक्टर को, सब डिपार्टमेंट से वो एनओसी मांगते हैं, सब डिपार्टमेंट ने दे दी, केवल TNCP देवास ने दी थी। P1 चैलेंज कर रहा ना जी, P1 है, P2। P1 लेटर है TNCP का, जिसमें इन्होंने इनकार करा हमको एनओसी देने से। P2 प्रोसीडिंग है अपील केस की कमिश्नर की, जो उन्होंने केवल बिना मेरिट के केवल अनुपस्थिति में खारिज कर दी उसको अपील। थर्टी वन में स्पेसिफिक दिया हुआ है कि कमिश्नर को दोनों पक्षों को अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग देने के बाद आंसर पास करना उसमें। तो आपने अपील की फिर इसमें नहीं, फाइनल है, 31 में लिखा कि ऑर्डर शेल बी फाइनल। P1 में देखिए ना जरा, P1 पेज नंबर 24 पे आइए। वह भी अवगत कराया जाता है कि अधो हस्ताक्षरकर्ता के आदेश से व्यथित होने पर नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 31 के अंतर्गत आयुक्त राजस्व उज्जैन को अपील किए जाने के प्रावधान है तथा धारा 32 के अंतर्गत शासन द्वारा पुनरीक्षण किए जाने का प्रावधान। अपील कर दिया हमने कमिश्नर के यहाँ पर। वो कहाँ है? पेज नंबर 25 पे है। हाँ, पेज नंबर 25 पे। फिर क्या हुआ? कमिश्नर ने लगातार 3-4 बार तारीख चलती रही, अन्य कार्य में व्यस्त हैं, तो 3 जनवरी को पेज नंबर है तो उस पे ये अनुपस्थित है, प्रकरण निरस्त कर दिया अपील का। कितने बार अनुपस्थित रहे आप पहले? लक्षित देखा 4-3 को, उसके बाद हर तारीख को उपस्थित है कपिलारती जी। 17/5 को लिखा हुआ तारीख बढ़ाई जाती है, कोविड कांड 5/7 को तारीख बढ़ाई जाती है, फिर 2/8 को लिखा अपील तारीख उपस्थित हमारे साइन है। कोविड-19 आ गया, समझे ना जी, कोविड-19 हो गया। 13/9/21 को भी हम उपस्थित हैं। आप अभिभाषक उपस्थित, कब डिसमिस किया? ये 3/1 को करा, उसके पहले 1/11 को उपस्थित हैं, हम 6/12 को उपस्थित हैं। हाँ, ये 4/10/21 को भी अनुपस्थित थे आप। 4/10 को थे, उसके बाद फिर उपस्थित 1/11 को उपस्थित है और 6/12 को उपस्थित है। उसके बाद 1/11 को फिर 6/12 1/11 को 6/12। आयुक्त महोदय अन्य प्रशासनिक कार्य में व्यस्त होने से पेशी बढ़ाई जाती है। हर बार ये कर रहा था, फिर 6/12। थी मैंने पेज नंबर मेरा 234 जनवरी 22 को डिसमिस कर दिया। अब सर 3 जनवरी 22 को मैंने 25 जनवरी को ऑनलाइन स्टेटस निकाला 7:12 पे। मेरे को हर बार किया कि फाइल आपके पास है अध्ययन के लिए, तो मैंने लिखित बात कोर्ट पहुंची तो उन्होंने इसमें पोस्टिंग करके अनुपस्थित कर दिया। ये तो एक ही बार में डिसमिस कर दिया, गलत नहीं है? ऑनलाइन स्टेटस 25 जनवरी तक भी ये आ रहा है, प्रकरण बहस के लिए नहीं है। मैंने निकाला पेज नंबर 234, फिर 7:12 पे फिर मैंने रिटर्न आर्गुमेंट बाय कोर्ट पहुंचाया, ये मिल गया उनको, उसके बाद पोस्टिंग। मैं निवेदन मेरिट पर डिसाइड करते हैं, हमारी लिखित बहस भी रिकॉर्ड है। नहीं, ऐसा कोई बार बार अनुपस्थित थोड़ी रहा है। He was appearing every time, एक ही बार में डिसमिस कर दिया इसको। एक मौका दे देते हैं इनको। इसमें कौन सरकार है ना, और कोई तो नहीं है, सरकारी। देखिए, heard on the question of admission in this petition, the petitioner has upheld the order. यार आप ऐसा 25/1/2021 क्यों आपने चैलेंज किया? इसको चैलेंज करने की क्या जरूरत है? P1 को क्यों चैलेंज कर दिया आपने? हमने P1 को इसलिए चैलेंज करा क्योंकि हम डायरेक्ट अपील के आगे के अगेंस्ट यहाँ पे आए थे, उसको चैलेंज नहीं करते। अगर पिटीशन पे हमें डिसमिस है तो P1 क्या है? P1 इसका लेटर है कंट्री प्लानिंग पे, उसको हमने अपील में चैलेंज कर दिया था, उसको भी यहाँ पे भी चैलेंज हमको करना जरूरी था। अपील में इसलिए ऑर्डर को हमने चैलेंज करा। नहीं, अपील को तो हम अपीलेट ऑर्डर सेटिस्फाइड करके रिमांड करेंगे। फिर
ठीक है, फिर इसकी जरूरत नहीं है। करेगी इसको Challenge the on merits also. mainly challenge the order dated 3/1/2022 passed in case number 276 oblique appeal oblique 2020-2021 by the respondent number Commissioner number 2, dismissing the appeal filed by the petitioner under section 31 of the MP Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam 1973, challenging the order dated 25/1/2021 passed by the Deputy Director. Next, learned counsel for the petitioner has taken this court through the entire order sheets to show that the petitioner was present on all the occasions except on the date 3/1/22 when the appeal was dismissed for want of prosecution. Counsel for petitioner even data collection. submitted that even as per the provisions of the CPC, at least 3 opportunities ought to have been granted before rejecting on the ground of for want of prosecution. Next, on perusal of the order sheets, it is seen that the petitioner had appeared on each and every occasion except on 3/1/2022. Which have been view of the aforesaid with a view to aforesaid and in the interest of justice, the order dated 3/1/22 passed in appeal, case number 273 oblique appeal 2021 by the respondent number 2 is hereby set aside. The matter is the Commissioner is directed to decide the appeal on merits after affording opportunity of hearing to all concerned as expeditiously as possible. टाइम स्पेसिफाइड कर रहा मन लोगों को फिर बैठते नहीं वहाँ 1 महीना या 2 महीने जब भी As expeditiously as possible, preferably within a period of 3 months from the date of receipt of certified copy of the order. Full stop. This court has not expressed any opinion on merits of the case. Petitions stands disposed of. Meetings are complete. You are appearing for all the respondents. So he is appearing for the intervener. And he is appearing for the respondents. The reply has been filed, rejoinder has also been filed. Reply by the state has been filed. If the office not खत्म करा सर ये PF has not been paid, the reply has already been filed by them. इसमें लिखे in view of the fact that reply has already been filed by the respondents, है ना? The office objection with regard to non-payment of process fee is ignored. बस अगर क्योंकि ये 860 of 2023 इंटरवेंशन एप्लीकेशन एक कंप्लेंट इन्होंने फाइल की और कंप्लेंट के बेसिस पर पूरी इंक्वायरी इन्होंने की, इंक्वायरी करने के बाद हमसे रिप्लाई लिया और ऑर्डर कर दिया. So he is saying that since I was the complainant and therefore I should be permitted to intervene. तो मेरा ये निवेदन है कि the order has been passed under the पंचायत राज अधिनियम. So the main contesting party is there merely because he has submitted the complaint. He has put the machinery in motion. He was not a party. तो ये कंटेस्ट कर रहा है, मतलब ऐसा भी नहीं है कि कहीं कोई ऐसा कुछ हॉटली कंटेस्टेड है. लॉर्डशिप शिकायत हमारे द्वारा की गई थी. तो क्या है मैंने लॉर्डशिप एनेक्शल P2 के आधार पर ही I2 के आधार पर लॉर्डशिप एफआईआर रजिस्टर्ड ऑर्डर भी आपके फेवर में कर दिया ना इन्होंने कि नहीं किया. लेकिन लॉर्डशिप पिटीशन में एनेक्सल P7 है लॉर्डशिप, उसमें खचरा पंचसाला जो है लॉर्डशिप वो 82-84 के बाद की दिखाई है.
जबकि लॉर्डशिप वो 65 से देखेंगे तो उसमें मैंने पेश कर रखा है जो गवर्नमेंट के लिए क्लियर कट है लॉर्डशिप। तो आप उनको असिस्ट करिए ना भाई, जो भी आपको कहना है उसमें कहाँ दिक्कत है? नहीं, इसमें इंटरवेंशन की क्या बात है? वो गवर्नमेंट लैंड है, वो देख रहा है, उसको रिप्लाई भी दे दिया। Sir, in many cases, the High Court usually says that instead of intervention, it amounts to interfere, not intervening. You are not a necessary party. And no relief has been claimed against him. I cannot. You also heard an IE number 860 of 2023 application for intervention. In the application, it is stated that the intervener, proposed intervener is the complainant on which basis the action has been taken against the petitioner. Full stop. The state government is defending the matter by filing a detailed reply. There is no necessity of the intervener to. Accordingly, this application is hereby rejected. List for hearing when? After vacation. After ensuing summer vacation. I have to be continued. I have to continue. Okay. 63. They are asking for compensation and reconstruction of the property. Yes, sir. So in writ petition, that compensation cannot be decided. Transfer karo to second round, we will dismiss it. 64. Wait, please, my lord. The petition has been filed challenging the orders of Tehsildar and SDO, my lord, whereby the application of the petitioner for mutation under section 109 and 110 have been dismissed, my lord. The Tehsildar's order has been upheld in a filed document to show that the land in question. Yes, ma'am. Recorded in the name of respondent number 3. Yes, ma'am. For that, my lord, I have filed IO number 5371, praying for taking additional document on record, my lord. And I have filed the relevant revenue record, my lord. At page number 4, my lord, page number 4 of the IA. ये खसरा में recorded है. खसरा entries है. खसरा entries. So is it a valid document? खसरा तो किसी की भी नाम पे record हो जाता है. मतलब the let to show some document which reflects the ownership. I already have the sale deeds in my favor. I have the sale deeds in my favor. The concern of the this honorable court was that, my lord, the Tehsildar has dismissed my application, saying that the name of the seller is not there in revenue records. So that is why this honorable court was pleased to pass this order. If my lord may kindly consider the order of Tehsildar, then the position would be clear, my lord. Mutation कर नहीं रहा तहसीलदार. Yes. Saying that the person who has sold the order passed by the Tehsildar. Yes, my lord. The order passed by the Tehsildar is at P11, my lord. Page number, so beg your pardon, page number 75, my lord. इसकी अपील नहीं होती. इसकी अपील करी, my lord. SDO has also dismissed my appeal, my lord. फिर उसके बाद, my lord, now since the amended section 44(3) says that only such an appeal provided if there is a reversal finding. Otherwise, that is why, my lord, before this honorable court. ठीक है, notice. Unnoticed. 5. Paper pass हुआ, lord. 66. Listen, actually, the petitioner is a public contractor and has done some works. And in view of that works, he has claimed some bills with the respondent number 1. The respondent number 1 has clearly said that कि बिल्स जो आपके हैं मेजरमेंट बुक्स वगैरह हमारे पास उपलब्ध नहीं है, इसलिए हम आपको वो बिल्स क्लियर नहीं कर सकते. दैट इज एट एनेक्शन P2 in your lordship. The letter of the respondent says at annexure P2. नहीं, whether there is an admitted amount.
No, amount is not admitted because that measurement books and the annual bills are not paid. There is a disputed questions of facts involved in this case. Where is the agreement? What is the remedy in case of a dispute between the parties? No doubt there is. जहाँ पे admitted है कि भाई इतना outstanding है and they are not making payment, then we can give directions. Not sure. But if the amount itself is disputed, we cannot go into all these things. कितना काम किया आपने, कितना measurement हुआ, क्या हुआ? We cannot do that. Certainly, Your Lordship, but my limit. Where is your agreement? Have you filed the agreement? No, Your Lordship, the agreement is not there with the client because that's the contract of 2009 and 10. Repeatedly, he stood on writing the letters to the department. My only humble prayer before this honorable court is that if this court directs the respondent number 1 to find the measurement books and clear the bills. No, we cannot direct. How can we direct our 2009 का case है? They are admitting that they are admitting in their own letter, Your Lordship, annexure P2. Yeah, but there is a huge delay in filing this petition. Lordship, I have been reading para 4, you say that no delay in filing this petition. Lordship, because I am regularly claiming the amount. It will not give you cause of action. Supreme Court says repeated representation will not give you cause of action. Lordship, in the year 2021 itself, they have accepted that they have lost the measurement books. In 2021, they have accepted, and thereafter I have filed this petition. Page number 17 here. नोटिस अब अगर डिस्प्यूट है उसमें तो फिर बाद में मुश्किल है. But Your Lordship, if this honorable court interferes, then something may come out. Next. 67 and 67.1 are connected. Connected below. Connected. The reply of the respondents are awaited below. 4 weeks time to file reply, Your Lordship. Next time to file reply list after 4 weeks. It will live to be continued. I have to continue. Grateful. Next. The petitioner participated in the auction proceedings conducted by the bank in the year 2010. The petitioner was awarded the auction for a total sum of 21,11,000 rupees. It is not in dispute by the bank also, my lord, during continuous correspondence that the entire amount has been paid to the bank for the said auction. However, my till date, the respondent bank has failed to issue the sale certificate in mind, and for which the instant petition has been done. It's a very short matter. So you have a remedy before the DRT? My lord, the DRT remedy is not applicable, my lord, in this case because the payment has been made to the bank, my lord. And after the entire payment has been made to the bank is duty bound under the public duty to issue the sale certificate. They cannot deny the sale certificate at any circumstance. The DRT would be any dispute arising out of the DRT jurisdiction would be any dispute arising out of the transactions between the borrowers and the lenders. This is a public duty exercised by the bank in this case. So where is the receipt? Well, the payment receipt is not with me, but the bank will not deny such transactions at all. Which document is in your support? Well, may kindly see the annexure P2. Page number 60. 2010 का issue आप 2023 में ला रहे हैं? Yes, ma'am. After 13 years. That has happened, my lord. Is my lord will observe. My lord, Dena Bank was one of the banks that was a government bank. It has been recently merged with the Bank of Baroda. With Bank of Baroda. But that is the whole problem because when I was visiting the Dena Bank in the year 2015, approximately 2015 and 16 for the issuance of sale certificate, they were also not denying. I'll be fair, they were also not denying. They were just saying that we are in the process of merger
And by one reason or the other, they were just delaying the entire process. I did not come to this honorable court, by profession also I'm an advocate. But I did not come to this honorable court for the issuance of sale certificate for a very specific reason, because it was an understanding that it will get executed somewhere. But then then the Dera Bank officials started saying that we are going for the merger, and the merger will take a lot of time. It took approximately 3 years for all the amalgamations and the merger acquisition to be. What is P2? P2 is the P2 is the letter written by the Dera Bank, in which they have admitted that the auction is awarded to you. Was found to be the and is received and accepted. Anchor's check dated so and so is received from you as EMD. Balance amount of 15.83. Within 15 days, failing which your money deposited in this account will be forfeited. Yes. Forfeit कर लिया होगा. नहीं, forfeit नहीं किया. मैंने deposit किया है. बताइए ना कहाँ? Where is that deposit? That the very proof that I have submitted the entire amount, ये बैंक के पास है. Now it appears that you have not deposited the remaining amount. There is I have not filed it as an annexure because this was not relevant. But this was a letter that was sent by the bank advocate to me, in which the bank's advocate is saying that your entire amount has been deposited with the bank. You are required to come here before the bank and take your sale certificate. This was the letter written by the bank advocate. Sorry? आप पहुंचे कि नहीं पहुंचे बैंक में? Sir, we went to the bank and again we were informed that it will take some time, but this will happen, sir. Your matter is of ऐसी petition नहीं है आपकी बिल्कुल. Your petition doesn't say like this. My petition says that for by one of that letter also, which is relevant for this purpose. I'll annex this letter. and I'll try to. नहीं आपने ऐसा कहा कि हमने इस लेटर के लाइट में हम गए. In spite of that, they are not issuing the sale certificate. That is my submission. My petition could not have been like this, because this was not the only first incident. What had happened was, that the sale certificate, I requested the bank to issue me the sale certificate. The bank said that the sale certificate. आना चाहिए ना, डॉक्यूमेंट लगाते नहीं है और आप डायरेक्शन मांगते हैं. First you have to make out a case कि कैसे आपका पेमेंट पूरा कैसे हुआ. 21, you are just saying that हमने 21 lakhs इतना जमा कर दिया. Where is the proof? I'm acting under the instruction. Wherein instructions not be denied for by the bank. No. Why should it issue notice? You have to establish the immediate concern, with respect to the bank ने जो अभी annexure पढ़ के बताया मैंने आपने 15 days में पेमेंट नहीं किया है. Yes. इसीलिए उन्होंने forfeit कर लिया amount. Yes. And therefore they are not issuing you the sale certificate. That is the reason most it appears. Yes, in fact, yes, that is. There is a lapse on your part. Otherwise, bank would not have would have issued the certificate immediately. बैंक को क्या करना था? सरकारी बैंक है. Payment has been received by the bank. They would have issued the certificate. That you say. Where is the proof? Online transaction होता है आजकल सब पूरा. This transaction happened in the year 2010. You have not even explained the delay for coming before this court after a period of 13 years. Banks and my client, who happens to be an advocate and a power, in fact, member of the Bar Council of Madhya Pradesh. ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया उससे क्या होगा यार? हो जाएगा यार. No, I'm not. The documents. Show the documents, will issue notice immediately. इसमें लिखिए Learned Counsel for the petitioner submit that the petitioner was the highest bidder in the auction in the year 2010. Thereafter, he has already deposited a sum of rupees 21,11 with the respondent bank. The petitioner has not filed any document to show that he has deposited the entire amount, and in spite of that, the sale certificate is not being issued by the bank. List after 2 weeks. Counsel for petitioner is granted time to file documents to show that he has deposited the entire auction money. If it is an admission by the bank, would that suffice, my lord? No, ऐसा नहीं होता.
आप प्राइमा फेसी दिखाओ ना, नोटिस करते हैं अपन। अभी वो आगे बोलेंगे कि साहब इन्होंने पैसा जमा नहीं किया, then we'll impose cost on you. Yes, because you are making a false statement before this court. If that is would be the. पहले आप पेश करिए, Yes, sir. I'll file. पेश करने में क्या प्रॉब्लम होगा आपको? No, no, I'll file the document. फाइल करिए। No, sir, this petition is, my lord, for grant of third time pay scale, my lord, after completion of 30 years of service, my lord. Petitioner's case. पहला दूसरा मिल गया? First and second मिल गया, lordship. Third time pay scale के लिए, lordship. Respondent has forwarded my case to respondent number 5 to respondent number 4 by letter dated 12/2/2021, my lord. But till date, no action has been taken, my lord. और फाइनेंशियल अपग्रेडेशन डिसाइड डायरेक्शन दे देते हैं, अगर if he is entitled, grant him, otherwise pass a reasonable speaking order. देखिए मैं थर्ड फाइनेंशियल अपग्रेडेशन नहीं किया है, डायरेक्शन टू द रेस्पोंडेंट्स टू डिसाइड द क्लेम इन अकॉर्डेंस विद देखिए कोर्ट ऑर्डर। ठीक है, डिस्प्ले My lord, reply is awaited in this matter. Reply is awaited in this matter. I'm praying for 4 weeks time to file reply. इसमें तो आप इंस्ट्रक्शंस के लिए टाइम ले रहे हैं पिछले 4 के बार में। Yes, You have to tell us whether after the decree having been passed in favor of the petitioner, mutation क्यों नहीं कर रहे हैं आप? That was the question, precise question. No instructions. till date no instructions. No instructions. लेटर नहीं लिख रहा है मेरे ख्याल से। Have you informed the respondents? File में letter. फाइल भी नहीं है। I have the file, but the letter is not there in the file. हाँ, तो लेटर अगर आप नहीं लिख रहे हैं तो फिर तो गलत बात है ना। क्या करते हैं आप लोग, ऑफिस कॉपी लगाते नहीं फाइल में? जो भी कम्युनिकेशन होता है तो उसका ऑफिस कॉपी लगाना पड़ता है फाइल में, अदरवाइज हाउ डू यू रिमेम्बर आपने क्या एक्शन क्या लिया था लास्ट टाइम? एवरी केस यू डोंट हैव द कम्युनिकेशन because you will go in the office and now then forget, इसमें कुछ करना भी है। इसलिए तो मुकदमे पेंडिंग रहते हैं, जब छोटी छोटी चीजें इसमें है क्या, डिक्री इनके फेवर में, म्यूटेशन क्यों नहीं कर रहे इतना बताना है आपको। वो डिक्री में लिखा हुआ है कि he is entitled to get his नहीं म्यूटेटेड on page 19 पे से डिक्री में लिखा हुआ है। डिग्री कहाँ है? पेज 90। उस भूमि आधिपत्यधारी है, भूमि स्वामी एवं आधिपत्यधारी है तथा उक्त हैसियत से अपना नाम रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज कराने के अधिकारी हैं। एप्लीकेशन लगाई आपने? Yes, lordship. म्यूटेशन की एप्लीकेशन लगाई क्या है? Lordship, I have filed some application before Tehsildar. Yes, lordship. हाँ। So page number 11. पेंडिंग है वो अभी भी? Yes, एप्लीकेशन पेंडिंग है, पेज नंबर 11 वाली। yes, my lord. अभी तक उस पे ऑर्डर नहीं हुआ।
इसको डायरेक्शन दे देते हैं, इसको डिसाइड करें और क्या. Lord, I have no instruction in this matter from senior counsel. He will argue this matter, or if it may be kept in Passover. Passover. My lord, senior will appear in this matter. आप भाई के लिए आए थे बढ़वाने के लिए. No, Lord, sir, even he doesn't tell me to argue in this matter. I have no instruction in this matter to argue. When we start passing order, then you say that we have no instructions. No. We are passing order in your favor only. Yes. Then इनको अगर आप 50 बार भी टाइम देंगे तो इंस्ट्रक्शन ले नहीं पाएंगे. आपकी एप्लीकेशन पेंडिंग है. On the basis of the decree, we will direct them to decide तहसीलदार within a time bound period. जब तक ये इंस्ट्रक्शन लेंगे तब तक ये डिसाइड हो जाएगी. इसको पासवर्ड में रखिए डायरेक्ट. पासवर्ड में फिर सुनना पड़ता है मुझे. आप थोड़ी बता क्या बोला था. अगेन 5-10 मिनट सुनना पड़ेगा, फिर ध्यान आएगा. अभी ऑर्डर कर देते हैं. नेक्स्ट वीक कर दें इसको. अरे नेक्स्ट वीक होने से क्या होगा. सीनियर विल अपीयर इन दिस मैटर. सीनियर मत करो अभी. कोर्ट को सीनियर को बोल देना, कोर्ट ने माना ही नहीं है, जजमेंट नहीं दिया. आपके फेवर में ऑर्डर है, सीनियर डांटेंगे आपको फिर भी. एक बार ऐसी हुआ जबलपुर में, बहुत पहले की बात है. वो नए जूनियर खड़े हुए, कोर्ट केस एडमिट करके स्टे दे रहा था. उन्होंने कहा नहीं मत साहब कुछ मत करो, आपको इसको सिर्फ बढ़ा दो. हमारे सीनियर ने बढ़ाने के लिए बोला. तो बोले आपके सीनियर आएंगे, जूनियर कोई भी आएगा तो भी यही ऑर्डर होगा. तब भी बोले बढ़ा दो. My lord, thanks. मतलब मालूम होना चाहिए कि क्या हो रहा है कोर्ट में. Yeah, my lord, but It might be possible Password. that the senior has not received valuable instructions from the. that may be the possible ground. पहले ही लेके रखा करो तब तो काम होगा. Yes. Your Lordship, I am taking time to file rejoinder in this matter. Rejoinder? Your Lordship. 4 weeks. 4 weeks, 2 weeks. 2 weeks. 2 weeks time to file rejoinder. Okay. Next. I have to get one. Not to take 2 weeks time to file reply. Weeks time to file reply. 73. यह याचिका को सेवानिवृत्त के बाद दिनांक 1/7/2014 से क्रमोन्नति नहीं दी गई तथा सेवानिवृत्ति बाद वार्षिक वेतन वृद्धि एवं क्रमोन्नति प्राधिकरण द्वारा नहीं दी जाने के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है. आपको दूसरा केस है आपको दूसरा केस है. I am sorry. 73 है. Sir, senior is coming. If may kept up. Reply आ गया. Yes, Lordship, reply has been filed. क्या है, क्या मैटर क्या है. Details of Probably this case I have to file that to the reply. Rejoinder. ये भी बोल सकते हैं रिजॉइंडर के लिए. सर वो आपकी ड्यूटी नहीं थी यहाँ. मैं जरा दूसरी गई. 4 weeks. I have to continue. I'm obliged. 74. Filed an application for amendment of clause 4 as per direction of this honorable court. There is a delay and the court had directed me to file explanation for delay in clause 4. The IA number is 379. डिले कितना. 48 साल का. 48 साल. 72 में हुआ acquisition has been challenged this petition one. It has not been challenged, Your Lordship. We don't have enough documents. अगर आप relief clause भी देखेंगे तो उसमें मैंने कुछ. File the reply, then file the reply. Senate Council for respondent praise for having granted 2 weeks time to file reply to IA 379/23 application for amendment. They start to 2 weeks. अभी 25. Status support के लिए था लॉर्डशिप. There are
present a petition mostly, Lordship, there are three which person this case, Lordship. Case number 17, जिसमें तो दो लोग गिरफ्तार हुए, एक अभी भी एक्सपोर्ट है 2017 से। तो लास्ट टाइम इन्होंने रिप्लाई पेश किया था और उसको फर्दर रिप्लाई भी पेश किया है, और जो रिप्लाई में समय मांगा था कि मुझे वो समय दिया जाए गिरफ्तार करने के लिए 2017, तो तीन में से दो गिरफ्तार है। रिप्लाई का पैरा लॉर्डशिप 3456, तत्कालीन विवेचक विष्णु आरोपी सुप्रीम को 22 को गिरफ्तार 22/2/2022 को गिरफ्तार किया है और 16/8/2007 को गिरफ्तार किया है। स्टेटस रिपोर्ट के लॉर्डशिप इसको गिरफ्तार किया 2017 से एब्सकॉन्ड है वो, और फर्दर इसीलिए प्रूव की थी कि तीन लोग में से दो केस भी चल रहा है नीचे ट्रायल कोर्ट में, पर ये गिरफ्तार नहीं कर रहा है उसको। तो उनका कहना है कि मैं नया अन्वेषण अधिकारी हूँ और मुझे समय चाहिए। तो लॉर्डशिप 13/11/2022 को फिर समय मांगा था उसमें, तो अभी 4 महीने तो उसको भी हुआ है लॉर्डशिप, 6 साल के लगभग। Till date, the person has not been arrested, but I am praying for dismissal of this petition being not maintainable, as this petition is the relief which they have sought in this petition can be entertained by filing a private complaint under section 156(3) of CRPC, wherein they can file an application before the superintendent of police. If that application is not decided, then they can go before the DIG or the commissioner of the police. And if that application is also not decided correctly, then they can approach before the district court by filing a private complaint. Your lordship has also decided the similar cases, and there is a case of Supreme Court also, Sakiri Vasu versus State of Uttar Pradesh. What happened to the investigation? Whether charge sheet has been filed? Lordship, charge sheet has been filed against the person who is absconding under section 173(8) of CRPC. That the investigation is still incomplete against that person, and they are trying to arrest that person, but they are not able to find him. वो तो यही होगा, आसपास ब्रोकर है वो, कहीं ज्यादा दूर नहीं जाएगा इंदौर छोड़ के। सर अभी तक तो मिल नहीं पाए। He is under police protection maybe. बड़े लोग हैं ना, तो उनको कैसे अरेस्ट करेंगे आप? कोई छोटा होता तो अभी देखा नहीं, एसपी को सस्पेंड किया उस दिन, 10 घंटे के अंदर में वो आ गया, इतने सालों से जो फरार था। Within 10 hours he was brought back to before the court. Then with a request to recall the order of suspension. ऐसे ही कुछ करेंगे तब होगा। कई साल 6 साल तो ऑलरेडी बीत चुके हैं अभी। One last opportunity by the presence of the investigating officer may kindly be marked on the next date if the person is not arrested. Even you don't give us what is the status. एक आपने preliminary reply लिख दिया, बस हो गया। This was also filed way back when in 22. 16/11/2022. What is the reason? You have to, in your reply, you have to state what efforts your police did for tracing out and arresting this person. वो सब छोड़ के आप दूसरे टेक्निकल ग्राउंड पे रिप्लाई पेश कर देते हैं। आपके एफर्ट्स क्या हैं अभी तक के 6 साल के? कहाँ आपने कहीं पब्लिसिटी की, कहीं न्यूज़पेपर में कुछ छापा, इश्तिहार छापा, कोई नोटिस चस्पा किया कहीं? Nothing of that sort. We file a detailed reply also. Senate Council for the petitioner pays for time to file the detailed reply. Respondent. Respondent. 3 weeks time is granted to file the detailed reply in which the detailed reply full stop. The reply should disclose as to what action has been taken by the police for searching the respondent number 3. That person has not been made party in this petition. What efforts have been made to search the accused Girish Wadhwani during the last 6 years? Reply be filed positively, failing which the SHO of Police Station Vijayanagar Indore shall remain personally present before this court to explain the default in this case on
weeks time कर दो, 2 weeks. In this case on 8th of May. उसके बाद उसको एसपी को बुलाएंगे अगर नहीं, अगर ये कर पा रहे हैं. यस. लोचुक 30/6/2015 को सेवानिवृत्त हुआ हूँ. 1/7/14 से पात्रता है. अरे ये इशू पेंडिंग है लार्जर बेंच में, अभी तक डिसाइड नहीं हुआ. एक साथ से इंक्रीमेंट मिलना चाहिए आपको. लोचुक जो मैंने जो साइटेशन लगे डिसाइड जो हुई है आदेश में. इशू लार्जर बेंच के पास 3 जज के सामने पेंडिंग है. अभी डिसाइड नहीं हुआ. डिसाइड होगा तो जो भी होगा उसके अकॉर्डिंगली आपको बेनिफिट मिल जाएगा. इसका भी अपन सैनिटाइज एडजन करते हैं. वेटिंग डिसीजन ऑफ दैट फुल बेंच. इन द मीनवाइल द फुल बेंच डिसाइड्स, यू कैन मेक एन एप्लीकेशन. तो दिस केस यू कैन बी डिस्पोज्ड ऑफ. हजारों केस पड़े अभी यहाँ पे तीनों बेंचों में. 1/7 वाला ऑर्डर कर देना होगा ना, इंक्रीमेंट वाला. ठीक है. लिस्ट अलॉन्ग विथ ऑल दोस केसेस. यस. नेक्स्ट 77. Yes. This one number 2 close. अमेंडमेंट एप्लीकेशन किसने फाइल की है? Additional. क्या व्हाट अमेंडमेंट? Knowledge में भी हमारी कॉपी नहीं. कॉपी नहीं दी. केस 17. मध्य प्रदेश शासन द्वारा पुलिस थाना, ये भी तो गलत. मध्य प्रदेश शासन पुलिस थाने के द्वारा नहीं होता. इट्स ऑलवेज थ्रू सेक्रेटरी. एसएचओ के थ्रू होगा फिर वो पुलिस स्टेशन. ये एप्लीकेशन भी गलत है. चलो पास और करो. पासवर्ड एडमिट नहीं हुई केस. Admit नहीं हुए, we have filed reply in these matters. Let us see. Next one. Here's the demolition of this. ये जी हाँ, identical matter आपने पास आउट में रखा भी है. मतलब अभी क्या इन्फेक्शियस हो गया, क्या डिमोलिशन हो गया? नहीं. After demolition, they have challenged the action of the municipality on the ground that without following the due process of law, they have demolished the building. तो लेट देम क्या आने दीजिए. यस 79. ये भी वही है क्या? Same. हाँ Same case. 70 and 79 are same. फाइल करने के लिए समय चाहते हैं 2 weeks का. इनको टर्मिनेट कर दिया है. चैलेंज किया है टर्मिनेशन ऑर्डर. After reply has also been duly filed. They are not governed by CCA rules or lordship. Rules are also been annexed as the reply, annexed to the reply. The rule clearly states that if any employee is absent for more than 10 days without any due notice, he or she can be terminated. Directly. After providing a notice. Show cause notice has been issued. Show cause notice issued. Yes, sir. 2 times. Then also inquiry is to be conducted. No.
No, no, Your Lordship. Your Lordship may refer to the annexion number C1 on the reply. R1, sorry, Your Lordship. So file again. 2 weeks time to file rejoinder. Serial number 82. My lord, is. I'm sorry. 2011 का कोई सैंक्शन है उसको चैलेंज कर रहे हैं 2022 में पासवर्ड करो विल डिसाइड ऑल केसेस ये मेंटेनेबल ही नहीं है सर 82 मालूम मैंने याचिका जो है मालूम इसमें मार्कशीट में वेरिएशन आने की वजह से जो है किया हुआ है और इसमें मेरी मार्कशीट्स में जो है वेरिएशन आया हुआ है मालूम स्कूल की मार्कशीट्स में आप देखेंगे मालूम इसमें तो 27/3/1999 की जगह पे जो है नोटिस नहीं हुआ ना इसमें मालूम इसमें एक्चुअल क्या है कि डिसमिस हो गया था प्रीएम्प्टिव ऑर्डर में डिफॉल्ट की वजह से इसको एमसीसी के थ्रू रिस्टोर करवाया गया मालूम ये प्राइवेट स्कूल है कि गवर्नमेंट स्कूल है नंबर 3 मालूम प्राइवेट स्कूल है मालूम फिर कैसे मेंटेनेबल है रेट मालूम इसमें 10th की मार्कशीट जो है वो नहीं 10th की मार्कशीट और मेंटेनेबिलिटी का क्या रिलेशन क्या है मालूम 10th की मार्कशीट तो सभी को मिलती है चाहे प्राइवेट स्कूल हो चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो चाहे एडेड हो नॉन एडेड हो आपका ग्रीवांस क्या है मालूम इसमें ग्रीवांस याचिकाकर्ता को इस याचिका के माध्यम से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड भोपाल को निर्देशित किया जावे कि वह जन्म स्थिति की त्रुटि को सुधार करें मालूम उसमें 27/3/1999 कर दिया गया है जबकि एक्चुअल मार्कशीट जो है हमारी वो 28/3/1998 आपने जब वो मार्कशीट मिली उसके बाद में रिप्रेजेंटेशन किया एज पर मालूम ने रिप्रेजेंटेशन किए हुए हैं काफी सारे मालूम इसमें जो है वो विचार नहीं किया गया था करीब 3 साल मालूम आपके पास रखे हैं मालूम शायद मैंने इसमें फाइल नहीं किया हुआ है तो मैं फाइल कर देता हूं कैसे डायरेक्शन देंगे Lordship, I'm from R2 board, so we have to seek instructions and we'll file a reply. नहीं अभी तो नोटिस ही नहीं किया मैडम अभी नोटिस नहीं हुआ अभी तो इनको कन्विंस करना है कि इन्होंने आफ्टर रिसीविंग ऑफ द मार्कशीट इन्होंने एज पर रूल्स गाइडलाइंस है ना आपके बोर्ड के इसके मुताबिक they have to approach within 3 years and they have come after 6 years. They have to approach within reasonable time जो प्रोवाइडेड है मालूम मैं रिलेवेंट डॉक्यूमेंट जो भी है वो फाइल कर देता हूँ मीनवाइल अगर ये रिप्लाई भी देना चाहते हैं नहीं बिल्कुल नहीं मालूम जब तक आप कन्विंस नहीं करेंगे कि आपने कि आप जब देंगे डॉक्यूमेंट्स उसमें पता चलेगा आपने तो बोर्ड को रिप्रेजेंट ही नहीं किया मालूम मैं विदिन अ वीक फाइल कर देता हूँ मालूम काइंडली ग्रांट 1 वीक टाइम टू इसमें लिखिए लर्नड काउंसिल इसमें लिखिए द पिटिशनर इज सीकिंग correction in the 10th class mark sheet. Full stop. No document has been shown, no document has been filed along with the writ petition to show that the petitioner has represented the respondent number 2 board seeking correction in accordance with the rules. Learned counsel for petitioner prays for time to file the documents to show that the petitioner has
already approached the board in time and in accordance with the rules just after 2 weeks. Praying for weeks time to medical exigency, the council, arguing council is not present. Actually, the petitioner has challenged the show cause notice. Show cause notice issued Yes. by the district magistrate under the provisions of Rajya Suraksha Adhiniyam that why you may not be external. So they can file a reply of this show cause notice. There is मेरे ख्याल से अभी तो कोई वो हो गया होगा अभी already order pass हो गया. Not aware of, no instruction has been taken by me. Show cause notice was issued when? Not on 21/6/22. 22 month. तो वो तो अभी तक तो some order must have been passed by the collector. A week's time be granted, I'll take the instructions. I have no instructions in the matter. The situation is that. नहीं, even otherwise the petition is not maintainable against a show cause notice. No, Lord. How can you prevent the collector from issuing show cause? You have to file the reply. उसके बाद में फिर वो सब आपकी क्रिमिनल एक्टिविटीज क्या है वो सब देखेंगे. And if it is found that you are liable for this, then they will pass the order of externment. उसको चालू करो आप कमिश्नर के यहाँ. सेक्शन 9 है शायद. सेक्शन 9 या 8 है कुछ. 7 है क्या है मालूम नहीं. तो उसमें जाना पड़ेगा आपको. ये तो पिटीशन मेंटेनेबल ही नहीं अगेंस्ट द शो कॉज नोटिस. No, with a liberty to file reply, I'll withdraw my lord. Because I have no instructions, my lord, any order further has been passed or not, my lord. I've received the file today itself. क्लाइंट नहीं आ रहा आपके पास मतलब सब हो गया उधर. समझ रहे ना वो काय को आ गया आपके पास. यहाँ आना मतलब और दिक्कत उसके लिए. शो कॉज 1 साल के ऊपर हो गया ना इस पीरियड. एक महीने में ऑर्डर पास होते हैं उसमें. इसमें लीजिए in this petition the petitioner has challenged the issuance of show cause notice dated 21/6/2022 passed by the district magistrate Khargone under section 8 bracket में 1 of the MP Rajya Suraksha Adhiniyam 1990 as to why proceedings under section 5 of the Madhya Pradesh of the Act may not be initiated against the petitioner. It is settled legal proposition that petitions are normally not entertainable against the show cause notice. Therefore, this court declines from interfering with the matter. However, petitioner would be at liberty to approach again if occasion arise. अगर कुछ ऑर्डर हो गया हो तो वैसे ही चैलेंज करोगे आप तो. क्या हो सकता है छोड़ दिया हो आपको. यस 84. ये क्या है? व्हाट इज दिस? Because I have no instructions. Non-deposit of fees में appeal dismissal कुछ. The fees for the appeal was not deposited, therefore the appeal was dismissed. Non-deposit of fees received from traders in the government treasury. पासवर्ड को रिप्लाई आ गया आपका? और इसमें आइए है तो कास्ट टाइटल में इसके जो पिटिशनर है वो थ्रू गार्जियन होना था. मैंने उसके फादर को पिटिशनर बनाया था. उसके बच्चे इसको 12th का एग्जाम में प्रॉपर कॉपी चेक नहीं हो पाई थी और मार्क्स कम मिले थे. पिटिशन फाइल मेरा आइए पेंडिंग है इसमें और आइए नंबर है 7395 मिनट. नहीं पहले बताइए ना कहाँ रिवैल्यूएशन का प्रोविजन कहाँ है? नहीं मिलेगा. नहीं प्रोविजन नहीं लेकिन अंडर पावर की वैलिड की वो वही हमने एप्लीकेशन नहीं की. उन्होंने नो चेंज करके अपने भेज दिया जबकि वो आंसर शीट फाइल की है और हमने सब कुछ पेश किया गया. आंसर शीट से बताइए कि कहाँ वैल्यूएशन नहीं हुआ. मैंने इसमें ये मेरी प्राइमरी आगे का अलाउ कर देंगे. पहले देखें तो अपन कि केस भी बनता है कि नहीं आपका.
रिवैल्यूएशन का? Yes, yes. Because very इसमें नोट्स वगैरह वो सब कुछ नहीं चेक किया था उस समय, उसके बाद ये क्लियर हुआ है। इन्होंने टाइम दिया था 2 वीक का। ये तो नोटिस हुआ ही नहीं अभी तक के। आप देख 25/8 का पाओ आ गया इनका 25/8 का जो ऑर्डर है, देखे हम एडवांस आ गया। उसके बाद 2 weeks टाइम टू सीक इंस्ट्रक्शंस। उसके बाद इंस्ट्रक्शन लिए मंगाई। उस समय आर्ग्यू हुआ था ये पूरा, मैंने बताया भी था ऑनरेबल कोर्ट को। और केवल 3 मार्क का अंदर इसलिए सप्लीमेंट्री आ गई इसको मेरिट। रिप्लाई फाइल हो गया? रिप्लाई फाइल नहीं किया अभी मैंने। रिप्लाई भी क्यों नहीं किया रिप्लाई फाइल? 2 week में करनी है। ये क्यों नहीं किया? कितने दिन हो गए? 1 साल हो गए? यस मैम। टाइम हो गया। भूल गए? ये आपने बताया कि बोर्ड को नोटिस यहाँ से गया नहीं कोर्ट से, इसलिए पूछ रहा हूँ। एडवांस पे एफडीआई का सवाल है, फाइल किया इन्होंने? कम है मेरे फाइल 24 को फाइल हो गया था, 25 को ऑर्डर 24 को अगला फाइल हो गया था। नहीं तो आपने आंसर शीट्स? हाँ मैंने फाइल की मैंने बताना चाह रहा था क्योंकि वो टोटल डिस्कस हुआ था उसमें। तो उसमें क्या है, मतलब वैल्यूएशन हुआ है ऐसी आंसर का? आइए तो लगोगे इसलिए मेरे बच्चे कुत्ता बनता है। नहीं ऐसा है क्या कि कहीं वैल्यूएशन करना छोड़ हुआ इसमें है, इसमें अकाउंट्स में है। मैंने क्वेश्चन नंबर 2 ग्राउंड नंबर 2 है नंबर 1 Roman 1 we are right but still not evaluated by the cost by the evaluator। वन जांच ही नहीं किया उसको, देखो एनेक्शन E6 नहीं इवैल्यूएशन है या नहीं है? इवोल्यूशन हमने एप्लीकेशन करा दी, एप्लीकेशन की हमने बिफोर द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, उसने चेंज किया, वापस भेज दिए। चेंज आपके आंसर शीट में कभी कभी ऐसा होता है ना, क्वेश्चन नंबर 5 को कोई मार्क्स ही नहीं दिए, मार्क्स देंगे, ट्राइंग भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। हाँ वो भी भाई आप देख लें P6 तो हम लोग इंटरफेयर कर सकते हैं। अगर प्रोविजन देयर इज ओनली प्रोविजन फॉर रीटोटलिंग। यस मैम, आपने रीटोटल करके भेज दिया आपके पास। 30 से 55 पर P6 का जो आंसर शीट है मैंने पेज 30 से शुरू हुई रेलेवेंट पोर्शन पे दिखा दीजिए। वो क्वेश्चन नंबर बताना पड़ेगा। 1 पहले का ही है, पेज नंबर 15 पर देखिए मिलना। क्वेश्चन पेपर है। हाँ क्वेश्चन पेपर है इसका सर, वो मुझे देखना पड़ेगा, छोटा देखना पड़ेगा फिर इसको, क्योंकि वो एक्चुअली आइए लगी हुई इसको ध्यान में दिया, क्योंकि जवाब इनको देना था, ये मेरा हो चुका था तो इसलिए वन पेज नंबर है इसका आंसर। नहीं कुछ हो तो उसको फिर अपन अलग करें आपका अमेंडमेंट एप्लीकेशन। नहीं मेरे पर ये क्योंकि वो टेक्निकली गलत है, इसलिए मुझे आवश्यकता हुई। और नहीं आप दिखा नहीं उस पर है, मैंने उन्होंने सेटिस्फाई किया हमने कोर्ट को, ऑनरेबल कोर्ट को जब समय उसके बाद ही उनसे रिप्लाई मांगा था कि आप इंस्ट्रक्शन लें इसमें। ठीक है, आइए आई भी तो गलत बनाते हैं आप लोग। टाइटल की आइए अमेंडमेंट की ऐसी थोड़ी बनती है। हॉस्पिटल अंदर प्रीफिक्स में अमेंडमेंट है, क्योंकि जहां पिटिशनर सन आ रहा है पिटिशनर ये कहाँ पे अमेंडमेंट करना चाह रहे हैं, क्योंकि आपने सब कह रहा हूं मैंने, क्योंकि मेरा जहां पिटिशनर सब वहां पिछड़ा नहीं है। देखिए एप्लीकेशन फॉर अमेंडमेंट किस तरीके से ड्राफ्ट होती है, ये यहाँ ये आपके एप्लीकेशन से ये पता नहीं चलता आप किस जगह अमेंडमेंट करना चाह रहे हैं। मैंने जहां जहां हमने पिटिशनर सब मतलब आप देख लीजिए, सोच लीजिए अपने मन से। नहीं इसमें से बाकी सब सही है। अभी कभी पुराने एप्लीकेशन 10-20 साल पुरानी उठा के देखिए आप। सर मैं तो जो पुराने सिविल काउंसिल्स करते थे ना, कैसे बनाते हैं उसमें मेरा आपसे ये उसमें इन प्लेस ऑफ सो एंड सो दिस बी रिप्लेस्ड, ऐसा पूरा लिखना पड़ता है। ये बना देखिए मेरे आप क्या करेंगे, पूरे पिटीशन में काट छांट करेंगे ऊपर से नीचे। जहां जहां केवल एक वर्ड भी अंदर आना, भाई कहीं नहीं आना, सन के साथ पिटिशनर शब्द आएगा, बाकी कहीं कुछ नहीं आना। मैंने मेंशन किया मैंने बस जहां पिटिशनर सन लिखा हुआ पिटिशनर आ जाएगा, क्योंकि वो थ्रू। इज इट योर एप्लीकेशन करेक्ट? दैट इज व्हाट आई एम आस्किंग यू। पहले तो कैन वी कीप ऑन अलाउइंग सच एप्लीकेशंस?
कि चलो जाने दो, कब तक जाने दो? अभी तो अपन सुधरे हैं इसको। वो अगर प्रीमिस में है कि एक ही वर्ड का चेंज होना था, आप मेरी बात ही नहीं समझ में समझ आ रहा है मुझे। अगर हाउस टाइटल चेंज करना है आपको, कहाँ चेंज करो? जो पिटिशनर नेम है उसी चेंज है तो आप देखिए ना। एक काम करिए, इसको विड्रॉ करके फ्रेश एप्लीकेशन बनाइए, ताकि अगली बार से अलग रहेगा आपको। जहां जहां भी आपको इसी तरह to my application, the cost title of the petitioner name, petitioner should be changed from Bharat Lal Patidar, son of Douglas, age 50 years, Chetan, son of Bharat Lal Patidar, age 16 years. करना वर्चुअल आइए अलाउड, इतना सा चेंज करना है। और नेक्स्ट टाइम कम से कम ध्यान तो रखिए, कैसे ड्राफ्ट करके वो तो देख लीजिए। वो जहाँ तेरा वाइस होना था, निश्चित रूप से पूरे डिटेल लिखते रहा। आप थोड़ी मानेंगे, अब यू विल नॉट नेवर एक्सेप्ट कि हाँ हमारी एप्लीकेशन ठीक नहीं है। ठीक है, ध्यान रखने। चलो, Followed item number 97, I have to file a reply. back to lunch. Right? This is not the time to seek adjournment. 1:30 is already over now.
IA number 288 LRC. ये दोनों आगे कौन respondent? Respondent. Sole respondent. Sole respondent. Death हो गई. ठीक है. So ये heard limitation कितना delay? 22 days. और IA number 1708/22 application. नहीं. IA number 288/23. Application under section 5 of the limitation act. Delay of 40 reasons stated. Delay condoned. IA allowed. And IA number 2882/23. Application under order 22 rule 4. For bringing legal representatives of respondent, sole respondent on record. Simple, yeah. This application allowed legal representatives on bottom. Necessary amendment be incorporated within 7 days. You are accepting notice? Lordship, I'm appearing on behalf of Mr. Ayushman Chaudhary, and he will be filing his wakalatnama for the proposed legal representatives. Shri Ayushman Chaudhary. Ayushman Chaudhary appears for the newly added legal representatives. He undertakes to file his And undertakes to file the wakalatnama on their behalf of proposed legal representatives. Just after weeks. I have to continue. I have to continue. A fixed date may kindly be given for arguments on application under 41 Rule 5. That application is pending and the appeal is not pending. That must be filed by him, na? Yes, Lordship. So we have to argue on that. 2 weeks हो जाए. Number 31. Yes. So by expedition which I will take, the order passed by the Learned District Judge, which is available at page number 59 of my compilation, Your Lordship, and P11, Your Lordship, which my application under section 151 of the CPC was rejected by the trial court by giving a very funny, Your Lordship, finding, saying that I have not reviewed 307 of the Municipal Corporation Act. 307 for Municipal Corporation Act. Because that application is still pending, Your Lordship. Your Lordship, what happened during the pendency of the application, Your Lordship, I moved an application under section 151 for maintaining status quo of the order, Your Lordship. While deciding that application, Your Lordship, the Learned Court has passed the impugn order, which is available at page number 61 of my compilation, Your Lordship, and has given a categorical finding that you have not produced any affidavit to the effect of any reputed person of that vicinity that this construction is against the violation of the sanctioned law. And therefore, he has rejected my application under section 151, Your Lordship. I'll just take Your Lordship to the finding given by the trial court, which is available at page number 61 of my compilation, Your Lordship. उक्त आवेदन पर विचार किया, Your Lordship, it is available at page number 61. The order which is under challenge. उक्त आवेदन पर विचार किया गया. Your Lordship, I'm reading last paragraph, Your Lordship. उक्त आवेदन पर विचार किया गया. आवेदन ने अपने आवेदन में मूल आवेदन के समर्थन में दस्तावेज पेश किए, जिसमें उनके द्वारा अवनाव्य क्रमांक 3 को धारा 401 के नोटिस की छायाप्रति तथा अन्य उच्च अधिकारियों को दी गई शिकायत की छायाप्रति, सीएम हेल्पलाइन में की गई शिकायत की छायाप्रति पेश की है. विवादित स्थान के फोटोग्राफ सूचना के अधिकार के तहत अनावेदक क्रमांक 4 की नगर पालिका के अनुज्ञा की प्रति पेश की है, परंतु उसके समर्थ में आवेदक की ओर से किसी भी प्रतिष्ठित व्यक्ति या आसपास के व्यक्ति का शपथ पत्र पेश नहीं किया है. You know, I mean, like this finding is not required, Your Lordship. I mean, how he has reached to conclusion. My documents, each and every document relating to that illegal construction was available on record. Your Lordship, after placing material evidence or material documents on record, he has to decide my application, Your Lordship. Now, giving this finding, Your Lordship, raising certain questions before this honorable court. 151 has been rejected. That has been rejected, Your Lordship. But having this about the other application, that is pending, Your Lordship. 3075 is still pending, Your Lordship.
तो इसमें जरूरत नहीं है क्या? Because status quo is required to be maintained, Your Lordship. Because Your Lordship, I am raising a certain fact, certain question before the trial court in respect of illegal construction, Your Lordship. If the construction is still going on, Your Lordship, then what is the use of pendency of section 3075 of the Corporation Act, Your Lordship? 3075 reads as under, Your Lordship. Nothing in this section shall affect the right of the corporation or any other person to apply to the district court for an injunction or for removal or alteration of any building on the ground that it prevents any provision of this act or the bylaw made thereunto. So application was filed, Your Lordship, during the pendency of the application, notices was issued to them, he has filed a reply, Your Lordship, and during the pendency of that application, I moved an application for maintaining status quo. Because my application will be decided, otherwise 307 will become infractuous, Your Lordship, if the status quo will not be granted to me. I'll next, along with my compilation of document, all the photographs to that effect, Your Lordship. Now kindly see the kind of construction he is raising, the right of air, light, everything has gone, Your Lordship. हाँ, पूरा बंद कर दिया। बंद कर दिया सर। वन 151 डिसाइड हो गया कि पेंडिंग है? That has been decided, Your Lordship, against me by this order, Your Lordship. Order is available. In your relief clause, you are saying that set aside the order and application filed under section in so and so pending before the allowed. Yes, Your Lordship. My respectful submission before this honorable court is, when my application was pending under section 3075, so the trial court ought to have granted me an injunction for the reason because there is till the pendency of 3075 is keep on raising this construction, Your Lordship, that too illegal, that too without Your Lordship contravention to the special map, Your Lordship, then trial court ought to have granted injunction in my favor, Your Lordship. Now, Your Lordship, in place of passing order in my favor, he has given this funny finding that I have not produced any affidavit of a reputed person of that vicinity. Where is the question of giving affidavit of a vicinity, Your Lordship? Would have appointed commissioner, maximum commissioner, Your Lordship, appoint करके inspection करा देते सर, क्योंकि ये वो ठीक है इसमें issue notice की है principal failing which meanwhile status quo as it exists today in respect of the property in question shall be maintained by both the parties. Yes, sir. Till the next date of hearing. Much obliged. Certified. Yes. कौन सा नंबर था? लॉर्डशिप विड्रॉ करना है। विड्रॉ? जी लॉर्डशिप। आपका नाम? अर्चना उपाध्याय। इसमें है क्या पावर में? जी लॉर्डशिप, अर्चना उपाध्याय। कहाँ नाम है इसमें आपको? पावर में नाम भी नहीं है, सिग्नेचर भी नहीं है। ये कहाँ है? सुभाष उपाध्याय जी और महेश हिरवे, ये नहीं है दोनों? इसमें लिखिए अर्चना उपाध्याय अपीयरिंग ऑन बिहाफ ऑफ Subhash Upadhyay seeks leave of this court to withdraw the petition must take dismissed as withdrawn. इसमें 3 बजे की प्रेयर कितना होगा थे मेरे? We have decided. इसमें 3 बजे की प्रेयर थी मालूम, वो लोकेश भटनागर जी अभी अवेलेबल नहीं थे, आ रहे थे ऑनलाइन, 3 बजे के लिए प्रेयर थी इसमें। हमें इनका वो कंसिडर करने को कहा था, एप्लीकेशन भी है, ऑलरेडी डिसाइडेड द एप्लीकेशन एंड रिजेक्टेड देयर प्रेयर। वी हैव फाइल्ड रिप्लाई इन दिस मैटर। शासन स्तर पे ही होना था, शासन को ही कंसिडर करने के डायरेक्शंस थे, तो हमने डिसाइड कर दिया है। ठीक है, 3 बजे लेते हैं, इनके सीनियर आएंगे 3 बजे। थैंक यू। नेक्स्ट 45
Yes. Taken instruction, Lord, sir. And petitioner has stated that because the order was passed on 21st, but because of some mistake, it was uploaded later on. So I will seek the instruction properly. उन्होंने कहा कि जो लोड हुआ था वो लेट हुआ, इस वजह से उसने विद इन टाइम ही फाइल किया था. He was the registrar of the university. So I will check. नहीं अपलोड तो उसी दिन 22 को हो गया, नेक्स्ट डे अपलोड हो गया. And what has happened, Lord, in this case, the date ऑर्डर पास हुआ 21 जुलाई को और अपलोड का टाइम है और डेट है 22/7/22 12:06 पे अपलोड हो गया. And what has happened, Lord, in this case, the date of retirement was wrongly mentioned. So one application has also. कंटेंट कैसे बनेगा ये बताइए ना. कंटेंट पिटीशन आपने लगा दी, आपने अपना पार्ट कंप्लाई किया नहीं. यू डिडंट फाइल द रिप्रेजेंटेशन. My submission, Lord, with the petition. अगर आपने रिप्रेजेंटेशन ही नहीं फाइल किया, The petition may be disposed of with the to comply this order within a 1 month or 2 months, Lordship. At this one, Lordship, please. होता मैं समझ गया कि 2 हफ्ते मुझे करना था, थोड़ा सा लेट है. Ultimately representation. This contempt petition has been filed alleging non-compliance of the order dated 21 जुलाई 2022 passed in WP 4638/2018, whereby the following order was passed. यहाँ से पेज नंबर 18 से ये देखो, यहाँ से ले लेना, इतना इसको उतार देना, पेज 18-19. ठीक है. नेक्स्ट, on making a specific query to the learned counsel for petitioner, he stated that the representation was filed on September. On 26, yes, it's on 2/9/22. 2/9/22, whereas this court had directed the petitioner to file representation within 2 weeks from today, from the date of order. But full stop. There has been delay in filing the representation on part of the petitioner himself. Therefore, at this stage, it cannot be said that the respondents have committed contempt of the orders passed by this court. Okay. Since the representation has now already been filed on 2/9/22, the respondents are directed to decide the same in accordance with law within a period of 2 months. The lot is retired, but 1 month. 1 month from today. And the reason then speaking order, and if it is found that the petitioner is entitled to the notional promotion and benefits emanating therefrom, the same shall also be extended to him within a further period of 2 months. With the aforesaid, this contempt petition is disposed of. But I'm challenging annexure P5 model, whereby the respondent has rejected my application for granting compulsion appointment model. Stated that के petitioner के elder brother already service में, इसलिए petitioner is not eligible for compulsion appointment model. humble submission is that मानो petitioner के जो elder brother है मानो दिलीप पवार, उसने लव मैरिज करी 2014 में. 2014 में उसने शादी करी, 2014 में घर छोड़ के अलग रहने के लिए चल रहे हैं. यस मानो 2014 से मानो. लेक्चर पेज 6 आप देखें, ग्राम पंचायत ने सर्टिफिकेट इशू करा है कि पिटिशन का भाई जो 2014 से अलग रहता है फैमिली से. ये पेज नंबर 29 में सर्टिफिकेट इशू करा था ग्राम पंचायत. कब डेथ हुई थी आपकी? फादर की डेथ हुई मानो 2021 में मानो 6 अप्रैल 2021. और पिटिशन के भाई लगे थे 2014 से, उसकी जॉब लगी 2018 में, फादर एक्सपायर 2021 में. तो रिजेक्शन ऑर्डर कहाँ है? annexure P5 मानो, डेट पेज नंबर 28. ठीक है. नोटिस, इसको नोटिस 59. ये कौन सा था? व्हाट्सएप में इसमें रिजॉइंडर फाइल करना है, उसके लिए समय चाहते हैं 4 weeks आफ्टर. पासवर्ड क्यों किया था सर की ओर से? आपने टाइम लिया? Earlier also they sought time to file rejoinder, madam.
We have filed our reply in the August 25th. तो ये तो टेंडर पूरा हो गया होगा, अवार्ड भी हो गया रेस्पोंडेंट को? जी सर, आर्गी काउंसिल है नहीं सर, इसके बारे में जानकारी नहीं मुझे सर। जानकारी नहीं है आपको? Two weeks time to file rejoinder by your last opportunity. 6 महीने तो होगा रिप्लाई पेश करके। सर शांति हो सर। I'm grateful. I'm obliged. घर डिमोलिश कर दिया, उसको रिकंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हैं जी। तो रिट में थोड़ी वो पहले तो डिसाइड हो इलीगल कंस्ट्रक्शन was there or not. it was not an it was an illegal and not an illegal construction. First it has to be decided. देखिए, none for the petitioner even in the second round. The following prayer in this petition under Article 226 of the Constitution of India, following prayer has been made. In the petition, it is stated that the respondents are guilty for negligence and inaction which triggered the violence and targeted the present petitioner's house by running bulldozer on the property of the petitioner. So the petitioner has been filed seeking inter alia compensation and reconstruction of the properties and establishment of the petitioners as a result of communal violence that broke out on 10/4/22. Full stop. Next paragraph. Such a relief cannot be granted in a petition under Article 226 where the disputed questions of facts are involved and this court is not inclined to entertain this petition. Accordingly, the same being bereft of merit and substance is hereby dismissed at the admission stage. इसमें क्या है? Last time nobody was there. Again.
None for the petitioner even in the second round dismissed for want of prosecution. कुछ नहीं, ये नोटिस है, बिल्डिंग ऑलरेडी गिरा दी है, इन्फेक्चुअस है, नोटिस चैलेंज किया इस This petition is for the inaction on the part of respondent whereby the petitioners are having a decree in their favor of the year 2011. Despite to that decree, name of the petitioners are. You want to get that decree executed in this writ petition? Lordship, because there is a letter by Execution case का क्या हुआ? लगाया था आपने? हाँ Execution case. उसी में ये लिखा, execution court ने ही लिखा है. Kindly see the page number 21. Then what is the remedy? अगर सर ऐसे तो फिर करेंगे ही नहीं. वो एग्जीक्यूशन कोर्ट कब से लेटर लिख रही है? 2011 की डिग्री है, आज की नहीं है. 10 ईयर पास हो गए करीबन. आप देखिए ये जो लेटर है पेज नंबर 21 पे. एग्जीक्यूशन फाइल किया था आपने? हाँ सर, ये उसी का है ना सर, ये लिखा हुआ है इसमें. तो क्योंकि कोर्ट ऐसे तो लिखेगी भी नहीं मेरे लिए. क्या है ये सर लेटर लिखा है कलेक्टर को पेज नंबर 21 पे, टू कलेक्टर जिला कलेक्टर कार्यालय मोती तबेला इंदौर. श्रीमान 11वें व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 1 नामांतरण किया जाए, नामांतरण कराए जाने बाबत. इन लाइट ऑफ दिस विल डिस्पोज ऑफ द कलेक्टर विद इन ए टाइम बाउंड पीरियड. लॉर्ड, आपके इंस्पेक्शंस आएंगे नहीं, रिप्लाई भी नहीं. 4-5 बार हो गया. लास्ट इंटेलिजेंस भी 3 समय पहले दी थी सर. 7 ये लास्ट इंटेलिजेंस कितना समय देंगे अभी इनको? इसके आगे समय थोड़ी दे सकते. देखिए, द पिटिशनर इज एग्रीड बाय द एक्शन inaction of the respondents whereby in spite of decree passed in his favor as well as letter dated 7/3/2020 issued by the 11th civil judge class 1 Indore, addressed to the collector Indore to implement the decree in favor of the petitioner and muted the land full stop. Learned counsel for the petitioner submitted that in spite of the decree in his favor, the respondent number 3 is trying to demarcate the land for construction of pond without demarcating and mutating the land in favor of the petitioner. Full stop. Next, taking earlier 4 to 5 opportunities were granted to the respondent state to seek instructions and to file reply. However, the reply has not been filed. Either the instructions have been sought. Yes, taking into consideration the letter dated 7/3/2020 addressed by the court to the collector Indore. ये है ना, 11 civil judge class 1 Indore to collector Indore. The respondent number 2 is directed to act upon the judgment and decree dated 16/5/2011 and do the needful in accordance with law as expeditiously as possible, preferably within 2 months. 2 months. Date of receipt of certified copy of the order. ठीक है. This petition stands disposed of. Madam. So Vika. Yes. अमेंडमेंट की एप्लीकेशन पिटिशन की सेकंड राउंड में क्या अमेंडमेंट चाह रहे हैं? पार्टी बनाने की शायद कॉपी नहीं मिली हमें. Copy has not been received.
प्रेयर क्या है? व्हाट इज द प्रेयर? प्रेयर ये है कि मेरे द्वारा एक पिटीशन फाइल की गई थी हाँ, यूटीपी से कनेक्शन लेने के लिए। तो हमारा पिटिशनर, हमारा डिस्प्यूट चल रहा है लैंडलॉर्ड और टेनेंट का। तो उसमें एक एग्रीमेंट था, तो वो एग्रीमेंट इनकी एप्लीकेशन से हाईकोर्ट द्वारा कॉल किया गया, वो पिटिशन में लगा हुआ है सर। उसके ग्राउंड पे इन्होंने एक मुकदमा हमारे खिलाफ बनवा दिया 420 का, 420, 467, 478 का। और पुलिस द्वारा प्रोड्यूस, पुलिस को डॉक्यूमेंट चाहिए तो उसके द्वारा फिर पिटिशन लगाई गई है डॉक्यूमेंट पुलिस को दिलवाने के। तो डॉक्यूमेंट ओरिजिनल सर कोर्ट में पेश है। कोर्ट में पेश? जी हाँ। और सर ऑलरेडी ये फ्रेश डब्ल्यूपी में डायरेक्शन कैसे हो सकता है? नहीं, इसमें हो नहीं सकता। तो वो प्रोविजन है चैप्टर 30A ऑफ द एमपी हाई कोर्ट रूल्स, where they can file an IA for asking for that original document in and placing a photocopy or a certified copy in its place. Lordship, they are saying that that document was filed in a sealed envelope. They are saying in the petition that that document was filed in a sealed envelope. Sealed envelope? Yes. Therefore, they are seeking indulgence from this honorable court to take that application would be sufficient. अभी प्रेयर क्या कर रहे हैं? नहीं, योग्य आदेश एवं निर्देश याचिका स्वयं के रिकॉर्ड में जमा सीलबंद लिफाफे में मूल समझौता लेख प्राप्त करने के संबंध में योग्य आदेश निर्देश प्रदान करने की कृपा हो। That's all. That is the only prayer. Yes. So that can be done. इसमें पहला ऑर्डर हो चुका है कोर्ट का, पुलिस में वही डॉक्यूमेंट से कहा तक कोर्ट डिसाइड करेगी, ना कि पुलिस द्वारा डिसाइड करेगी। क्या नाम है इसमें पिटिशनर का? हबीब नूर नाम। हबीब नूर। सिविल सूट पेंडिंग है लॉर्डशिप। उसके बाद इन्होंने एक नोटिस आया तो उस नोटिस को फ्रेश करने के लिए पिटीशन फाइल करी। नहीं, मेरा ये कहना, ये तो अलग चीज हो गई। इसमें जो प्रेयर है वो एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मांग रहा है वापस, याचिका निराकृत हो चुकी है, वो डॉक्यूमेंट उसमें लगा हुआ है, उसमें एक आईए पेश कर दे एज पर चैप्टर 30A ऑफ दी, क्या रूल 30A है ना, देखो निकालो उसको। क्या प्रोविजन वगैरह देखते हुए फिर पिटीशन बना देते हैं ऐसी, तो कहाँ से मेंटेनेबल होगी वो? जनरल जैसा लेटर लिखते हैं ना अपन किसी को, वैसी पिटीशन बनती है, तो उसमें कुछ वो रिलीफ तो दे ही नहीं सकते। अब फिर वो जो डाउट्स होते हैं क्लियर हो जाते हैं बाद, उस वजह से लगा कैसे मिल जाएगा? तो हाईकोर्ट की परमिशन से ही हम सब भूल गए ना, मालूम है? नहीं, चैप्टर 2 है क्या? उनको नहीं मालूम। लॉर्डशिप डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट इनको है नहीं, पिटिशनर को डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट पुलिस को, तो पुलिस एप्लीकेशन लगा लॉर्डशिप को लगा रहा हूँ। अरे आपको भी नहीं समझ में आ रहा है, याचिका में जो प्रेयर की वो ग्रांट नहीं कर सकते। लॉर्डशिप क्यों नहीं कर सकते? मैं लिख रहा हूँ ऑर्डर में। जी देखिए, दिस पिटिशन हैज बीन अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज बीन फाइल्ड सीकिंग रिटर्न ऑफ द original document filed in WP number 7149/2020। ये डिसाइड हो गई क्या? इसका ऑर्डर कहाँ? ऑर्डर लगा है सब, कहाँ लगा? कहाँ है? मतलब आपको बताना चाहिए कि फलाने अनेक्सर पे लगा हुआ है। लॉर्डशिप पेज नंबर 19। और दूसरी बात, ये पिटिशनर का नाम क्या है? हबीब नूर। ये कैसे लगा सकते हैं? ये कैसे लगा सकते हैं? वो पुरानी पिटिशन अनवर कुरैशी ने लगाया था। लॉर्डशिप So unless he can file, Anwar Qureshi can file. लॉर्डशिप
that too an application before in that case, not a separate writ petition. अभिनूर के लिए मेंटेनेबल नहीं तो वो लगा ही नहीं सकता उसको क्योंकि फाइल ही अनवर कुरैशी ने करा है Returning of the original document, yeah, which has been finally disposed of. Full stop. Full stop. WB number 7149/2020 was filed by one Anwar Qureshi. Not sure. And not the present petitioner. In view of the above, this writ petition is not maintainable. Moreover, a separate writ petition need not be filed in view of amendment in chapter 2 after rule 30. A new rule 30A has been inserted, which provides for filing an application interlocutory application for recall oblique modification oblique clarification of an order oblique judgment or extension of time duly supported by an affidavit along with documents. In view of the aforesaid, this writ petition is not maintainable. Accordingly, the same is dismissed Also, at the admission stage itself. the present petitioner was a party in that earlier petition. He was respond number 2. Sure. Yes, Lordship. I have just checked the case status. It is written MP के लिए MP पहला वाला काट देना पहला वाला था ना कि वो he was not a party ये इसी ग्राउंड पे we can dismiss. However, petitioner को जो पढ़ा ना petitioner earlier petition would be at liberty to move appropriate IA in the light of in the disposed High Court rules. In the light of Rule 38, Chapter 2, Rule 30A of the MP High Court rules, if so advised. रेस्पोंडेंट को तो उसने उसको पावर ही नहीं है उसको डॉक्यूमेंट वापस लेने का क्योंकि पिटिशनर ने फाइल करा इतने अनवर कुरैशी ने तो वो कैसे वो एप्लीकेशन करेगा पिटिशनर द्वारा फाइल करा पिटिशनर अनवर ने फाइल करा तो अनवर लेगा वापस अभिनूर कैसे लेगा If he was a party to that petition, then he can take any document from that disposed of petition also. उस समय देखेंगे अब जब वो एप्लीकेशन लगाएगा तब देखेंगे कि उसका राइट बनता है डायरेक्शन हो जाएगा तो फिर उस ग्राउंड पे सब वो आके है कि ग्राउंड पे आके तुमने डायरेक्शन दिया पिटिशन नहीं हमने डायरेक्शन नहीं दिया वी हैव सेड the alternate remedy. We are at liberty to file an application under chapter so and so. वही तो लिबर्टी मिल गई If admissible in law. ये एप्लीकेशन लिबर्टी देते हैं इसका मतलब एप्लीकेशन अलाउ नहीं हो जाती तो उस पे कंसिडरेशन होता है एडजुडिकेशन होता है फिर उसमें ऑर्डर पास होता है तो अभिनूर को मिल जाएगी तो ऑलरेडी ऑर्डर का नहीं देंगे ना कैसे देंगे उसको फिर ऑब्जेक्शन लेना आप अगर लगाता है तो यस But the matter was kept in second round and in the first round the petition. Nobody appeared. Yes, madam. Identical matter which your lordship has just decided, item number 63. Your lordship may just kindly see the prayer made in this petition also. 63? Yes, madam. नहीं ये तो हो ही नहीं सकता जी. And apart from that, we have filed reply. There was illegal construction. We served notice not once, but twice, thrice. Despite that, did not produce any document to show that the construction was made after taking permission under the provisions of section 187 of the municipality. No response was given. We cannot decide the compensation in the writ petition, and we cannot also give direction to rebuild unless
unless it is found to be incorrect, demolition is incorrect. Yeah, that can be done in appropriate Appropriate proceedings. वो ऑर्डर पास कर दिया ना 63 में किया आपने सर। तो उसको देख के फिर मैं कर देता हूँ। जी सर, ये इसमें रिलीफ थोड़ी सी, इसमें जुडिशियल इंक्वायरी वगैरह और इन्होंने इसमें कहा चेंज कर देंगे उसको। जी 63 to C 63 का ऑर्डर हो जाएगा तब इसको देख लिखा देंगे। Second matter is also same. Same. Yes, ma'am. Same. 41. What हो गया? 41 हो गया। हाँ, Right, she stated that she has filed the reply already, but I will not receive the copy today. I'll receive the copy and then it may kindly be kept in the next week. एक मिनट देख लेते ना, what is the reply है क्या रिकॉर्ड पे? 3/8/2022 को फाइल किया है हमने। 3/8 को। सर मैंने 25/8 वो वकील पत्र दिया था जी, मैंने लेटर ऑन वकील पत्र दिया मुझे। और कॉपी भी इनने दी है मिस्टर पंडागरे के पंडागरे के पंडा उनको दी है। आर.के. पंडा की। उसके बगैर फाइल ही नहीं होगी ना। आपने रिप्लाई में केवल वो कहा था कि ये सेक्शन 23A(1)(b) के पर्सन्स में रतलाम विकास योजना 2021 के निर्दिष्ट भूमि ये बोल रहे हैं कि ये रिप्रेजेंटेशन आपका डिसाइड करके रिजेक्ट कर दिया 4/1/2022 को 21 जुलाई 22। सर ये मुझे मेरा निवेदन ये था कि जो आप ये बता रहे हैं कि योजना में योजना नहीं मेरिट पे वी विल नॉट सी ऑन मेरिट्स, दिस इज कंटेंट। गलत भी ऑर्डर पास कर दिया तो यू हैव लिबर्टी टू फाइल अ फ्रेश रिट पिटीशन। नेक्स्ट वीक में रख ले सर, मैं जैसा भी होगा आपको बता दूंगा कि इसको चैलेंज करना है कि मुझे अभी काफी मिली नहीं तो हम लिबर्टी दे देते हैं आपको, अगर आपको ऐसा लगता है चैलेंज करना आप चैलेंज कर लेना। इसको पेंडिंग क्यों रखे मेरे को बताइए, तो बड़े मुश्किल में तो लगते हैं मुकदमे। वो तो सही है पर खाली नेक्स्ट वीक का मैं कह रहा हूँ, फिक्स डेट दे दें। नेक्स्ट वीक की बात ही नहीं, आप देख लीजिए, अपन एक बार पूरा देख लेते हैं फिर से। मेरा डायरेक्शन क्या था, व्हाट वाज द डायरेक्शन? डायरेक्शन इज दैट मतलब द ऑर्डर डिसाइड हो सकता है, उसको डिसाइड करना जरूरी है, अदरवाइज फिर क्या रहेगा। आपका कंपाइलेशन है ये सर पेज नंबर 17 पे सर, पेज नंबर 16 ऑनवर्ड्स। फर्दर रिलायंस हैज बीन प्लेस्ड the budget notification dated 14/9/12 which provides modification in the development plan, in which also it is mentioned that the power are vested with the state government under section 23A. In view of the aforesaid, since the principal secretary is the competent authority under the section 23(1)(b) of the Act 1973, release the land from the master plan, change the use of land. Therefore, it is for the petitioner to pursue the matter remedy before the state government. Copy of the letter dated 25/11/14 was also forwarded to the principal secretary. Therefore, the matter is pending. The principal secretary was directed to decide the same within a period of 1 day. आपने जो ऑर्डर लगाया है सर, ये आप उप सचिव साहब कर रहा है, क्योंकि प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब को डायरेक्शन था, स्पेसिफिक डायरेक्शन था कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी विल डिसाइड द मैटर। So my submission is that the matter was decided by one deputy director, Jal Nagari Vikas, and that was forwarded. No approval was approved. Yeah, no approval was taken by from the principal secretary. तो जब डायरेक्शन ही उनको था प्रिंसिपल सेक्रेटरी को साहब को, तो ये उप सचिव साहब ने ऑर्डर करा और ये कॉपी हमें दे दी, खाली अध्यक्ष महोदय को फॉरवर्ड कर दी 21 जुलाई को। वो भी आज तक हमें मिली नहीं है। दिस इज योर सेकंड कंटेम्प्ट। सेकंड कंटेम्प्ट का ऑर्डर कहाँ पे है? उसमें अच्छे लगा सर, उसमें 6 महीने का फिर से डायरेक्शन दिया था। ये तो कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे, इन्होंने अंडरटेकिंग दी थी कि विल प्रोवाइड डॉक्यूमेंट्स एंड देयर आफ्टर विद इन 60 days from the date of receipt of such document order. ये P2 सर, P2 का ऑर्डर है, पेज नंबर 19 फिर आपने 60 days में कहाँ पास किया होगा? इसमें हमने पास नहीं किया, and for that I have already tendered unconditional apology in my reply also, मैंने, but the order has been passed because this land does not come under the the order was passed by the deputy secretary. The order is directed principal. तो अभी क्या करेंगे, उसको सेटिस्फाइड नहीं कर सकते कंटेंट में अपन? नहीं, मेरा खाली तो आपको चैलेंज ही करना पड़ेगा उसको।
ये सब ग्राउंड्स लेते हुए कि साहब सेक्रेटरी को डायरेक्शन दिया था, डिप्टी सेक्रेटरी ने पास कर दिया, में करना था, 1 साल लगा दिया, ये सब ग्राउंड्स आप लीजिए उसमें। सर मेरा खाली निवेदन है कि सर मेरी प्रीवियस पिटीशन आप देखेंगे 2015 की, तो ये सब ये तो मुझे आप बता दीजिए किस कंटेम्प्ट पिटीशन में इन एक्सरसाइज ऑफ पावर्स अंडर 215 कैन बी सेट असाइड दिस ऑर्डर चैलेंजिंग दैट। माय लॉर्ड बी एब्सोल्युटली राइट कि क्या मतलब आपको लिबर्टी देता है। और आपका केस ये है कि हमारी एप्लीकेशन में इनके यहाँ पेंडिंग है and that has been directed to be decided rightly or wrongly I have decided। सर ये क्या, ये मैं आपको बता दूं, इसकी खाली सी थोड़ी सी आपको, मुझे अपन क्यों टाइम वेस्ट कंटेम्प्ट में हम लोग कुछ कर नहीं सकते, हम वी कैन ओनली सी वेदर ऑर्डर हैज बीन कंप्लाइड और नॉट। जो डिले है उसके लिए कंडीशनल अपॉलॉजी एक्सप्रेस कर रहे हैं। in the first paragraph itself I have tendered अगर वी कुड हैव, अगर पावर होता कि इसको सेटिस्फाइड कर दे तो सुनते आपको फिर से। मेरा खाली निवेदन सर कि 2015 के डायरेक्शन थे, ये आप देखेंगे आपका करिए ना किस प्रोविजन का क्या कर सकते हैं। Because I don't know any of the provisions where I can entertain your rejection order in a contempt petition. Absolutely, my lord is really correct, but they were violating the orders not once, they were violating the order twice. स्टेट गवर्नमेंट देखिए, जहां कोर्ट ने फ्रेश ऑर्डर पास कर दिया तो पुरानी बातें खत्म हो जाती है। 2018 में कंटेम्प्ट में एक डायरेक्शन दे दिया फिर से, ये सब एक डायरेक्शन नहीं दे सकते कंटेम्प्ट में। ये श्रमिक कामगार समिति है और ये ड्यूस है कंपनी के अगेंस्ट, तो आप उसमें खाली इतना ऑब्जर्व करते हैं साहब कि मैं अगर फ्रेश पिटीशन तो मैं फाइल कर वो तो ऐसे ही मैं इसको चैलेंज करूंगा, अभी का रिप्लाई देना है मुझे तो मैं उसको चैलेंज कर देता हूँ। चैलेंज करिए, लिखिए दिस contempt petition has been filed under section 12 of the Contempts of Court alleging willful disobedience of the order dated 31/8/2018 passed in contempt number 2754/2017 bracket में original order dated 17/2016 passed in WP number 1900/2015 while disposing of the contempt petition this court had granted liberty। वो तो ओरिजिनल रीट में ऑर्डर हुआ था, फिर कंटेम्प्ट लगी। To the petitioner to appear before the principal secretary and pursue the application for conversion. The principal secretary was directed to decide the same within a period of 60 days from the date of receipt of certified copy of the order. Full stop. The respondents have filed a reply in which it is stated that कब ऑर्डर पास किया आपने R1? ये गलत है ना, 4122 गलत डेट है, 21 जुलाई का। stating that the order passed in contempt as well as writ petition has already been complied by order dated 21/7/2022 by rejecting the application. by rejecting the Learned counsel for the respondent further केवल ये कहा था, ये केवल ये कहा कि जलाशय से आवासीय भूमि उपयोग में रूपांतरण नहीं किया जावे, ये जनरल ऑर्डर है सर, ये मेरी एप्लीकेशन का ऑर्डर नहीं है, यही मेरा कहना सर। मधु पटेल, हाँ ये हमारे अध्यक्ष हैं। प्रजन मिल श्रमिक कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित रतलाम, उनको एड्रेस करते हुए लिखा है एप्लीकेशन पे किया है और ये कहा है कि ये कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड फॉर रेसिडेंशियल पर्पसेस। petition has been filed by whom? by श्रमिक कल्याण समिति, मिल श्रमिक कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी समिति रतलाम, थ्रू इट्स प्रेसिडेंट अर्जुन निमावत। वो अर्जुन निमावत साहब थे उस समय प्रेसिडेंट सर। टुडे इज प्रेजेंट इन द कोर्ट बोथ, टुडे मिस्टर निमावत एंड मिस्टर मधु वर्मा बोथ आर प्रेजेंट बिफोर दिस। मधु पटेल मैम, ये अर्जुन निमावत के बाद में ये बन गया मधु पटेल भी, उनको एड्रेस किया उन्होंने। ये पिटीशन मधु पटेल ने थ्रू इट्स प्रेसिडेंट मधु पटेल ने डाली। पर ये मैडम दिस ऑर्डर डज नॉट अपीयर टू हैव बीन पास्ड
in compliance of the orders of Yes, this ma'am. court. Yes, this is my view. But they have moved an application for conversion of the land manor. And it is not possible. That is true. Where have you stated in this order that this order is being issued in compliance of order passed in contempt and WP? ये नहीं लिखा आपने? हाँ, ये नहीं लिखा है, परंतु किया इन्हीं के इसमें, क्योंकि इन्हीं को एड्रेस करके लिखा है कि आपका ये ट्रांसफर नहीं हो सकता है लैंड। नहीं ऐसा नहीं है। इनको भी एड्रेस नहीं किया दैट ओरिजिनल प्रेसिडेंट इज ऑलरेडी हियर। ओरिजिनल प्रेसिडेंट तो मधु पटेल ही है। नहीं वो जो एप्लीकेशन में लिखा होगा उन्हीं को, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट को कहाँ पता चलेगा कि कौन अभी एप्लीकेशन कहाँ है इनकी? इन्होंने लगाई नहीं है एप्लीकेशन। ये हो सकता है, ये दिस इज क्वाइट पॉसिबल। एप्लीकेशन लगाई होगी इसमें किया जाए। जब अप्रोच किया ना प्रिंसिपल सेक्रेटरी को, तब मधु पटेल के नाम से एप्लीकेशन लगा दिया आपने, ऐसा हो सकता है 100%। नहीं सर, ये आप देखें, हमने अप्रोच जो किया था वो एप्लीकेशन मूव कर रखी सर, मैंने वो एप्लीकेशन मूव कर रखी। नहीं आप एक बार दिखाने दीजिए उनको, दिखाने एप्लीकेशन सर। आप P3 देखें, पेज नंबर 20 पे सर। ये P3 मैंने प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब, डायरेक्टर साहब, चार्टर्ड कंट्री प्लानिंग सबको दिया है। और इसमें सर जो प्रेसिडेंट, अध्यक्ष, कामगार सहकारी समिति ये लिखा है, डिटेल एप्लीकेशन दी है सर, पेज नंबर 20 P3। आप तो कहीं तो इसमें कंटेंट पिटीशन का और इसका सबका हवाला दिया है, ऑर्डर्स का नाम नहीं मेंशन है, पर नंबर वगैरह सब मेंशन है, पिटीशन का नंबर है, कंटेंट पिटीशन का नंबर है। किसकी है ये एप्लीकेशन में? सिग्नेचर किसकी है? सिग्नेचर सर अर्जुन निमा साहब प्रेसिडेंट ये थे। आज आप बताएं ना 22 में कौन प्रेसिडेंट है, क्योंकि जो 20 में प्रेसिडेंट रहा होगा उसको एड्रेस करने से कोई मतलब ही नहीं होगा। पिटिशनर जो है उसी ने साइन किया। हाँ, साइन उन्हीं किया सर। ऑर्डर उनके नाम से हुआ है ना? ऑर्डर उन्हीं के नाम से हुआ। This cannot be treated as compliance. My lord. When I seek instruction, it may be kept. Mr. Lima, he signed the application. A reply has been filed by the respondent stating that the order passed in contempt as well as writ petition has already been complied with by passing an order related 21/7/2022 annexure R1 filed along with the reply. Learned counsel for the petitioner submitted that the compliance order does not mention that the same has been passed in compliance of the order passed by this court in contempt and writ petition. And the same has been addressed to one Mr. Madhu Patel. Mr. Madhu Patel, who is the present president. He is the vice president at present. Addressed to Mr. Madhu Patel, who is the vice president. He has not filed the contempt petition, writ petition or the contempt petition. Therefore, this cannot be treated to be compliance of the orders. And I'm sorry, Malak. And then the detailed representation was Mr. Learned counsel for petitioner further submitted that detailed representation was filed by the petitioner after the order passed by this court. However, the representation has not been dealt with points wise. No reasons have been assigned. In view of the aforesaid, this court is of the opinion that the order dated 21/7/22 cannot be treated as compliance of the orders passed by this court. In the interest of justice, the respondents are directed to pass a fresh order within a period of on the representation submitted by the petitioner point wise, giving reasons, and thereafter and pass a reasoned and speaking order within 4 weeks. 4 weeks from today, within which this court may initiate contempt proceeding against the concerned respondents. List immediately after 4 weeks. पॉजिटिवली वर्ड आ जाए उसमें सब, तो पॉजिटिवली ये पॉजिटिवली वर्ड अगर आ जाएगा तो बस ठीक है। यस, नेक्स्ट
Actually, in this petition, they have challenged the sanction granted by the TNCP in the year 2011, and they are challenging it in the year 2023. And in paragraph 4, there Yes, is no one there is no appears delay. for the petitioner even in the second round. In the present writ petition, the petitioner has prayed for the following reliefs. Next, learned counsel for respondent submit that the challenge in this writ petition is to the letter dated 8/11/2011 and 9/11/2011 issued by the Joint Director TNC Indore. Where TNC Indore, instead of the petition is hopelessly barred by time. There is a delay of about 12 years in filing the writ petition, for which no explanation has been given in paragraph 4 of the writ petition. तो delay वाले documents लिख के dismiss कर देना चाहिए. On the ground of delay and laches. Well, it's certified copy of the order in item number 41. Certified. That you will get now. Nowadays there is no necessity. Yes, but I want it today itself because your lordship has granted 4 weeks time from today. तो आज ही भिजवा यह मतलब from the date of receipt of copy. इसका मतलब वो होता है जिस दिन आपको मिलेगी उसी दिन से 4 हफ्ते. अब ये कब टाइप होगा कब साइन होगा उस पर डिपेंड करता है. It will take maybe by tomorrow we'll upload. Yes. 84. What you place for time to file rejoinder in this matter? Matter क्या है? Appeal cancellation. My appeal has been cancelled, my lord. License was cancelled of the petitioner by the respondent authorities. Appeal was filed against that order, and appeal may be license cancellation order has been upheld by the appellate authority. That order has been challenged by the petitioner. Non-deposit of fees received from the traders. Yes, ma'am. Yes, ma'am. इसलिए वो आपकी अपील रिजेक्ट हो गई. Yes, ma'am. Okay. So are you not liable to deposit the fees? We had already deposited one lot. Reply में क्या है? Lordship, we have stated that the rules which were framed according to the MP Legal Methodology Rules 2011, according to those rules, the procedure has been followed and the conditions of the license has been violated by the petitioner. Therefore, the license has been cancelled by the authority. 2 weeks time to file the agenda. 4 weeks. 4 weeks. Chalo next. I will be arguing on behalf of my senior counsel to the court. Yes. My lord, the petitioner is challenging the interim order of punishment dated 31st/1/2022, by which the punishment of stoppage of one salary increment with non-cumulative effect has been imposed. Appeal is up. They have not filed appeal. They have directly approached this honorable court without filing it. Appeal is provided. क्या है ये? My lord, my only contention is that the even 113 है जो 113. Punishment. Minor penalty case. ये तो ये हो गया. Alternative remedy पे decide हो गया. That has to be decided after filing the reply. That has to be considered admission. At the admission stage, it was the objection was raised. In the reply. the reply came in. So why don't you file the appeal? Sir, we have an alternative remedy that in Whirlpool Corporation. Have you seen the reply? Yes, sir.
So one stoppage of one salary, one increment Minor penalty. with non-cumulative effect is a minor penalty. Yes, sir. Therefore, inquiry is not necessary. No, sir, it is provided in the, No. in You ambulance have taken a services. ground that rule 14 की इंक्वायरी होना चाहिए. हाँ, तो rule 16. नहीं तो पहले बताइए कि ये जो पनिशमेंट इम्पोज किया है, इट इज अ मेजर पेनल्टी. First you have to see whether it is a major penalty or a minor penalty. It is a minor penalty. Minor penalty, then minor penalty के लिए क्या provision है? 16. Rule 16. So Rule 16 says that inquiry is not necessary. No, sir. Rule 16 says that But have you demanded an inquiry? That is the question. If you don't demand the inquiry, they are not bound to conduct the inquiry. Rule 16 देखो आप लिख सर देखा उसमें ये है कि अगर कोई delinquent employee asks for a regular inquiry, then they are bound to conduct. सर उन्होंने चार्जशीट फाइल कर दी, इसमें रिप्लाई भी दे दिया. मतलब चार्जशीट ऐसे ही फाइल, मतलब चार्जशीट दे दी तो उसके बाद तो फिर मतलब उन्होंने तो स्टार्ट कर दी ना उन्होंने सर. के बाद भी आप तो पूरी पिटीशन आपने रूल 14 पे बना दी है. रूल 14 is not applicable at all. Yes sir, I'm everywhere you have said rule 14 का violation है. So it is rule 16. Even there is judgment of 2013 1 MP Weekly Note 19, which says even if there is a minor penalty imposed, an order of penalty is not appealed, then and when appeal is not filed, directorate is not maintainable. So there is a judgment of this honorable court कि this is I'm referring to Manmohan Singh's case. Kindly refer this case, sir. Kindly refer this case. First avail the remedy, then come, then we'll see. My lordship passed various orders. Lordship has passed various orders wherein that has been stated that the appeal remedy is to be availed first and then the petition is to be filed. So paragraph 8 you can refer. Sir, can I read this paragraph number 8? नहीं ये ठीक है. अभी तो हम we are on the question of alternative remedy. Why don't you avail the remedy? What is the problem? Sir, it will be it is a statutory remedy provided under the rules. ये जो ट्रेंड है ना एवरी केस में अगर आप हाईकोर्ट में आ जाएंगे तो फिर हम लोग क्या करेंगे क्या फिर? So it will become very lengthy process. So it's not lengthy. किसने बोला? वो तो बहुत जल्दी करते हैं. So we have the. So you have wasted 1 year time here in this court. Instead of that, you could have got your appeal decided by this time. और कोर्ट ने लिबर्टी दे रखी है इनको कि टू रेज द अल्टरनेटिव रेमेडी ग्राउंड. सर पर यहाँ पे ऑनरेबल कोर्ट ने पहले भी ये केस डिसाइड किया है तो सिमिलर केस जजमेंट है अपने पास. 2013 1 MP Weekly Note 19. सर वो लीलावती भूरिया वाला भी केस है सर. इसमें बहुत सारे केसेस है जिसमें in exceptional cases we can entertain, there is no bar, but not in all cases. Otherwise यहाँ तो floodgate open हो जाएगा. वो अथॉरिटीज खाली बैठी रहेंगी जिनके लिए प्रोवाइडेड है ऑलरेडी रूल्स में. Challenge that rule, get it quashed, so that next time you need not come to the go to the appeal that stage. Directly come to high court. So please kindly allow this petition. We will grant you liberty. आप जाइए उसमें कराइए, within time bound we'll direct them to decide your appeal. You file appeal within how much time you will file? 15 days or 1 month? So please entertain this petition here only. नहीं मतलब नहीं. आप जाइए, हम 3 महीने के अंदर डिसाइड करने बोल देते हैं उनको. Let them decide it within 3 months. हाँ तो आप डायरेक्शन दे दीजिए सर.
अभी कितने दिन में फाइल करेंगे अपील आप 15 डेज में कर देंगे। 15 days, 3 months. The limitation will not come in their way. Alternative remedy का देख लेंगे। 12 दिन का टाइम देगा ना। If they file the appeal within 15 days, the same shall be decided within 3 months thereafter. And pass a reasoned and speaking order. Limitation will not come in the way of filing the appeal. Oblige madam. Okay, na? Yes. पहला डिसमेंट आरजी प्रतिपत्र अभी नहीं, वकील पत्र की आवश्यकता नहीं, अभी एडमिशन पे लगाइए। मेरा इसमें रिक्वेस्ट केवल ये है कि मेरी सेकंड अपील पेंडिंग है। नहीं, अभी देखते हैं, इसको एडमिट करना होगा तो फिर नोटिस करेंगे। आपने कैविएट तो फाइल किया नहीं है। कैबिनेट नहीं, लेकिन मालूम है कि आप उसमें स्टे मांग रहे हैं, तो मैं उसके अपोज के लिए तो उसके लिए कैविएट फाइल करना पड़ता है एज पर दी। वो तो सही है महिला, लेकिन ऑर्डर ये भी 4-5 दिन पहले हुआ है, मैंने मालूम पड़ा तो मैं बताइए। एक रिक्वेस्ट हो रहा है महिला, अभी 7 is the order annexure P1 at page 11 done 1st April 2023 by which the objection regarding commissioner report were rejected by the trial by the court। आप देखें सर पेज 11 पे मेरे ऑब्जेक्शंस हैं। ये कौन सी एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई है आपकी? ये मेरी कमिश्नर पे ऑब्जेक्शंस थे और वो एप्लीकेशन है सर। नहीं, इन्होंने क्या किया? ऑर्डर 26 रूल 9 पेश की थी इन्होंने। सर हमने वी आर दी pre-filed application under order 26 rule 9 of the CPC। Earlier it was dismissed by the trial court, judgment was pronounced, a first appeal was preferred, and in first appeal the order was set aside and the appeal was allowed, and I have filed the copy of that order। page 39 पे देखें आप, विचारणीय प्रश्न क्रमांक 5 के संबंध में प्रार्थी वादीगण का आवेदन पत्र आदेश 26 नियम 9 CPC स्वीकार कर विचारण न्यायालय को प्रत्यावर्तित रिमांड किया गया है। अपील एवं क्रॉस ऑब्जेक्शन के संबंध में विस्तृत विवेचना कर निष्कर्ष दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता। Thereafter, the application which were earlier filed way back in the year 2015 under order 26 rule 9 was allowed and the commissioner was appointed। Tehsildar was appointed as commissioner। A team was formed by him and they inspected। तो ये ऑर्डर पढ़िए जरा 1423 का, जी जो ऑर्डर आपने चैलेंज किया। With annexure P1 at page 11। सर दूसरा पैराग्राफ से पढ़ता हूँ। प्रकरण में वादी द्वारा सीमांकन प्रतिवेदन के संबंध में यह आपत्ति की गई कि जो सीमांकन रिपोर्ट प्रकरण में पेश की गई है वह प्रथमतः न्यायालय के आदेश के विरुद्ध जाकर सीमांकन दल गठित किया जाकर पेश किया गया है तथा सीमांकन के पूर्व पड़ोसी काश्तकारों को विधिवत सूचना पत्र जारी नहीं किया गया है। तो ये आदेश था ही नहीं, उसके बावजूद सीमांकन हो गया। नहीं, आदेश तो था सीमांकन का, पर जो डायरेक्शन थी उसके कंट्रावेंशन में सीमांकन हुआ है, और जो सीमांकन हुआ है उसमें तो सीमांकन की रिपोर्ट देखें सर रेवेन्यू इंस्पेक्टर की, विच आई हैव फाइल्ड। सीमांकन प्रतिवेदन से दर्शित है कि उक्त सीमांकन चिन्हों से नहीं किया गया है तथा सीमांकन किए जाने की प्रक्रिया फील्ड बुक बनाने की प्रक्रिया पटवारी मैन्युअल के अनुसार नहीं की गई है एवं प्रतिवेदन के साथ जो फील्ड बुक संलग्न किया गया है वह मौके पर नहीं बनाया गया है तथा उसमें सीमांकन के दौरान उपस्थित पक्षकारों को गठित दल के सदस्य के हस्ताक्षर नहीं है। इसके अतिरिक्त कथित सीमांकन हेतु प्रयुक्त नक्शा अप्रमाणित है तथा पेश की गई रिपोर्ट में सभी सर्वे नंबर का सीमांकन नहीं किया गया है। सीमांकन रिपोर्ट के साथ जो फील्ड बुक पेश की गई है उसके अनुसार सर्वे नंबरान का क्षेत्रफल नहीं निकाला गया है तथा सीमांकन प्रतिवेदन में प्रतिवादी द्वारा किए गए अतिक्रमण की सही रिपोर्ट नहीं दी गई है। सीमांकन रिपोर्ट को अमान्य व अस्वीकार किया जाकर वादग्रस्त सर्वे नंबर का सीमांकन
XLR के माध्यम से कराया जाकर वीडियोग्राफी कराए जाने के नहीं, प्रतिवादी द्वारा किए गए अतिक्रमण की सही रिपोर्ट नहीं दी गई। सही रिपोर्ट नहीं दी, बाहरी व्यक्तियों से प्रभावित होगा। इसको आप देखें सर, जो रेवेन्यू इंस्पेक्टर ने रिपोर्ट दी है, आई हैव फाइल्ड एट पेज 43, इसका पेज 44 देखें सर, पैरा 2 में यहाँ तो उन्होंने लिख दिया है कि 0.06 हेक्टेयर पर सरस्वती शिशु मंदिर बुद्रावन की वाल बाउंड्री बनाकर वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार अतिक्रमण पाया गया। और इसी के बाद पेज 45 पे आप देखेंगे जो अन्य रकबे में पाया गया अंतर है 0.30 है। तो 0.30 और 0.06 देयर इज अ वास्ट डिफरेंस। और उसके बाद भी इतना न लिखते हुए केवल ये लिख दिया कि 0.06 का अतिक्रमण पाया गया है। एंड आफ्टर फॉरवर्डिंग दिस रिपोर्ट टू तहसीलदार, द तहसीलदार वर्बेटम वैसी की वैसी फॉरवर्ड कर दी कोर्ट को, which I have placed as annexure P9 at page 40। बिल्कुल वर्बेटम वैसी की वैसी, केवल यहाँ टाइटल में श्रीमान व्यवहार न्यायाधीश महोदय खंड नलखेड़ा जिला शाहजहांपुर लिख दिया और डेट लिख दी 10/2/2023। बाकी सारे पैराग्राफ वो के वही पेज आप देखें सर 40, 41 और 42 पे। उनका कहना है कि बराबर ठीक किया है। नहीं, उनका कहना है कि दर्शित होता। अब आप ये देखें इसके आगे सब, इसके आगे देखें इसी ऑर्डर में एनेक्सर P1 में ये आपने कहा ना रिमांड किया करके, रिमांड कहाँ किया? नहीं, रिमांड तो अपीलेट कोर्ट ने किया था। आफ्टर अलाउिंग द एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 26 रूल 9 filed a copy of the first appellate court's judgment and decree as annexure P8 at page 32। इसका पेज 39 पे पैरा 20 आप देखें, appellate court remanded what it सब पेज 39। हाँ, रिमांड हो गया, उसके बाद ये ऑर्डर पास हुआ, उसके बाद ये ऑर्डर हुआ और ये कमिश्नर रिपोर्ट फाइल हुई। उस कमिश्नर रिपोर्ट पे जो ऑब्जेक्शन 38 पे क्या 38 पे रिमांड किया ना? जी हाँ, 20 में रिमांड किया है, 20 में नंबर 30। नक्ति कराकर वह पक्ष को मात्र आदेश साक्ष्य का अवसर देते हुए कमिश्नर रिपोर्ट पर विचार कर पुनः निर्णय घोषित किया जाकर प्रकरण का निराकरण किया जाएगा। हमने कमिश्नर रिपोर्ट पे ऑब्जेक्शन फाइल किए कि यह कमिश्नर रिपोर्ट जिस तरह से बनना चाहिए थी जो जारी हुआ था, इसमें डायरेक्शन है संबंधित कमिश्नर के जरिए संबंधित राजस्व निरीक्षक से नक्ति कराकर। जी हाँ, ये भी डायरेक्शन है ना? ये भी डायरेक्शन है, ये भी उन्होंने रेवेन्यू इंस्पेक्टर ने तो किया है। आई हैव फाइल्ड एट पेज 43 और इसमें आप देखें पेज 44 पे पैरा 2 देखें सर, आप पहले पेज 44 का पैरा 2। भूमि सर्वे क्रमांक 1448 के उत्तर नंबर 44 पैरा 2 44 कहाँ है? पेज 44 भूमि सर्वे क्रमांक, हाँ जी हाँ, 1448 के उत्तर पूर्वी कोने पर त्रिभुजाकार आकृति में रकबा 0.06 हेक्टेयर और सरस्वती शिशु मंदिर गुजरावन की वाल बाउंड्री बनाकर वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार अतिक्रमण किया गया है। आप पेज 45 पे देखेंगे कि ये बंदोबस्त के सेटलमेंट के पहले की स्थिति, बंदोबस्त के पश्चात के नंबर और रकबे में पाया गया अंतर। इसमें सर आप देखेंगे रकबे में जो अंतर पाया गया है वो है 0.30। तो 0.30 और 0.06 में देयर इज अ वास्ट डिफरेंस। 0.06 0.30 30 एरिया बड़ा है,
0.06 का एरिया कम है, इसीलिए हमने एप्लीकेशन दी थी, तो उस पर ऑब्जेक्शन फाइल किए थे कि वो ऑब्जेक्शन हमारे डिसाइड करें और वीडियोग्राफी से करें। दूसरा ये है कि जो कोर्ट ने कहा था जो फील्ड बुक के हिसाब से कार्यवाही होती है कि 3 या 4 जो है परमानेंट मार्क्स होंगे, वहां से नकती होगी, जरीब डलेगी, तो कुछ भी नहीं की। एंड वी प्रे कि वीडियोग्राफी करवा दी जाए। ड्राइविंग्स उन्होंने दिए थे कि यहाँ से नकती करना, वो नहीं किया। वो कैसे पता चलेगा? वो ऐसे पता चलेगा, तो देखिए पेज 12 पे आखिरी की लाइन में। तो सेकंड कमिश्नर रिपोर्ट कहाँ है? ये कमिश्नर रिपोर्ट है सर P8 पे, P9 पे, सेकंड वाली P9 पे। दूसरी बार जो हुई, ये पहली बार ही हुई है। रिमांड के बाद तो पहली बार ही हुई है। रिमांड के बाद पहली बार ही हुई। रिमांड के पहले तो हमारी एप्लीकेशन खारिज कर दी थी, ऑर्डर 26 रूल 9 थी। ये रिपोर्ट है। और ये जो रेवेन्यू इंस्पेक्टर की रिपोर्ट मैंने अभी पढ़ के बताई पेज 44-45 पे, ये तहसीलदार ने वर्बेटम वैसी की वैसी टाइप करके दी थी, बिल्कुल वर्बेटम। पहली रिपोर्ट और ये वाली रेवेन्यू इंस्पेक्टर ने जो रिपोर्ट दी उसी का प्रतिवेदन बना के दे दिया। और उसमें भी आप देखेंगे पेज 41 पे वही पैरा 2 में भूमि सर्वे व्हाट इट सर पेज 41 ये रिपोर्ट पेज नंबर 54 पे ये ठीक नहीं है, आपके हिसाब से रिपोर्ट ठीक नहीं है। इसी में वो दिख रहा है ना कि एक तरफ तो आप लिख रहे हैं जो रखा जाता है 0.30 है, पैरा 2 में आप लिख रहे हैं कि जो उन्होंने अतिक्रमण किया है डिफेंडेंट रिस्पोंडेंट ने 0.06 सेक्टर पे किया। और जो स्थायी परमानेंट मार्क्स हैं वो नहीं बनाए गए, वो आप देखें पेज 12 पे। डायरेक्शन था, नकदी उसी हिसाब से होती है, सीमांकन उसी हिसाब से होता है, जिसमें रोड है, रिवर है, इन स्थायी सीमा चिन्हों से राजस्व निरीक्षक को कराया जाकर और ये लिखा भी है पैरा 12 आप देखें सर, रिटार्ड कमीशन अनुसार 3 स्थायी सीमा चिन्हों से सीमांकन किए जाने हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके संबंध में प्रतिवेदन अनुसार 6/2/2023 को 2 स्थायी सीमा चिन्ह तथा उक्त दिनांक सीमांकन पूर्ण होने न होने से 7/2/23 को तीसरा स्थायी चिन्ह। वो तीसरा स्थायी चिन्ह कहाँ से किया उन्होंने? क्योंकि जब तक परमानेंट वो नहीं हो, परमानेंट है रोड हो, रिवर हो या कोई बरगद का पेड़ हो, जो बरगद का पेड़ इसलिए है फील्ड बुक में कि वो 100 साल 125 साल पुराना होता है और वो परमानेंट माना जाता है। और फिर कोर्ट ने लिख दिया कि विधिवत होना दर्शित होता है, इसी के आगे दर्शित होना देयर इज अ वास्ट डिफरेंस। दर्शित होता है। और फिर इसके आगे कि फील्ड बुक के जो प्रोविजंस हैं उसको घटाया बढ़ाया जा सकता है। कैसे घटाएंगे बढ़ाएंगे? जो प्रोविजंस है लैंड रेवेन्यू कोड में सेक्शन 114 में जो प्रोविजंस हैं उसको कर्टेल भी नहीं किया जा सकता, एनहांस भी नहीं किया जा सकता। एंड द केस हैज बीन फिक्स्ड टुमारो फॉर पासिंग ऑफ द जजमेंट। वी मूव देयर एप्लीकेशन बिफोर द ट्रायल कोर्ट कि हमने ये एमपी फला क्रमांक से फाइल कर दी है, आर्गुमेंट भी सुन लिया 12/4 को और केस भी अनाउंसमेंट के लिए रख दिया था। ये आपका ना कैविएट है ना कुछ है नहीं महिला, लेकिन इसी केस में मेरे को पूरी जानकारी है तो मैं रिक्वेस्ट तो कर रहा तो जानकारी आपको होगी, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। परसों तो कि ये महिला इसमें ये है कि अरेस्ट करके आगे कर रहे हैं। बताइए मुझे आपको किस प्रोविजन के तहत सुन ले, ये बता दीजिए पहले, मैं अभी सुन लेता हूँ आपको। कोर्ट ऑफ लॉ, दिस इज हाई कोर्ट। जी भाई, दिस इज नॉट तहसील कोर्ट की कुछ भी बोल के अपना ऑर्डर करें। तो आप बताइए प्रोविजन क्या है? हाई कोर्ट रूल्स में क्या प्रोविजन है? नहीं तो अगर इफ यू आर अपोजिंग यू कैन नॉट oppose the admission, you can oppose interim provided you file a caveat.
और मुझे टाइम तो मिलता है महिला है परसों मेरे पास तो परसों यार मैं वकील पत्र तो यहीं पे ही फाइल कर रहा हूँ ये मैं निवेदन कर रहा हूँ We will not permit you unless we issue notice first. आप मुझे प्रोविजन बता दीजिए, सुनेंगे आपको। अब इसको अगर फैक्ट्स को सप्रेस करके माइलर ये क्योंकि मैं केवल एक लाइन बता आप फिर बहस करिए तो उस दिन फाइनली डिसाइड कर देंगे इसको नेक्स्ट डेट पे। इसमें क्या है कोर्ट कम्स टू द कंक्लूजन कि आई एम नॉट फेयर जो कोर्ट में पास है मिनिस्टर का पूरा क्रॉस हो चुका पूरा बयान प्रोविजन बताइए, मैं सुनने को तैयार हूँ आपको। छोटी सर ये सेकंड अपील नंबर 609/23 के साथ रख ली मैंने फाइल किया और डिले हो जाएगा। वो इशू इज टोटली डिफरेंट, वो इशू टोटली डिफरेंट है। Question of admission into issue notice period returnable failing which in the meanwhile the also had on IA 2337/23 application for stay of further proceedings. In the meanwhile, further proceedings in civil suit number RCSA/19/2014 pending before civil judge junior division Kalkheda district Shajapur shall remain stayed in the next date of hearing. In this case, in the week commencing 8th of नेक्स्ट वीक को मैं तो आज ही वकील पद दे दूंगा नोटिस। अभी तो नोटिस इशू करेंगे ना ये, अभी पीएफ दिया नहीं, आप कहाँ से बस कैसे पेश कर देंगे? मैं प्रोविजन बताइए मेरे को, मुझे नहीं मालूम इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। प्रोविजन बता देंगे, अभी सुन लेता हूँ। नहीं अभी तो आज तो नहीं सुना होता तो इसको आज फाइनल कर देते इसको। थैंक यू। ठीक। नेक्स्ट Back to your last. 143 melody mentioning, melody my short prayer melody in this petition. Now 140 melody very short prayer in this petition. That melody the urgency you have mentioned because case is listed. We are taking line by line. Just आप कुछ नहीं। Urgency disposed of इसलिए बोल रहा हूँ मैं। But only direction I want that they have to hold the department examination. Which they have not hold for more than 10 years. अरे अभी सर्विस अवेटेड है, अभी नोटिस हो चुका है इसमें। अभी सर्विस अवेटेड आपने मेंशन कर दिया केस को। उसका था डायरेक्शन का इसमें मैंने किया था सर और कुछ नहीं। क्या हुआ? नोटिस सर्व है? नो नॉट एमएम का क्या मतलब है इसमें? ये क्या लिखा है इसमें? अच्छा मेंशन मेमो से लगवाया आपने? क्योंकि सर वो अभी केस हो जाएगा केवल सर डायरेक्शन इसलिए डायरेक्शन सभी के केस है, सब बैठे नंबर आपका क्यों आउट ऑफ टर्न ले लें इसलिए? देयर इज नो इमरजेंसी, ठीक, वी हैव ऑलरेडी टेकन कॉग्निजेंस इन योर मैटर। ठीक है लाइन से लो। ठीक, यस। So there is a connected petition filed by the respondent, that is WP 15538 of 2020. क्या? रिस्पोंडेंट ने एक पिटिशन फाइल की इससे कनेक्टेड सेम ऑर्डर्स के अगेंस्ट में, दोनों एक ही ऑर्डर से अराइज हुई, उसके साथ श्रीमान को रख दिया। लगा नहीं है? नहीं लगा, रिकॉर्ड भी सेम ही है उसमें खाना। इसमें ऑलरेडी ऑर्डर था ना 26/7 को। इसमें देखिए इन स्पाइट ऑफ ऑर्डर already there being an order dated 26/7/22 to list along with WP number 5505/22, the office has not listed along with the said WP. The principal registrar is directed to call for the reasons why this WP has not been listed along with WP 5505/22, and because of that this matter is required to be adjourned again today. सर्विस मेंटेनेंस शिप्स रेस्पोंड नंबर 2 के लेट
सर्विस ज्वाइन नहीं करने दी नेक्स्ट अगेन और इसलिए लास्ट टाइम क्या हुआ था मैडम? फिर लास्ट टाइम ये हुआ था कि ये मेंटेनेबल नहीं है और ये केस प्राइवेट के लिए है, इसलिए मेंटेनेबल नहीं है पिटिशन। प्राइवेट स्कूल के खिलाफ तो मेंटेनेबल ही नहीं है सर। इनका ये कहना था कि अनुदान प्राप्त नहीं है हम, इसलिए मेंटेनेबल नहीं है। प्रिंसिपल सेट का कहना है कि अनुदान प्राप्त ना हो पर मान्यता प्राप्त है, इसलिए मेंटेनेबल है। प्रिंसिपल सेट ने डिसाइड किए हैं केस। और क्या रिलीफ क्या चाह रही है? तो रिलीफ ये है कि सर्विस में ना तक हटाया, ना ज्वाइन करने दिया और प्रमोशन भी हमको दिया सर, और हमको सैलरी भी उस टाइप से दी और फिर कोरोना काल पे भी हमको 3,000 रुपये कैश दे के वर्क कराया। उसके बाद हमको ज्वाइन भी नहीं करने दिया, ना तो हमको डिसमिस किया है ना वर्क ज्वाइन करने दे रहे हैं। हमारा जो जीपीएफ वगैरह जो पेमेंट वो भी है। और सर पिटिशन लाई है। बताइए कौन सा जजमेंट है? ये कहाँ है? तो वो फ्लैग लगाया है साइड में नोटिफिकेशन उसमें ये है कि प्रिंसिपल सेट ने कहा कि कोई बात नहीं, अनुदान प्राप्त नहीं तो क्या मान्यता प्राप्त है, इसलिए और 226 में बस और सुप्रीम कोर्ट का हवाला भी दिया। ये जजमेंट थोड़ी है ये तो। सर उसी में जजमेंट सर जजमेंट कोड है प्रिंसिपल सेट। उसके बाद के अभी लेटेस्ट जजमेंट देखा ही नहीं आपने? ये तो 1900 कब से 2003 का है। 2003 सर 1999 का भी एमपीएलजे है सर। नीतिमान वर्सेस सर्विलेंस एजुकेशन सोसाइटी और सरस्वती शिशु मंदिर का, उसमें भी ये हुआ, 2 केस है सर। सरस्वती शिशु मंदिर वाले केस में साइट हुआ 1999। अभी तो लेटेस्ट जजमेंट आ गया जहाँ पे पब्लिक फंक्शंस डिस्चार्ज नहीं कर रहे, वहाँ इट इज नॉट मेंटेनेबल। सर ये तो सर इस पर इसमें तो मेंटेन तो आप अपनी तरफ से लिख देंगे ना, उसमें नए वाले जजमेंट्स लगा के डिसाइड कर देंगे, आप चैलेंज करना उसको ऊपर। मेंटेनेबल नहीं है। लास्ट टाइम भी कोऑर्डिनेट बेंच ने पूछा था आपसे। सर मैं लेटेस्ट देख लेती हूँ, ये तो अभी इसमें तो है सर मेंटेनेबल। आपको लेटेस्ट देखने से आपको देखना चाहिए सर ये तो ओवरऑल हुआ नहीं है सर। 1999 सर एजुकेशन मिस हिल्स एजुकेशन सोसाइटी जो इसमें भी डिसीजन हुआ सर, मंजिला पांडे वाले केस में डिसाइड हुआ ये। और कोर्ट ने petitioner prays for further time to address on the issue of maintainability of this writ petition on the ground that respondent number 2 is a private school. List after सर नेक्स्ट वीक आई थिंक मैं वो Two नहीं weeks. बता दूँ। टाइम लगेगा मैडम देखने में? नहीं सर नहीं लगेगा क्योंकि केस लिस्ट नहीं हुआ इसके भी। मैंने अर्लिंग लगाई तब तो लिस्ट हुआ है। लिस्ट इन वीक कमिंग टू सर नेक्स्ट वीक ही रख लो। 1st of May। अब आपको डेट भी दे रहे हैं ना, लग जाएगा केस, अब आपको नहीं बोलना पड़ेगा। यस These are the old election matters pertaining to the recounting of votes. A number of matters have been decided, even the elections have been concluded. The results have been declared. What is he challenging? What is she challenging? They are be challenging the recount. They have won the relief of recounting of votes. So thereafter, the certificate has also. Results have been declared. Yes. Certificate has also been issued. The candidate has been notified. In this petition, none for the petitioner. In this petition, the petitioner has sought the relief for recounting of votes. Votes in a panchayat election. Yes. Mr. Senate Council for respondent submit that the elections are already over. Entire process of election. And the entire process is already over and the results have already been declared. Therefore, this relief cannot be granted.
Accordingly, this petition being dealt of merit and substance is hereby dismissed at the admission stage. 89 also, my lord, the petitioner is praying for claiming the relief of deciding the objections against the certificate given. So that relief can also. That they have to go in election Yes, petition. Yes. Section 122 of the. Section 122 of the. Panchayat Raj Adhiniyam. And then for the petitioner in the present petition, the petitioner seeking a direction to the respondents to Decide the objection decide the objections filed against the certificate filed against the certificate issued to the respondent number 6. to the respondent number 6. Next, Senate Council for the respondent submit that the entire election process is over. Yes. Therefore, such relief cannot be granted. Because the remedy available to the petitioner is to file election petition under section 122 of the MP Panchayat Raj Adhiniyam. So, petition is bereft of mental substance is hereby dismissed at the admission. This could not come in the way of limitation, Lord. They will, otherwise they will seek that एक साल बाद हाई कोर्ट ने बोला है तो नहीं हमने ये नहीं बोला हमने ये नहीं बोला कि अवेल द रेमेडी हमने बोला कि जी और वो कंडोन करने का पावर नहीं है उनके पास बिल्कुल एक भी दिन कंडोन नहीं कर सकते स्पेशल लॉज है इलेक्शन हाँ यस compassionate appointment. रिप्लाई देना था सर रिप्लाई देना था पीएफ दिया आपने हाँ सर कब दिया बताइए तब लास्ट टाइम दे दिया था दस्तावेज देना है सर पीएफ आपने दिए नहीं आज तक ये तो ऑब्जेक्शन है ऑफिस का 6/12/22 को नोटिस हो गया था इसमें पीएफ देने का आदेश था हाँ सर पीएफ कब दिया आपने पीएफ तो दिए ही नहीं आज तक सर ये अपेयर हो गया इनका वकील पत्र भी आई नहीं ये तो सरकार है यहाँ तो ये रोज ही अपियर होते हैं सुबह से शाम तक तो सिर्फ आज तक There are power of respond number 2, power for respond number 2, 3, 4, 5, Mr. Trivedi. अपियर कैसे हो गए नोटिस ही गया नहीं यहाँ से अपियर कैसे हो गया पीएफ दीजिए आप पीएफ देना पड़ेगा आपको देखिए लर्नड काउंसिल फॉर पिटिशनर प्रेस फॉर 15 days time to pay PF as directed by this court by order dated 16/12/22, failing which this petition shall stand dismissed without further reference to the bench. Yes. by last order sheet this
नोटिस हुआ अभी? मतलब 26(8) को they have been directed to seek instruction in that. Yes, my lord, we are inquiring about it. Because record is slightly old. It may be taken after we will come forward. नहीं, क्या करना क्या आपको? सर, इनका कहना ये है कि 2011 में इन्होंने एक रिप्रेजेंटेशन दिया था, उसका क्या स्टेटस है ये 22 में पिटिशन फाइल की सर। अब 2011 के रिकॉर्ड्स ट्रैक करने में सर थोड़ा सा उस वक्त मैंने कम्युनिकेशन किया था, लगा है मैंने इमीडिएटली फिर जो कंसर्निंग डी है उनको रिक्वेस्ट की है, दे आर एक्सप्लोरिंग इट, बट इट मे बी टेकन आफ्टर अ वीक, वी वुड कम फॉरवर्ड टू नो देयर केस इज दैट सम इंस्ट्रक्शन लेने के लिए बोलने की जरूरत ही नहीं थी। नहीं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ग्रांट ऑफ कंपैशनेट अपॉइंटमेंट? क्या 20-20 साल बाद भी दे सकते हैं? नहीं दे सकते। ऐसे देंगे सर? What is the purpose of grant of compassionate appointment? There is a policy to tide over immediate crisis in the family. अब आप 15 साल ठीक से रह लिया, आप उसके बाद में क्या वो कंडीशन आपकी पिक्यूनिटी कैसे हो गई? But immediate application was submitted. We were continuously in touch with the department. They were saying that, but I mentioned this fact in my petition. I have disclosed all the facts. Disclose where is the dealer clause का क्या बोला आपने? Paragraph number 4 is my lord, page number. नहीं, अगर ये डिसाइड नहीं करते तो 1 साल 2 साल 3 साल के अंदर आ जाना चाहिए कोर्ट। In fact, they came up with a fresh policy in 2018. उस policy का the view is once you file an application, if they are not taking action, you should approach the court immediately. 2-3 साल के अंदर। ऐसे 10-10, 15-15 साल बाद आओगे तो कैसे एंटरटेन करेंगे? Still claims. The department has given assurance that we will accommodate. Where is the assurance? But we have mentioned this fact in paragraph number 5. How do you say that there is an assurance? It's not a case that where my representation they have rejected and I did not approach before this honorable court for that entire period. Immediately after death of my father, not immediately I approached to the authority. I submitted my representation to him. 21-3-22 को जागे अचानक। No, no. और क्या? उसके आप इससे दिख रहा है पूरा। There is a settled law. बहुत सारे judgments हैं आपके खिलाफ। That in that situation when the representation is rejected, and if the person against whom an order has been passed and he did not take steps for a considerable long period, my lord, in that situation, my lord, that was the judgment. Here it is a case, my lord, in which immediately as जरूरत नहीं नौकरी की, अगर जरूरत होती है तो आप तुरंत इनको 10 बार इनके पीछे पड़ते। my lord, I have continuously 2011 के बाद 2022 में आ गई आपको कि हमने कोई एप्लीकेशन दी थी। No, my lord. Even they are not in the position to demonstrate before this honorable court that my representation which was submitted before the competent authority, these were decided or not. It was not decided. So petitioner का भी नहीं है. It is filed. This application, it is filed by one Madam Sunita and my mother. Petitioner very well. The petition is by Mr. Ashish. इसने फाइल किया है? So Madam Sunita sir, page number 23. Madam Sunita Patiko. And petition is by someone else, with his son. So even otherwise, he does not have a locus. If there was anyone who could pursue that cause, first is delay, as my lord has rightly pointed out, 11 years inordinate, unexplained delay. Second, my lord, kindly see page 23. It is by so and so, and the petition is by. He had no locus. Mr. Ashish had no locus. But kindly see paragraph 2 of my representation. The mother has asked compulsory appointment for her son, madam, not for the. कितने साल का है लड़का? But this is now. तो इसमें 33 साल लिखा हुआ है एफिडेविट। तो आप तो मेजर है ना, तो आप एप्लीकेशन तो आपको लगाना चाहिए, मदर क्यों लगा रही है? मदर को थोड़ी कॉम्पेंसेट अपॉइंटमेंट मिलेगा। आपका ओरिजिनल एप्लीकेशन कहाँ है 2011 का? No, that is next to P for it, page number 23. नहीं, this is submitted by the wife. This is even not in the pro forma, set out pro forma for that. No, but this application was very well communicated with the department. नहीं, आपने अपने लड़के का नाम भी नहीं लिखा इसमें। No, 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 mention this fact. Paragraph number 2 of my application. Shrimanji
मेरे परिवार में मेरे पुत्र श्री आशीष कत्तीकर के अलावा मेरी कोई और संतान नहीं। आशीष कत्तीकर जो है ये भी तो मेजर था, ही कुड हैव अप्लाइड डायरेक्टली, मदर के थ्रू अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। But my lord, it was communicated to department. There was no such requirement. Even my lord, the policy which was there is a requirement, there is a compassionate appointment policy of the board. Along with that, there is a prescribed format. You have to fill that format. Even undertaking declaration along with your all certificates. बहुत सर्टिफिकेट से लेकर सब जमा करना पड़ता है, तब फिर वो कंसीडर करते हैं। एक कागज लेटर लिख देने से थोड़ी होता है। ले लो इंस्ट्रक्शंस, आप ले लो और क्या। यू कैन वेरी वेल से कि साहब ये इट्स नॉट फाइल्ड बाय दिस। हाँ सर, हम ऑब्जेक्शन वही फाइल भी करेंगे। करो फाइल। करेक्ट काउंसिल ऑफ द रेस्पोंडेंट is for is granted 2 weeks time to file objections. Yes. Oblique reply. It's after 2 weeks. Directed to file positives. नहीं कुछ मिलेगा नहीं उसमें, सब एकदम होपलेसली टाइम बाउंड हो गया वो। नहीं मिलता। आप देखिए जरा जजमेंट भी ढूंढ के लाइए आपके फेवर के। लेटेस्ट लॉ अभी देखिए क्या है। जो 2012 के पहले तो आपको एप्लीकेशन दिया आपके लड़के ने, मतलब पिटिशनर ने, वो दिखाना पड़ेगा। एप्लीकेशन नहीं तो कहाँ का कंसिडरेशन। यस रिस्पोंडेंट नंबर 3 बिल्डिंग ऑफिसर द्वारा पिटिशनर को थ्रेटन किया जा रहा है उनकी बिल्डिंग को डिमोलिश करने के लिए। उसको डिमोलिश तो हो गई होगी। पिटिशन कब कितनी पुरानी, 1 साल हो गया फाइल करके, 6-8 महीने तो हो ही गए। लॉर्डशिप इसमें क्या सील्ड इट से यू हैव फाइल्ड द पिटिशन ऑन 4/8/22, सिर्फ डिमोलिशन नहीं हुआ। नहीं लॉर्डशिप इसमें क्या हुआ, उन्होंने एनेक्चर P1 से सेल्ड इट से परचेस करी प्रॉपर्टी। क्या पोजीशन है, डिमोलिशन हो गया कि नहीं हो गया? नहीं लॉर्डशिप कंपाउंडिंग कर लिया उन्होंने, कंपाउंडिंग हो गया इसमें। कंपाउंडिंग के बाद भी उनको डराया जा रहा है तो हम आपका निर्माण तोड़ देंगे। कंपाउंडिंग कब हुआ? कंपाउंडिंग वेयर इज द ऑर्डर ऑफ कंपाउंडिंग? कंपाउंडिंग का पेज नंबर 42 पर लॉर्डशिप रिसिप्ट है एनेक्चर P5 42 और उनका सूचना पत्र का जवाब किया उन्होंने। ये कंपाउंडिंग का ऑर्डर थोड़ी है, ये ऑर्डर नहीं लॉर्डशिप, रिसिप्ट है इसकी एनेक्चर P5 का और 43 पे उन्होंने ऑर्डर करा। Where is the notice of demolition? लॉर्डशिप P4 है 40 पेज नंबर पर आया था। उसके बाद उन्होंने कंपाउंडिंग करवा लिया था। पेज नंबर 40 एनेक्चर P4। तो इसके बाद कंपाउंडिंग हो गया। लॉर्डशिप उसके बाद भी वो अभी वो बोलने का ओरली बोल रहा है, हम आपका ओरली तोड़ देंगे। ओरल ऑर्डर्स पे पिटीशन एंटरटेन नहीं होती। लॉर्डशिप कंपाउंड कर दिया लॉर्डशिप क्या ये साइटेशन लाइए, साइटेशन लाइए। ये सूचना पत्र के बाद में कंपाउंडिंग कर दिया। कंपाउंडिंग कर दिया। Municipal Corporation Act unauthorized construction compounded and compounding fees charged, corporation cannot take any action under it. ये एप्लीकेबल थोड़ी है। Unauthorized construction compounded and compounding fee charged, corporation cannot take any action thereafter. समझ रहे ना? इसमें इनको रिमूवल नोटिस दिया था फ्रेश आफ्टर कंपाउंडिंग, इसलिए कोर्ट ने ऐसा हेल्ड किया है। आपकी इसमें फ्रेश नोटिस कहाँ है आफ्टर कंपाउंडिंग? नोटिस नहीं है। तो ये डिसीजन कैसे एप्लीकेबल होगा? इज इट सिमिलर? डिस्टिंग्विशेबल है? डिफरेंट है। कैसे दिखाते हो आप इसको? डिफरेंट है। ऐसे थोड़ी है। ये तो अभी प्रीमेचर है, अभी तो कोई ओरली थ्रेटन करते रहे। आप पुलिस पे कंप्लेंट करो ज्यादा है तो। यहाँ रिट में अभी क्या डायरेक्शन कैसे देंगे आप?
देखिए क्या करेंगे विड्रॉ? लॉर्डशिप ऑर्डर कर दो ना, फाइनल ऑर्डर। कॉस्ट भी लगा देते हैं क्योंकि आपने ऐसी फ्रीवियस पिटीशन लगाई है जिसमें सिर न पैर अननेसेसरी डायरेक्शन मांग रहे हैं आप. देयर इज नो ऑर्डर इंक्लूड इन दिस केस, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ एप्रीहेंशन. तो विड्रॉ कर लेता हूँ लॉर्डशिप. After arguing for some time, learned counsel petitioner seeks leave of this court to withdraw. Dismissed as withdrawn. लॉर्डशिप इसमें सिक्योरिटी देता है कि यदि कोई नोटिस आएगा तो उस पर ऑलरेडी जब नया नोटिस आता है तो फ्रेश कॉज ऑफ एक्शन मिलता है आपको. इसके इस ऑर्डर के कारण उसको चैलेंज नहीं कर सकते, ऐसा ऐसा थोड़ी है. यस. Writ appeal is pending in this matter. Writ appeal filed by the state is pending in this matter. तो ओरिजिनल ऑर्डर कहाँ है डब्ल्यूपी का? P2 WP 7226 of 2015. Page number 11 to 18. Respondents to continue the petitioner till the age of 62 years with all consequential benefits. Against that, the state has filed a writ appeal bearing number 790 of 19, which is pending, and wide order dated 17/12/2019. 17/12/2019. This order has been stayed. Stayed? Lordship. ये मेंटेनेबल ही नहीं है पिटीशन. ऐसे भी कंटेंट मेंटेनेबल होगा, फ्रेश पिटीशन थोड़ी मेंटेनेबल होगी. Yes, none for the petitioner. In this petition under Article 226 of the Constitution of India, the petitioner has challenged the order dated 12/12/2019 passed by the respondent number 4. Challenge किया है क्या ऑर्डर में? नहीं किया है. Watch annexure P1. Yes. Passed by the respondent number 4, whereby क्या है annexure कौन सा है ये? Annexure P2. The earlier order of 12 P1. page 10. Order dated 12/12/2019, annexure P1. P1. Full stop. Next. Learned counsel for the respondent submitted that earlier writ petition number 7226/2015 was disposed of by the order dated 22/10/2018, directing the respondents to allow the petitioner to continue up to the age of 62 consequential benefits. In light of the aforesaid, the order dated 12/12/2019 has been passed. She further submitted that against the order dated 22/10/2018 passed in WP 7226/2015, a writ appeal number 790/2019 has been filed, which is still pending. This court wide order dated 17/12/2019 has stayed the order dated 22/10/2018. In view of the aforesaid, this writ petition is not maintainable. Accordingly, the same is dismissed. However, petitioner would be at liberty to assail the order after the writ appeal number 790/2019 is finally decided. Thank you, Paul. In this case, reply has been filed by the state, my lord. I wish to file rejoinder to the reply. Reply filed? 2 weeks time to file rejoinder. Okay. Thank you.
एक टाइम है, 1 week टाइम फॉर मेरे डॉक्यूमेंट मिसमैच है उसमें। लास्ट टाइम 10-8 को टाइम दिया था आपको आर्ग्यू करने के लिए। उसमें डॉक्यूमेंट ऐसे मैटर जो है, मैटर पर्टेनिंग टू सब्सिडी है हमारा। हाँ, तो वो मेरा डॉक्यूमेंट में की मिसमैच है। लेकिन उसके बाद भी तो 6 महीने निकल गए, आपने अभी तक कुछ किया ही नहीं। सिर्फ डायरेक्शन क्या है रिस्पोंडेंट को पर्टिकुलर समय पीरियड के लिए। सब्सिडी 2018 का एप्लीकेशन है और अभी तक नहीं दिया। तो हमें 3 महीने 6 महीने में हमने टाइम डाउन कर दिया देने के लिए, इसलिए हमने डायरेक्शन किया था। सिर्फ दे रहे हैं, रिप्लाई दे रहे हैं, बस समय सीमा। नहीं तो आपको लोन सैंक्शन हुआ है, कहाँ से अपन देख सकते हैं? वही मैं इसीलिए मैं बता रहा था कि वो नंबरिंग कब तक? 6 महीने पहले टाइम, नेक्स्ट वीक कर दें। 6 months पहले टाइम दिया था आपको। नेक्स्ट वीक कर दें, मैं पूरा वो कर देंगे अभी पर आप क्या करते हैं? ये क्लाइंट के साथ क्या हो रहा है? आप देखिए P7 का जो नहीं बताइए, आप अपना केस तो मेकआउट ही नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे मेकआउट करेंगे, आपको बताना पड़ेगा कि दिस इज द डॉक्यूमेंट बाय व्हिच आई वाज ग्रांटेड लोन। देयर इज अ प्रोविजन ऑफ सब्सिडी ऑफ 50%। आई हैव फाइल्ड तो नंबरिंग वो मिसमैच हो रहा है, इसलिए मैं बाकी सब फाइल है जो उन्होंने दिया। P7 में ये भी कहा है कि काउंसिल अगेन प्रेस फॉर टाइम, 2 weeks टाइम इज ग्रांटेड टू आर्ग्यू द मैटर, फेलिंग व्हिच दिस पिटीशन शैल this court may consider dismissing this writ petition on the next date of hearing, list after 2 weeks. Also, on the last date of hearing, the respondent sought time to file of their reply. We didn't sort time. We said कि सब appear हो रहे for the first time. That is not what the order is. 6 weeks time to file. एक कॉपी भी ये प्रोवाइड कर देंगे। You are appearing for whom? I'm appearing for respondent number 1. The commission. What is this? Other than to be notice has to be issued to others. इसमें पहला ऑर्डर देखा आपने? अगर heavy cost will be imposed if suppose it is a frivolous petition. ये आपको जानकारी क्यों चाहिए? Not basically the information. करते क्या है? But the present petitioner is. How are you aggrieved? Lordship, he is also one of the professor in the similar type, the petitioner. Similar type of institution, government education institution. We just want to know on the what basis and on what documents scholarship is allowed to the students to other institutions and not to me. So he want to put up his case that way. This is matter of allotment of the scholarship to the student of one particular institutions only, and other institutions are deprived of their scholarship on the similar grounds and similar same. So what documents they have submitted, students were submitted to a particular institution, so we can know and we can also follow them. Or we can file objections. This petition is not on behalf of some students. No, it is. It is on behalf of the individual. Professor of one another institution. Individual, yes, he is individual, but he is professor of in era. चलो फाइल करो, रिप्लाई आप फाइल बाद में देखेंगे। सर वैसे एडवांस कॉपी देंगे इसमें गवर्नमेंट को भी सर
because Department of Government is also involved, तो उनको भी टाइम दिया, नोटिस देना पड़ेगा। वो तीनों को दिया, तीनों को नोटिस दिया ही नहीं है, नोटिस नहीं दिया ना कॉपी नहीं दी, इसलिए तो रिप्लाई आया कहाँ से? दिस ऑर्डर वाज पास्ड ऑन 28/7/22, आप कॉपी देते नहीं है। देख कॉपी तो एडवांस में दे दी थी पहले से, एडवांस और he appeared on that day. No, I was appearing because I came to the knowledge case of Madhya. There is no direction to sir. इसमें let a copy of the petition along with annexures be supplied to Shri Seth by tomorrow. All the response By tomorrow, or enabling him to file reply. Issue notice to respondents 2 and 3 on payment of PF. Okay. 7 days returnable 4 weeks. Okay. Thank you. None for the petitioner list after 4 weeks. Thank you. Mala, I have one submission in 113, item number 113. I have one submission. Kindly allow me to speak. We have heard you reserved. That's all. We have passed the order, I think. Sir, please. This is not the way we are. We have called item number 99. पूरा आपको सुनने के बाद ऑर्डर कर दिया. एक जजमेंट आपको दिखाना है, उसमें मैं फाइल करवा देता हूँ इनके द्वारा। इट इज वेरी, मेरे को समझ में नहीं आ रहा आप किस केस में खड़े होकर क्या कर रहे हैं। गड़बड़ ये कर दी कि इन्होंने आपको जजमेंट की कॉपी नहीं दिखाई, तो हमने क्या किया उसमें? तो वो आपके समक्ष हमको लेके आना है, संज्ञान में आपके लेके। अरे तो जब हियरिंग होती तब लाना पड़ता है। दूसरा केस कॉल हो गया। Sorry, I don't remember what is the facts of that case. Sorry, sir. You have one case, we have hundreds of cases, one by one. After 2 minutes we change our mind immediately. Yes. भूल जाते हैं सब पुराना क्या हो गया। Lordship, in that case is. जो भी है अगर गलत हो गया तो रिव्यू लगाइए, फिर देखेंगे। Now you have to पहले रिव्यू एप्लीकेशन। Otherwise you should think पहले, day before yesterday, एक दिन पहले 2 दिन पहले समझ लो कि क्या आपने को बहस करना। इनके पास था, इन्होंने दिखाया नहीं तो फिर अपन कैसे करेंगे बताइए। Sorry, sir. Yes. ये भी same after 4 weeks. When this petition is filed against Central Order and except P16 Malots, by which a joint commissioner, upon the order of the DIC, District Industry Center, wherein my lease has been cancelled, Malots. Lease has been cancelled. Cancelled, Malots. By which order? By order dated 10/2/2020, Annexure P11, page number 59, Malots. This cancellation has been taken place upon a joint inspection committed earlier by the joint committee, wherein absence of the authorized person of this company, that is the present petitioner, they have inspected the premises of the company, and upon the instruction of the third person, they have decided this. इसके बाद अपील भी डिसाइड हो गई। Yes, ma'am. डिसमिस हो गई अपील। अपील डिसमिस हो गई। इसको चैलेंज किया आपने इसमें? Yes, ma'am. 7/1/2021। इसमें भी ये लिखा है कि जिस पर्पस के लिए आपको लीज दिया था वो उसके लिए यूज नहीं कर रहे हैं आप,
साइकिल स्टैंड बना के रखे हैं वहाँ पे। मतलब गैस सिलेंडर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है ना आपका? यस मैडम, वही हम कर रहे हैं। एक्चुअली मतलब जो ज्वाइंट इंस्पेक्शन हुआ था उसमें मेरी प्रेजेंस ही नहीं थी। The notice was never issued to me about this joint inspection even after my lords this petition and annexes can only says that you have not even paid the lease rent and sadharan shulk. That my lords they may impose penalty according with the lease deed itself, my lords, but they have not even instructed me to pay the lease rent, my lord. And notice, issue notice. And you know what? Reply filed. And for the petitioner, reply is already filed list after 4 weeks. Wait for 2 weeks time to file the joint. Reply is already in filed. Under 2 weeks. I have to continue. I have to continue. On 6/9/2022, they sought time to amend the petition, but unfortunately till date they have not amended anything. Prayer क्या है इसमें? It's a kind of a public interest litigation where they are seeking the direction to supply certain document which they have mentioned, and in fact their appeal before the Rajya Suchna Ayog has been dismissed, and they have not challenged that order. Kindly see release 7, page number 8. इसको अमेंड करना था ना प्रेयर के वास्ते। अभी तक अमेंड नहीं किया। And they have not implemented the Rajya Information Commission. Map. And kindly see page number 28, my lord. इसमें लिखिए none for the petitioner clear on the previous petitions है necessary clear on 6/9/22 Senate Council for petitioner had sought 2 weeks time to file appropriate application for amendment. Senate Council for respondent has pointed out that the said amendment application has not been filed. First of all, on perusal of the writ petition, it is seen that neither the Information Commission has been added as a respondent, my lord, nor the order rejecting, my lord, that is order dated. That the order dated 4/4/22. 4/4/22 rejecting the second appeal. Second appeal has been asserted. Has not been asserted. My lord. In view of the aforesaid, it appears that the petitioner has lost interest, dismissed for want of prosecution. None for the petitioner list after 4 weeks. 105. Under the present petition is on the instance of National Textile Corporation Limited against the order of reference passed by the appropriate government, which is annexure P1, whereby industrial dispute is referred to the labor court Indore. The contention which is primarily addressed before the lower court is that for the units of National Textile Corporation Limited, the appropriate government is the central government, and therefore the state labor court as well as the state authorities has no jurisdiction at all in the matter. Ultimately, the reference was made in statement of labor. Reference was made to the labor court, which is a state authority. State authority. Yes, that has to be go before the CGI. Issue notice. My lord.
And my lord, the relief of voluntary retirement was also directed to be given. In this similar matter, this honorable court was pleased to pass this interim order. ठीक है वो the improved order dated so and so shall remain stayed till the negative of the Published. Can I make a kind request? My item was listed in item number 101 and I appeared in item number 10. क्या करेंगे अभी अब हम लोग कहाँ पे 101 पे लगा था, वो 102 में मैं खड़ा हो गया, गलती से सुनाई नहीं दे रहा था, 102 पे आ गया। सोनम तिवारी वाला स्टेट ऑफ एनवी। हाँ क्या हुआ उसमें? उसमें सर 102 में आई आर टू कंटिन्यू और 2 वीक्स टाइम टू फाइल रिजॉइंडर था, कर दिया था 102 में सर, 101 में कर दो 101 में करना स्टे है उसमें 101 में। हाँ चेक कर लेना 101 में स्टे है कि नहीं और होगा तो आई आर टू कंटिन्यू एंड 2 वीक्स टाइम टू फाइल रिजॉइंडर 2 वीक्स टाइम टू फाइल रिजॉइंडर 102 में सर मैडम अपीयर क्या हुआ 102 में क्या हुआ बढ़ा तो दिया ऑलरेडी। Thank you. चलिए 105 106 कोई नहीं है और कोई anybody wanting any case to be heard? Malad, item number 91, Lord, I was in another. अरे 91 जो हो गया अभी जो बचे हैं इसमें से कोई सुनवाना चाह रहा है Case of one rate 50, Malad, that's why it was a case of one. Yes. ये थे सर, इसके रोज भूमि अधिग्रहित कर दी सन 11 में सर। 10 साल से ही बिजली की जमीन ऐसे ही पड़ी है, तो पूरा बिजली एक मिलकर होती है, कुछ नहीं किया, ना मुआवजा दिया टाइम है ना अभी तुम दो तो मीटिंग 5 बजे अभी टाइम है अपने पास जो बैठे हैं उनका काम कर दो। Yes, your land was acquired by the housing board. इसमें लिखिए issue notice to the respondents on payment of PF by already mode within 7 working days returnable 4 weeks. आते ही नहीं अभी जो डिपार्टमेंट उसको मालूम नहीं है यहाँ केस पेंडिंग है क्योंकि वो इन्फॉर्म भी नहीं करते इसलिए नोटिस जाने दीजिए आपके इंटरेस्ट में है। सर डिपार्टमेंट में हम कॉपी देके आते सर रिसीव के लिए। अरे वो नहीं आएंगे साहब जब तक यहाँ से हाईकोर्ट से नोटिस नहीं जाएगा। किसको? उनको ये लग रहा है कि अभी हाईकोर्ट ने हमें बुलाया नहीं है इसलिए हम आप कॉपी देते रहो कचरे में डालते जाते हैं उधर नहीं आएंगे तो फिर आप देखेंगे उनको। यस वी नो एवरीथिंग क्या होता है सब मालूम है अपने को। बाकी आप अगर लिंगर ऑन करना चाहते हो तो एक बार और टाइम ले लेते हो इंस्ट्रक्शंस लेने के लिए। Question on item number 109 on the last date of hearing, notices were issued. अच्छा अभी 109 notices were issued, my lord, reply of the state is awaited in this case. 4 weeks में done. 4 weeks time to file reply. Grateful lordship, obliged. चलो हो गए और क्या है? Any other matter? Out of the remaining cases. ठीक है चलो